بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر بکری ذبح ہوئی اور مائی صاحبہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا گوشت تقسیم کر دیا اور ران مبارک کا گوشت حضور پسند فرماتے تھے، ران کا گوشت رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کہ کچھ بچ گیا ہے، تو مائی صاحبہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ران کا گوشت بچا ہے، باقی ہم نے اللہ کے لیے غرباء میں تقسیم کر دیا ہے. اب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ آگے ارشاد فرمایا، اس جملے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے اور ذہن دیا سرکار نے. حضور نے ارشاد فرمایا مائی صاحبہ کو کہ نہیں، بچ گیا وہ جو اللہ کے نام پہ دے دیا. بندہ جو کھا لے وہ تو ختم ہو گیا اور جو پہن لے وہ پرانا ہو گیا. وہ بچ گیا جو اللہ کے نام پر دے دیا وہ تمہیں مل جائے گا، قبر میں حشر میں وہ مل جائے گا. مائی صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ بچا ہے، ہم نے کچھ بچا کے رکھ دیا ہے کیونکہ آپ ران کا گوشت پسند کرتے ہیں کٹ کا، تو وہ ہم نے رکھ دیا ہے بچا کے، وہ بچا ہے، باقی ہم نے تقسیم کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا کہ فرمایا کہ نہیں، بچ گیا وہ جو اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جو بندہ کھا لے وہ ختم ہو گیا، جو پہن لے وہ پرانا ہو گیا. اور اسی طرح حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے قرآن کے مفسر ہو گئے ہیں. امام فخر الدین رازی سے ان کے کسی مقتدی نے، کسی ان کے چاہنے والے نے، معتقد نے پوچھا کہ حضرت میں صاحب مال و دولت ہوں اور کوئی ایسی ترکیب بن سکتی ہے کہ یہ میں اپنا سارا مال مرنے کے بعد قبر میں ساتھ لے جاؤں، میرے آگے کام آئے؟ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ ہاں، یہ سارا مال اللہ کے نام پہ تقسیم کر دے، قبر میں بھی تجھے مل جائے گا اور میدان حشر میں بھی تجھے مل جائے گا. یعنی اللہ کے نام پہ دیا ہوا مال ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ رہ جاتا ہے، اور وہی ہے جو بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اور جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور بندے کو سخت نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اس وقت وہ مال بڑا ہوا جو اللہ نے اپنے فضل سے جس کو زیادہ کر دیا تھا اس دن اس بندے کو عطا کر دیا جائے گا. یہ کنسپٹ ہے. صدقے سے، مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا،
بلکہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ مسجد کے لیے جو جگہ خریدی گئی ہے، آپ احباب نے جس طرح چند دن پہلے اس کا رسپانس دیا ہے، وہ ہم پورے کے پورے دل سے، سارے چشم کے لوگ جس جس نے سنا ہے وہ خوش ہے، اور جس جس نے اس جگہ کے سودے کا سنا ہے وہ بھی خوش ہے۔ پورے شہر کے اندر خوشی کی ایک لہر ہے، اور جس طریقے سے آپ احباب نے تعاون فرمایا ہے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم خود اتنی توقع نہیں رکھتے تھے جتنی آپ نے رسپانس دیا ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور کورونا وائرس کے شر سے ہم سب کو اللہ کریم اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ احباب کے خواہش کے مطابق مسجد کمیٹی نے دوبارہ پھر اس کا اہتمام کیا۔ کوئی دوست کہتے تھے ایک دفعہ پھر موقع دو، تو مسجد کمیٹی نے یہ اہتمام کر لیا کہ ہم پھر عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے اس کا اعلان کریں گے۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ احباب اپنے اپنے ریڈیو کے قریب بیٹھ جائیں، اور اپنا اپنا حصہ ڈالنے سے جو اس دن رہ گئے تھے وہ اپنا اپنا حصہ آج ڈونیشن میں اور صدقہ جاریہ میں دل کھول کر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ رب العزت آپ کے صدقے کی برکت سے آپ کی مصیبتیں بھی ڈال دے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کو بیماریوں سے، کیسوں سے، لڑائی جھگڑے سے، بچوں کی صحت اور تندرستی اور ایجوکیشن کے حوالے سے اللہ بہت برکتوں سے آپ کو نوازے گا۔ اور اس دن جب بگننگ ہوئی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پہلے اس کی ابتدا میں کرتا ہوں 5,000 صدقہ جاریہ 2 سال کے لیے میں نے اپنی طرف سے کر کے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی میں اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے بیٹے عرفان، محمد عرفان اور محمد عمران اور خالد بشیر کی، اور میرے اپنے گھر کی چاروں گھروں کی طرف سے ہم نے یہ میٹنگ کر کے طے کیا ہے کہ آج میں اس کا ابتدا کرتا ہوں 5,000 پاؤنڈ ڈونیشن ہماری فیملی کی طرف سے جائے گی۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، کاروبار میں، رزق میں، اتفاق میں اللہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور ابھی چودھری حاجی دل صاحب نے فون کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری طرف سے 500 پاؤنڈ اور کر لیں، اور ابھی کچھ مجھے لسٹ دی جائے گی، وہ بھی میں پڑھوں گا۔ اور اپنے اپنے گھروں سے فون نمبر جو ہے وہ آپ لکھ لیں۔ مسجد کا فون جو ہے وہ 19494، یہ تو کوڈ ہو گیا نا، نمبر ہے 772065 مسجد کا نمبر ہے، اور چشم کا کوڈ آپ سب کو پتا ہے 01494۔ اس نمبر پر، اور دوسرے نمبر بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ان نمبروں پر چیئرمین صاحب کا محمد ابراہیم صاحب کا نمبر ہے، اپنے جنرل سیکرٹری صاحب کا تنویر صاحب کا نمبر ہے، حاجی چودھری عبدالباری صاحب بیٹھے ہیں ان کا نمبر ہے۔ کسی نمبر پر بھی آپ فون کر کے اپنے حصے جو ہیں وہ لکھوا سکتے ہیں۔ ابھی سب جڑا 5,000 دا جڑا فگر چوز کیتی ہے، ایت بڑی برکت، ایت بڑی برکت، 5,000 کی فگر اللہ کرے یہ ہوندی رہے۔ اور بھائی آپ نے 1,000 بتایا نہ کہ لگا دیا، تو میں نے پھر ان کو کہا کہ واپس دھیان ہو جائے 500 نہیں ہے، 1,000 ہے۔ عمران کا 1,000 ہو گیا، 5,000 تو شروع ہویا تے 5,000 دا گیا تے بڑی کال کی جڑا ساڈا جمع کر دی جائے۔ اس 1,00,000 پاؤنڈ جڑا دتا جی انہوں نے، ماشاءاللہ میں کرتے ہسنا 5,000 تو شروعات لاکھ تک چلا گیا ایک آدمی سے۔ تنویر صاحب اور آپ اپنے نمبر دیں جی، جو نمبر بولنے کے لیے اچھا نمبر کسی کاغذ پہ لکھے نہیں تھے؟ پیپر کا کیا کیا مسجد کا نمبر اور سامنے مسجد کا ہے، مسجد کا
تنویر صاحب تو سامنے ہاں جی محمد ابراہیم صاحب جو چیئرمین ہیں ان کا نمبر میں آپ کو لکھواتا ہوں, آپ ان کا نمبر بھی نوٹ کر لیجیے 07855327555. یہ چیئرمین صاحب کا نمبر ہے. چودھری عبدالباری صاحب کا نمبر ہے 0773333. سبحان اللہ 0253. آپ کا 3 کے ساتھ. اور حاجی تنویر اختر صاحب کا نمبر ہے 07961504928. یہ ان کا نمبر ہے. یہ تینوں نمبر آگے, اور مسجد کا نمبر 772065. یہ مسجد کا نمبر ہے. ان میں سے کسی نمبر پر مسجد کے نمبر پہ کر لیں, وہ کنورٹ ہو کے چیئرمین صاحب کے فون پہ چلا جائے گا. تو وہاں پر اپنا حصہ جو ہے وہ لکھوا دیں. آپ بہت اچھا رسپانس اس دن آپ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور پھر آپ کے کہنے کے مطابق ہی یہ رکھا گیا پروگرام کے. ایک دفعہ پھر اس کا موقع دیجیے. اور وہ جو چٹ جو پڑھنی تھی وہ نام وہ چلو یوٹیوب پہ آ رہے میں پہلے اس سے تھوڑی سی اپڈیٹ کر دوں جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم نے یہ بلڈنگ نیکسٹ ڈور لے لیا, اور نہ تو ہم اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ تو ہٹیں گے. اس کا سودا جو ہوا ہے وہ 1.525 ملین کا ہوا ہے, 15,25,000. اور ماشاءاللہ جو چشم نے تعلق کیا ہے وینسڈے کو, وہ تو ہماری سوچ سے باہر ہے کہ تقریباً اب تک ہمارا 3.5 پونے 4 لاکھ پاؤنڈ جی ہاں یہ تقریباً ہو چکا ہے. مگر ابھی جانا بہت ابھی چل رہا ہے. اچھا, تو اس میں یہ جو ہے وہ چشم نہیں لینی ہے, کیونکہ باہر سے آپ کا وہ تھوڑا ہو جائے گا. یہ ہے چشم کی بلڈنگ ہے, چشم کی مسجد ہے, اور چشم کے لوگوں نے ہی لینی ہے, اور کسی نے آپ کو باہر سے آ کے نہیں لے کے دینی. اور ہمیں سوٹ بھی کرتی ہے, بالکل کرتی ہے. اس کا جو فیوچر ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, وہ اس کی لمٹ ہی نہیں ہے. آپ جو مرضی یہاں بنانا چاہیں, اچھا جہاں جتنا بڑا کرنا چاہیں, جو آپ کا من مانتا ہے وہ آپ اسے کریں. اور انشاءاللہ مسجد بھی بڑھا سکتے ہیں, یا کوئی کمیونٹی سینٹر کر سکتے ہیں. بچے ہمارے تقریباً ماشاءاللہ 250 to 300 بچے ہمارے پڑھتے ہیں اسکول میں, اور وہ کبھی پار کبھی رات, کبھی پار کبھی رات, وہ سارے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سارے ادھر آ جائیں گے. سو فیوچر ہمارے لیے بہت اچھا ہے اس کا. اینی وے پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے ہم نے کرنے ہیں, اور یہ جب تک آپ بہن بھائی نہ اس سے ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اس وقت لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں کرونا کی وجہ سے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر کی بات ہے, ہماری اپنی بات ہے, ہم نے ہی کرنا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے, جو ہو سکتا ہے, ہر بندہ وہ کرے. اس وقت یہ ہمارا ریڈیو پہ جا رہا ہے, اپنے گھروں میں جو مسجد کے ریڈیو ہے اس پہ جا رہا ہے. اس کے بعد فیس بک پہ چشم مسجد کا لنک ہوگا, ٹھیک ہے. سو فیس بک پہ چشم مسجد کا لنک ہے, وہاں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, اور ڈونیٹ بھی لائیو کر سکتے ہیں وہاں سے. ڈونیٹ بھی کر bring the landline. Right. Donation, jitni donation will be more telephone pay. Yeah, 01494. Okay, so they have to code the donation. Yeah, red line. The number. तीसरा सेशन कौन सा YouTube है? जी.
सो यूट्यूब पे कैसे जाएंगे? चशम मस्जिद टाइप करो तो लिंक आ जाएगा। वेरी गुड। सो अगर आपने लाइव देखना है तो अगर आप कंप्यूटर पे जाके वेब पे जाके चशम मस्जिद टाइप करेंगे तो वो लिंक आपको आ जाएंगे, उन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह वो लाइव आ जाएगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर जो है वो मस्जिद का जो टेलीफोन नंबर है वो 01494772065। उसके बाद वालेकुम सलाम। मेरा नंबर जो है वो भाई बैठे हुए हैं, उनके पास मेरा टेलीफोन है, आप वहाँ फोन करके लिखवा सकते हैं अपनी डोनेशन। वो है 07855327555। असीम साहब का टेलीफोन नंबर वहाँ बैठे हुए हैं, टेलीफोन उठाए हुए 07779571889 और इमरान भाई भी बैठे हुए हैं 07956259671। इंशाल्लाह देखते हैं कि उम्मीद तो ये है कि वेडनेसडे से भी ज्यादा आज ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह हाजी साहब हाजी अशरफ साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। तो दुआ करते हैं कि 4 दिन से ये अल्लामा साहब जो ऐलान कर रहे हैं इंशाल्लाह आज ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। A1 टैक्सी लाइन जो है वो 1000 पाउंड A1 टैक्सी लाइन और हाजी मीर जमान साहब हाई वेकम से 5000 पाउंड। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान सुभान। मोहम्मद कबीर मिन्हास 500 पाउंड। माशाअल्लाह। जी अच्छा तो सब कुछ 2 लाख का ठीक है। आने का ऑन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात अरयान चशम, मैं आप सब हज़रात को दिल की अता करीम से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इंतहाई मसरत और खुशी के साथ इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि जो मस्जिद के साथ ये प्रॉपर्टी फैक्ट्री जो खरीदी जा रही है इसकी ख्वाब हम पहले दिन से देखते, बल्कि एक अल्लाह ने पूरी कम्युनिटी की नजरें इस बिल्डिंग और इस कार पार्किंग पर लगी। अल्लाह ने बड़े ही अपना कर्म किया और सबकी दुआओं से ये एक अपॉर्चुनिटी सामने आई खरीदने और बिकने में। जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई तो मेरे ख्याल में किसी ने कीमत जाने बगैर ही इस पर इतनी खुशी का मसला जो बयान नहीं किया, क्या बात जो बयान नहीं किया जाता। मैं भाई इब्राहिम साहब और उनके साथियों को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनको पूरी सपोर्ट हर तरह जो भी हो सकती है वो इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से इनके साथ सपोर्ट हर वक्त इंशाल्लाह हमेशा हो। इसमें बात यह है कि जब हमने अपील की, हमसे मुराद यह है कि मस्जिद कमेटी ने जब अपील की वेडनेसडे वाले दिन, तो जिस जोश और खरोश और मोहब्बत और जज्बे के साथ आपने लब्बैक कहा, इस पर पूरी कम्युनिटी खराज तहसीन की मुस्तैद है और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि ये आपका जज्बा जो है, इसमें इस जज्बे की वजह से यकीनन हम चशम में ही कामयाब होंगे, यानी चशम की मदद से ही कामयाब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आप सब पूरी कम्युनिटी को इसमें कामयाबी अता फरमाए। और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो गए, मुझे यकीन है कि हमारा 100 साल का 200 साल का जो मंसूबा है चशम की जरूरत का वो पूरा होगा। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि जिसके बाद
देखने वाले भी आशा करेंगे कि यार इतना बड़ी अच्छी कम्युनिटी के अंदर जहाँ भी मस्जिदें हैं, अगर कम्युनिटी के अंदर मस्जिद है तो उसमें पार्किंग की मसले प्रॉब्लम है, और जो कम्युनिटी के बाहर है तो फिर शहर वालों को बाहर जाना पड़ता है। ये एक वायदा कौन होगा कि कम्युनिटी के अंदर मस्जिद बनी है सेंट्रल और पार्किंग और उसकी जगह भी साथ में, तो ये बड़ी खुशकिस्मती है। हमें इस काम में पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस पर काम करना चाहिए। जैसा कि इब्राहिम साहब और उनके साथियों ने दो ऑप्शन रखे हैं कि आप इसमें डोनेशन भी जितनी हो सके करें और कर्ज असना भी जो है वो अदा कर सकते हो, उसकी तफसील भी आपको अपने साथी इब्राहिम साहब और उनके साथी आपको बताएंगे कि वो कर्ज असना किस तरह आप देते हो, और अगर किसी को मजबूरन जरूरत पड़े तो वो वापस भी ले सकता है। होता है ना, मतलब सोचता है यार मैंने पैसे को मजबूरी या पता नहीं मिलेंगे ना मिलेंगे, लेकिन मुझे यकीन है इस पर आप उनसे बात कर सकते हैं और उसके तरीकाकार भी आपको वो पता है। तो आज मैं समझता हूँ कि हरियाणा चशम जिस तरह एक मुबारकबाद के मुस्तक हैं, खैर तहसील के मुस्तक हैं, इस तरह उनके सामने बड़ा चैलेंज खड़ा है और इस चैलेंज में कामयाब इंशाल्लाह हम होंगे। इंशाल्लाह इसलिए कि मुझे यकीन है कि जिस तरह जज्बा है, जिस तरह सब लोगों का सोच है, उस जज्बे की वजह से मैं समझता हूँ कि हम जरूर कामयाब होंगे। और मस्जिद कमेटी की क़यादत में और मौलाना आरिफ हुसैन सैदी साहब इमाम मस्जिद जो है उनकी क़यादत में, उनकी अपील पर यकीनन ये बात का पता होगा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। इसमें कोई शक नहीं है, अगले 100 साल तक भी ये जगह हमारे चश्म के आने वाली नस्लों के लिए काफी होगी। और इस तरह इकट्ठी जो जगह है ना, वो कम ही कहीं ऐसा सेटअप होगा जिस तरह का अल्लाह ताला चश्म के मुसलमानों को अता करने वाला है। सुभान अल्लाह। मलिक शौकत अली साहब ने 500 पाउंड चौधरी मोहम्मद सईद साहब के बेटा और बेटी चौधरी मोहम्मद सईद साहब, हाजी चौधरी मोहम्मद सईद साहब साबिक हमारे खजानची हैं, उन्होंने 2000 पाउंड डोनेशन किया है। 2000 पाउंड उन्होंने डोनेट किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रिज़्क़ में बरकत दे, खैर खूबी अता फरमाए, बच्चों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, और उनके जो आगे पोते हैं अल्लाह करीम उनको अच्छी तलीम नसीब फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। चौधरी साहब की क्या बात है, 2000 पाउंड उन्होंने हमसे आगे 5 दे चुके हैं, आगे 5000 पहले दे चुके हैं। हाँ, 5000 पहले दे चुके हैं और 2000 उन्होंने अब दिया है बेटे और बेटी की तरफ से। अल्लाह कबूल फरमाए और इसका उन्हें सवाब अता फरमाए और उनके कारोबार में रिज़्क़ में अल्लाह की बरकत अता फरमाए। और एक नाम में और बोलने वाला हूँ, तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। हाजी मोहम्मद मुकर्रम साहब, हाजी मोहम्मद मुकर्रम साहब ने 10,000 माशाल्लाह। ये दासी है ना जी, तनवीर साहब, तनवीर लिखा हुआ 1,000 है। 10,000 मैंने सुना हुआ 10,000। अच्छा 10,000 ये डोनेशन है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये 10,000 पाउंड जो है ये डोनेशन है। अल्लाह रब्बुल कबूल फरमाए और हाजी मोहम्मद मुकर्रम साहब के कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए और सेहत के साथ सलामती और दराज़ी उम्र अल्लाह करीम नसीब फरमाए। हाजी साहब की और भी जो दिली ख्वाहिशात है मेरे मौला अपने फजल से उनकी तवक्को से ज्यादा उन्हें कामयाबी और कामयाबी नसीब फरमा। हाजी मोहम्मद मुकर्रम साहब ने 10,000 पाउंड जो है
वो डोनेट किया है इस जगह के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers and sisters listening at home, my elders here present and elders at home, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम। थोड़ा सुना तो माशाल्लाह सुन लिया बस Sound happy? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers and sisters, elders of Islam, guys, with your permission, my little 4 or 5 minutes will be in English. For those brothers and sisters like me who our first language is English, bear with me. So what I plan to just for a few minutes outline is starting from a blessed hadith of our Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and then I plan to outline where we originate from in terms of this masjid project and where our vision is, where we want to end up. And for those of you who are still with me at the end, I have an open secret to share with people today, that if you bear with me for 6 or 7 minutes, inshallah, 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 I hope to please you. So first of all, the hadith is of my Fatima radiallahu anha, where she presents some yarn that she had weaved with her own blessed hands. And the mafhum of the hadith is that she presents this yarn to Hazrat Ali radiallahu anhu and says, this is a list of requirements that we have for our household, and I have spent time these past days spinning this yarn, and if you can take it to the marketplace, yarn, and then this, whatever your sale price is, if you can bring this on for our house, our children can eat tonight. Hazrat Ali proceeds to the marketplace with this yarn. It's sold for 6 dirhams. 6 dinar, Kaiser. Kaiser. 6 dinar का फरोख्त हुआ था for 6 dinar. And as soon as that sale has taken place, Hazrat Ali is stopped by a man who says, I am in need, Ya Ali. I am in need, and I am expectant that only you can fulfill my need. I've been turned away pillar from post, and I need to pay this debt. And this man is threatening to tie me up today if I don't pay this debt. Hazrat Ali asked him, he said, how much is your debt? And listen to the answer. My debt is 6 dinar. Hazrat Ali, without hesitation, presents the 6 dinar to the man who is asking and turns away. At that moment in time, another man approaches Hazrat Ali with a camel on the end of a rope and says, Ya Ali, I am off on my travels with this caravan of traders and I have no time to sell this camel. Take my camel and sell it for me. And Hazrat Ali replies, I don't have any money. The last 6 dinar that I had, I've just given to this man. He said, that's fine, I'm going on my travels. You owe me 100 dinars. And at that, he leaves. Hazrat Ali proceeds again to the marketplace. And as he turns one corner, a man approaches Hazrat Ali and says, do you sell this camel? I won't give you a dinar more than 160 dinars. Subhanallah. I won't give you a dinar more than 160 dinars. Hazrat Ali takes the 160 dinars, hands over the camel, turns around to look for the original seller, gives him his
100 dinars, and with his 60 proceeds to the market. Purchases his 6 dinars worth of goods, returns home. My Fatima Zahra radiallahu anha, when seeing the 54 dinar and the goods, says, where did you get this money from? You left the house with 6 dinar, or the yarn to sell for 6 dinar. When he regales the story of what happened in the marketplace and the camel and the buying and the selling, my Fatima Zahra radiallahu anha says, why don't you take this news to Aqadi sallallahu alayhi wa sallam? Hazrat Ali radiallahu proceeds to Aqadi sallallahu alayhi wa sallam before he enters the place where Aqadi sallallahu alayhi wa sallam is present. And Hazrat, the original speech was in Punjabi, so you'll have to give me a moment to translate that back into English. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, do you see the barakah of my daughter's 6 dinar? Do you see the barakah of my daughter's 6 dinar? And don't you want to know who the seller and the buyer were? Shall I tell you, Ali? And the Mahfoum Bilaqati sallallahu alayhi wa sallam said, the original camel seller was Mikael and the buyer was Jibreel. Subhanallah. So the purpose of that hadith for me was that we're sitting here today and we want to be of those people that without hesitation give their 6 dinar. And inshallah, you will see the 60 back. You will see the 60 back. Open your hearts. Just believe. Just believe that Allah subhanahu wa ta'ala says you will not lose. Many times in the Quran, it's written, and specifically in Surah Baqarah, those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, they will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. Have no fear. Allah subhanahu wa ta'ala says there, ayah number 274, Surah Baqarah, have no fear. You will not lose. So that was my hadith part of my little speech. I know I owe you a little bit of history, but there's still time. So for those that you aren't aware necessarily, this masjid project, Anjuman al-Muslimin being the entity, the charity that has run the Islamic education, the Jummahs, the Jalse, since 1968. And their original home, if you like, was a downstairs living room in Waterside of a rented house, the upper portion of which, if I'm correct, the upper portion of which was rented to at least 3, maybe 4 lodgers. One of those, may Allah subhanahu wa ta'ala increase his station in Jannah, is Haji Ahmed Nawaz. He was one of those people who lived in that house. And the idea came that, look, you know, we are 20, 30, 40 people now in Chesham, and we should have congregational prayer. So it was decided that the bottom portion of this rented house would become the Jaya Nawaz, the masjid, where they would do their prayers. The teaching started, and from there, in the late 70s, in the late 70s, we moved to number 163 Bennington Road, and then proceeding from that, when we ran out of space again, we purchased next door, which was number 161. So then those 2 buildings were knocked together, and
in 1999, the then president of the masjid came to a few of us on the night of the 27th of Ramadan and said, "How many people do you think are in the masjid?" And I said, "Well, that's easy." He said, "What do you mean? How do we count all of these people?" I said, "Well, we'll go outside and count the shoes and cut the number in two, and that's the number of people." Nobody walked in without shoes. So outside we went with our takeout to borrow of somebody who was reading Tasbih, and we counted 127 people present. And we were shoulder to shoulder, tight. That's the answer. We were sitting tight, and there were 127 of us. Now you cast your eyes around where you're sitting today at home, and we had two of those living rooms and a little bit more. Two living rooms and a drawing room. They're terraced houses, everybody knows the size of those houses. And we had 127 people doing Zikr Allah that night, the 27th. When we counted those people, and then it was, the momentum began to say we need a bespoke building where we can accommodate not just those 127, but the next 127, and the 127 after that. So then the project began in 1999, and this, alhamdulillah, this beautiful masjid that you see today. We moved in 2002 and beginning 2003. You know, at a cost of approximately 1.6 million pounds. 20 years ago, alhamdulillah, when we moved in, we had no karfias. When we moved in, our debt was gone. That's the answer. Our debt was gone. And alhamdulillah, with the efforts of my Buzurg, Zafar Saab, who was chairman at the time, Haji Ashok Saab, Chaudhry Said Saab, the efforts that these guys put in physically and mentally, there are words. There are not words. Haji Salim Saab, who was the previous president at the time, who was the kick-off president of making the thing, the project inspiring, if you like. And then the reins were passed on to Haji Saab and Haji Ashok Saab, who then carried on with the actual physical build project, and countless people that, you know, we wouldn't be here until tomorrow morning if I listed all of the people, mashallah, the Jazbar and the ilm that Qari Saab gave us at the time, and the support of the youth. So alhamdulillah, we arrived where we are today. So where are we today? We're at a juncture. So the opportunity is being presented to us for the adjoining buildings and car park to come into the ownership of Anjuman al-Muslimin. So it's an opportunity in anyone's mind that is a no-brainer. It's an absolute no-brainer. We've doubled the size of our square footage. There's future prospects are just countless, and you know, as Chairman Ibrahim Saab said already, you know, the possibilities are endless. So, you know, be big-hearted. You know, we were 118 or 19 working men at the time. We were maybe 120 working men-ish. There's an official number which I don't have at hand. It wasn't more than 150 working men at that time. So, and alhamdulillah, look around you. When you come to this masjid, have a look and see what those people achieved. And now we are many, many, many more working men and women, alhamdulillah. So open your hearts, open your wallets. You know how to donate. The sort code is available on the channel. You can donate by telephone. You can donate by direct debit. You can donate by standing order. So, and
you can phone in today on 01494 772065. So all of those options are available to you. And I'm being encouraged to wind up, which I will. But as per my promise, I'm going to leave you with somewhat of an open secret that if I say that there are 3 harams, how many harams are there? 3. Masjid al-Aqsa, Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and Haram Park in Makkah Sharif. How many buildings in the world is anyone aware of that are physically, from the foundations, twinned with Haram? Does anybody know? Chesham. Now, this may sound a little bit amazing, but God is my witness. When we laid the foundation stone of this masjid, there is rock from Haram in the first brick. For me, you can donate to any project in the world. You can donate to any masjid in the world. But how many masjids will you donate to that are twinned with Haram? No. Thank you very much. Thank you very much. Once again, the telephone numbers, we have 01494 772065, the main masjid number. We have the direct debit, and we have the GoFundMe Chesham Mosque donation page. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept all of your donations, increase your wealth, increase your well-being, increase the station of your parents, and for those of you who have any just or need, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you accordingly. Jazakallah. डोनेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੱਕਰ ਠੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कोई ऐलान पढ़ो हमजा आदम साहब ने 500 पाउंड मस्जिद को अतिया किया है। बाबर अली भट्टी वालिदैन के साले सवाब के लिए 1000 सूफिया अली बाबर की बेटी की तरफ से 136 पाउंड और अख्तर अली बाबर की बेटी 120 पाउंड, मोहम्मद अली बाबर का बेटा उनकी तरफ से 100 पाउंड, सायरा खान अपने बेटे हमजा अली के सारे सवाब के लिए 100 पाउंड, छोटा बच्चा फौत हो गया था उसके सारे सवाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके बच्चों को सेहत और सलामती अता फरमाए और अमराज से हवादसात से अल्लाह करीम महफूज फरमाए और जो भी सदका जारिया करेगा अल्लाह करीम उसके रिज़्क़ में इजाफा फरमा देता है, उसकी मुश्किलात को आसान कर देता है और दिल खोल के इसके ये आपकी है, आप ही इसको बनाएंगे, आप ही इसको संभालेंगे, आप ही खरीदेंगे और इंशाअल्लाह अगले फ्यूचर में 100 साल से भी ज्यादा चश्म की जरूरियात को ये जगह पूरी करके रहेगी। तमाम अहबाब दिल खोल कर इसमें हिस्सा लें और इस बात की फिक्र न करें, अल्लाह की राह में दिए गए माल में अल्लाह के फजल से इजाफा होता है, कभी कम नहीं होता वो माल। जैसे बिगिनिंग में मैंने अर्ज किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देख दिया जब कशाना अक़दस पे बकरी ज़िबा की गई थी तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको तकसीम किया, उसके गोश्त को और रान का गोश्त हुजूर के लिए रख लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पूछा कुछ चीज बची है, अर्ज किया कि रान का गोश्त बचा है, बाकी हमने अल्लाह के नाम पे गुरबा में बांट दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं कहो कि बच गई वो चीज जो अल्लाह के नाम पे दे दी गई है और बाकी चीजें फानी है,
جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا۔ تو بچ جائے گا وہ جو اللہ کے نام پہ دیا جائے گا، وہ اگلے جہان میں بڑھتا رہے گا، اس کا ثواب بڑھتا رہے گا، اور اس وقت آپ کو دیا جائے گا جس وقت شدید ضرورت آپ کو ہوگی۔ تو اس میں خرچ کیا گیا مال بڑھتا ہے، بندے کو سے تندرستی نصیب ہوتی ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، بندے کو کیس وغیرہ لڑائی جھگڑے یہ عدالتوں کے چکر ان سے بندہ بچا رہتا ہے۔ اللہ کے نام پر دیا جانا جو ہے اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں مال کا بڑھنا بھی ہے۔ دل کھول کر اس میں حصہ لیجیے۔ اور مسجد کا جو نمبر ہے اس پر اگر فون کرنا چاہیں تو 01494 تو کوڈ ہے 772065 جو ہے یہ مسجد کا نمبر ہے، اس پہ آپ فون کر کے تو چیئرمین صاحب کو اپنا حصہ لکھوا سکتے ہیں۔ چیئرمین صاحب کا موبائل نمبر جو ہے وہ 07855327555 ہے۔ چودھری عبدالباری صاحب نائب چیئرمین ہیں، ان کا نمبر ہے 07733330253 اور حاجی تنویر اختر صاحب کا 07961504928۔ ہمارے اشرف صاحب تشریف لائے ہیں جی، اپنے خیالات اور اپنے احساسات میں عبدالباری ماشاءاللہ کی طرف سے اور ہماری چیئرمین ابراہیم کی طرف سے، بلکہ ہماری پوری کمیٹی کی طرف سے، ہمارے امام صاحب، جو بڑے امام صاحب، چھوٹے امام صاحب یہاں تشریف آئے، اور ہمارے سابقہ صدر حاجی ظفر علی صاحب وہ بھی تشریف آور ہیں، اور بلکہ ہماری چشم کی بہت معزز ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ یہ ہمارے تھنک ٹینک ہیں، ان کی ہم بہت قدر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے ماضی میں آپ کو معلوم ہے جیسے کہ بہت کام کیے ہیں، یہ مسجد ان کی بنی ہوئی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی ہمارے چشم کے اور صاحبان بھی یہاں تشریف آئے ہیں۔ ان سب کی طرف سے جی چشم والوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں، بلکہ میں چشم والی نہیں کہوں گا، چشم کے ستارے کہوں گا۔ ماشاءاللہ چشم کے ستاروں، آپ نے جو لاسٹ وینسڈے جس محبت کے ساتھ اس مسجد کے لیے جو نذرانہ پیش کیا ہے، جو آپ نے ڈونیشن دی ہوئی ہے، ہماری خود سے زیادہ ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں ہمارے دل سے یہ دعا نکلتی ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جس مقصد کے لیے، جس بہن نے، جس ماں نے، جس نے بھی دیے، اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائے اور اس میں برکتیں پیدا فرمائے۔ دیکھیں جیسے قاری صاحب نے حدیث بیان کی آپ کے آگے، وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سودا کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے بھائی، میرے چچوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ آپ جیسے خدمت کر رہے ہیں، اس سے پتنی چگنی کتنی یہ مطلب آپ کو یہ واپس ہوئے گی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی میں یہ برکت دیتا ہے، کسی کو کاروبار میں برکت دیتا ہے، کسی کو جو تجارت کرتا ہے اس میں دیتا ہے۔ انسان کو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن آتا واپس ضرور ہے۔ جس خود کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ خدمت کر رہے ہیں، بھائی یہ کریں۔ ہمیں کم سے کم یہ گھنٹہ یہاں ہو گیا ہے چشم کے ستاروں، ابھی تک تو فون نہیں بجا ہے۔ کیا بات ہے؟ لیکن ایسے پچھلے سے بجے تھے، تو خوش نہیں تھی بالکل۔ بھائی دیکھو آپ جو نیکسٹ جگہ جو ہم لے رہے ہیں، یہ یقین کریں یہ مسجد کے لیے، کمیونٹی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، دینی تعلیم کے لیے یہ لے رہے ہیں۔ یہ جیسے قاری صاحب نے فرمایا، بلکہ ہمارے دوسرے باپ نے فرمایا کہ 100 سال تک آپ بھول جائیں، ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔
इंशाअल्लाह ताला प्लीज आप टेलीफोन उठाएं और रिंग करें, अपना अपना हिस्सा डालें। हमारा सफर जो है बहुत दूर तक है, अभी बहुत दूर है। हमें बड़ी मेहनत करनी है, आपकी मोहब्बत के साथ हम चल रहे हैं, हम आपके साथ ही खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं। ये जगह आपकी है, चशम वालों के लिए है, किसी की नहीं है। जैसे आपने पहले मस्जिद बनाई है, कितना मजा आ रहा है, बैठे हैं अभी कितने बड़े खुशखुश से बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे हैं। तो चशम की मस्जिद की लोग बातें करते हैं भाई, ये किसी के पास की फैसिलिटी नहीं है, जितने चशम के साथ पास है। इंशाअल्लाह ताला ये जब जगह हमारी हो जाएगी नेक्स्ट डोर, इससे भी हम बढ़ जाएंगे। इसलिए प्लीज अपना अपना हिस्सा डालें, रिंग करें। जहां तक हम बैठे हुए हैं रात के 11 बजे तक, आप अपना हिस्सा डालते जाएं तो अल्लाह की नियमतें देते जाएं। जज़ाकल्लाह। सबको हमारी तरफ से आप सबको सलाम, और सब आपका दिल तय से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफिज। Okay, yeah. Can I just quickly run through the numbers in English, just in case, and ways we can you can all make payments. So first of all, you can call in on 01494 772065. So that's 01494 772065. There's a couple of other telephone numbers you can ring on, which is 0777 957 1889. 07779571889. Another contact number is 07956 259 we've also got a GoFundMe page. The guys are telling me you just type in Chesham. Hold on, I've got it written here actually. Right, okay. So if you want to watch it on Facebook, type Chesham Mosque and there'll be a link there. Go on YouTube and type Chesham Mosque, and the top link will be the live stream for Chesham Mosque. Donate on GoFundMe. And does that say and type? Oh yes, sorry. So to donate on GoFundMe, type Chesham Mosque donation or Chesham Masjid account if you want to pay directly to the account. The sort code for that is 020206. Account number is 101. Oh, have I got that wrong? 101. The sort code's 200206. Okay. That's not okay. So the bank details. If somebody wants to pay direct payment, they can obviously do it off their phone or from the computer or wherever. The sort code is 200206. So that's 200206. The account number is 1011831. The account number is 1011831, and you can verify the payee, which should be under Anjuman ul Muslimin. Okay, so please guys, click in, let this money start to roll in. Aisa, we've got हेलो, अब हाजी अब्दुलबारी के भाई हैं इम्तियाज आमिर, उन्होंने 1000 पाउंड की डोनेशन सब उसके लिए, खासकर सेहत के लिए, उनकी आगे की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला फिर से 1000 तनवीर भाई 1000 पाउंड ये लिख लेना। Can somebody let Tanveer know? Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि उर्दू की स्पीच आवड़ियां अंग्रेजी की, तो मैं अपने सीधे साथियों करना चाहता हूं। पर 2 या 3 मिनट 6 8 10 15 मिनट में ना रहना, क्योंकि और भी मेरे साथी भाई बुजुर्ग सारे तो मेरा
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ चश्मा मुतामन कर ले कि पिछले साल असंग तजर्बा इब्राहिम साहब के पैसे बहुत ज्यादा आए, मर्दा ने भी भाइयों ने जीते, मगर सारी धियां भैन माँ खवातीन ने तकरीबन इब्राहिम साहब 40,000 से लेके 50,000 तक सारी धियां भैन चूड़ियां कांटे बालियां जितनी मैं उन्होंने जीतन। तो हूँ मैं दोबारा अपील कर सारे चश्मा ने कि उस दिन असी पूरे फुली तैयार नहीं सी बहुत वाले दिन तो वो 4 जरा दिन लगे इब्राहिम साहब ते अब्दुल बारी साहब मौलाना साहब फरमाया कि 5 रात तक बड़ा अच्छा गया। तो मैं 5 दिन की भी सरे तस्लीम खाम, मगर 4 उस दिन 4 तारीख सी 4 दिन की जगह ना 4 यार आसमानी 4 किताबों हैं जी ये सारे का 4 जन बड़ी लंबी लिस्ट है। तो इस वक्त ये 4 जड़े सारे सदर साहब और बुजुर्ग सारे 4 जन बैठे हो। तो मैं इस मुख्तर अर्ज करसा कि सारे बच्चियों ने भी बड़ा जरा इसने जो पार्टिसिपेट करी ले बच्चियों भी जो ना इसने जो तो 50 पाउंड 100 तो बढ़िया भी 5 चुराए गए 25,000 तक 10,000 तक। तो मैं आज फिर दोबारा अपील कर सकता कि बता चुराए गए इतवार तक बहुत जुमरा जुमा हफ्ता इतवार 4 दिन भी हो गए चाहो बड़ी कम चलना पे। तो लिहाजा हम जो जेडे घर बैठे रेडियो नजदीक वो जो ना सारिया घंटियां टणन बजरियां भी जो लिखने वाले बंदे उन्हें सुटती को नहीं। तो लिहाजा जितने आने को बने जिन्हें डर मोबाइल है दोबारा सारे उनकी मैसेज हो जिन्हें घर रेडियो नहीं है। आई वेलकम एवरीबॉडी और लुक इनटू योर विजन असल डोनेशन है जी। मैं अपनी तरफों सारे फिर दोबारा इत्मास करसा हर से गुजारिश करसा कि बढ़ चढ़ के इस रती साल बड़ी मेहरबानी नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब साडे पिंड बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां अपनी इत्थे बैठदियां ने एक तुसी इधर दी इंट्रोडक्शन करो फिर तो बाद जनाब ये हाजिरी पिंड हाजी गुलाम रसूल साहब बहुत बुनियादी मेंबर है चश्म के और बहुत खिदमत है इनकी हमारी कम्युनिटी के लिए मस्जिद के लिए। हाजी साहब स्टेज पे तशरीफ ले आते हैं अपने ख्यालात का इज़हार है सब मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ ख्यालात का इज़हार आप मैं चश्म ने सारे लोगों जितने भी करीब करके ना मुंह में मैं चश्म ने सारे जितना करीब कर लो अच्छा है। ठीक है The mic's not on. Mic's not on. On. हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी गुलाम रसूल अर्ज कर रहा चश्म ने सारे लोगों जितने चश्म मैं 1966 इस चश्म जो तशरीफ लेकर आया हूँ 56 53 साल के चलिए अंजुमन मुस्लिमीन की पहली मीटिंग हुई सी इस अंजुमन मुस्लिमीन ना रखा गया सी मैं उस पहली मीटिंग च मौजूद सा संगे बुनियाद बंदियां में शामिल हूं। आज तक इस अंजुमन विच दिया तो मैं सारे लोगों को अपील करना जितना भी हो सकना बढ़ चढ़ के हिस्सा लो मदद करो। चश्म में लोग जितनी बेटी साड़ियां आईया जितने तक गई आनस लोग हैं बेहतरीन लोग हैं किसी ख्यालत नहीं की खलूस शुरू होया खलूस का चक्कर मैं सारे बंदे फिर जितने भी सदर करे अली रशीद रहा जफर साहब रहे डॉक्टर आजम रहा भाई गोंदर सर सारे लोग हाजी गणी और जितने लोग चले गए अल्लाह ताला उन्होंने जज़ा खैर का जन्नत फिरदौस में आला जगह का आमीन। ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੇ बहुत देनदारी बहुत है बहुत इतनी देनदारी इस जगह का नहीं करती बहुत देनदारी का काम है बहुत लोग शौक चाहे भी अपने पैसे और लोगों ने पैसे तो सही जगह पे लगे ये नहीं कि है पैसे दे लोगों कोई पैसा ज़ाया नहीं आया। मैं सवाल फिर दोबारा भी माशाल्लाह मलक विलायत हुसैन साहब 1000 पाउंड उन्होंने हदिया किया है मलिक विलायत हुसैन साहब और हाजी मोहम्मद अली साहब ने 1000 पाउंड डोनेट किया है।
हाजी मोहम्मद अली साहब ने 1000 पाउंड डोनेट किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इनके खानदान से मुताल्लिक मादी में जितने भी लोग दुनिया से रुखसत हो गए, जन्नतुल फिरदौस में आला अफसर मुकाम नसीब फरमाए। और हाजी मोहम्मद अली साहब को मुकम्मल सेहत मेरे मौला अपने फजल से अता फरमा। मोहम्मद अली जैनब का बेटा 1000 पाउंड मस्जिद को डोनेट कर रहा है, वाशरी कबूल फरमाए। मलिक बदर हुसैन साहब 50 पाउंड डोनेट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। और इन तमाम साथियों के जज्बों को बहुत बहुत सलाम है। हाजी अब्दुल रशीद साहब साबिक सदर, ये बड़ी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पिछले सदूर और मौजूदा सदर सारे मिल के इस कारोबार को चला रहे हैं। और हाजी साहब आप कई बंदे होते हैं वो अकेला ही 2-4 आदमियों के बराबर होता है, आप अकेले ही माशाल्लाह। आप अपने हाजी राजा अब्दुल रशीद साहब अपने ख्यालात में लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने कोई थोड़ा देना ठीक है। तकलीफ करके मैं सब तो पहला तो मैं वार करना पूरी कम्युनिटी की कि जेड़ा एक काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज ये इस्लाम और पंजाबी की गल करना क्योंकि इंग्लिश इतने बड़े बंदे बोलने लगे हैं इसने ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। इंशाअल्लाह ਇਹਦਾ ਤੱਕ ਹਮਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ और सब तामन कर सकते ताम उसी पिछले भी तामन कर रहे हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है। चशम का नाम पूरे इंग्लैंड बोलता है। जिस तरह चशम ने बंदे तामन करने नाम इंग्लैंड पूरे में ऐसा कोई वाकया नहीं है। ज्यादा मैं अपील करना सारे का भाई अगर बढ़ो, इस कमेटी ने भी हाथ बढ़ाओ, कम्युनिटी ने भी हाथ बढ़ाओ इस काम की जड़ा ना जल्द से जल्द मुकम्मल कर दिया जाए। बहुत बड़ी सारी ख्वाहिश है जब तकड़े से पार से आने से कि केड़ा दिन हो सी जब असा इसकी हिस्सा अल्लाह माफ नहीं है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਜਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तुसा जेडी गल कही है ना कि चशम ना जेड़ा लोग एग्जांपल लेने ने तुसा पूरी हिस्ट्री देख लो कि भाई 3 घंटियां विच 3 घंटे थले अपील तो बगैर अपील तो बगैर 3.5 पौने लाख पौने 4 लाख पाउंड कटा होया सर माशाल्लाह। और चशम शहर कितना क्या बंदे कितने ना लोग इस तरह खुशी की थी दिल खोल यार बंदा जो है ना काम कर रहा है हुआ है कि किसी बंदे इतराज कोई नहीं है बड़ी नहीं हां किसी बंदे मैं नहीं सुना किसी इतराज सब खुश होता है जिस बंदे को ये बात में बंदे सोच फैसला वास्ते होती है। जिस बंदे को गए उस इंतहाई खुशी की थी बल्कि एक बंदे को आज ऐसा गए तो उसने जैसा दसिया तो उसने चेहरे तो खुशी इजहार होनी सी और उसके कि भाई मैनू ऐसा पता लगना है कि मैं खुद ला रहा मैं खुद ला रहा हूं इतनी मेरी खुशी है। सारे टोल चीज है उस शख्सियत का मेरे ख्याल से नाम लेना जरूरी है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ फैजुल हक साहब बंगाली भाई और उनका फैजुल हक साहब फैजुल अल्लाह उनको सेहत दे आमीन आमीन। उनका साडी बड़ी मदद की बड़ा मस्जिद पहले बनने में भी वो मेरे ख्याल है तकरीबन पहले से जिना बहुत काम किया और हुन भी आज उन्हां कोल गए असां ते बड़े ही खुश हुए। उन्होंने क्या किस्सा कीमत ते नहीं छोड़नी वाह वाह तुसा किस्सा कीमत नहीं छोड़नी जिथे तक आखो मैं उथे तक तुसा ना खलोसो माशाल्लाह। और माशाल्लाह उन्हां आज जेड़ा असां उन्हां कोल गए उन्हां क्या है कि भाई 50,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਸੇ ਹਸਨਾ ਦੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਸਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ये बहुत ग्रेटफुल। और उन्होंने कहा कि फंस गए हो तो फिर लग उन्हें क्या कि भाई जाओ तुसी 50,000 में पैसा ते अगर हो जरूरत हो तो मैं लाख तक भी जा सकता माशाल्लाह। ते फिर भी फंस गए हो तो फिर भी मैं जेड़ा है ना तुसी मेरे को वापस आ गया है
जगह नहीं जान देनी क्योंकि इस तो बेहतर तुसां मौका उस टाइम मैं सारी जिंदगी हो गया बिजनेस इन बिल्डिंगां च ये जगह नहीं जान देनी क्योंकि इस तो बेहतर मौका तुसां नहीं आवन लगा उन्होंने बच्चे छोटे छोटे फिर रहे से उन्होंने क्या ये इन्हां दा फ्यूचर है इन्हां बच्चों दा फ्यूचर है बेशक 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 जेड़ा जी साहब ने फरमाया ना कि 3 महीने के इंशाल्लाह से 1.5 महीने की इंशाल्लाह कवर कर इंशाल्लाह हो सकता है कि साहब आज शाम ही खत्म हो जाए इंशाल्लाह वैसे फिर मरना आज इंशाल्लाह कोई निकल वो ठीक है इंशाल्लाह बड़ी बड़ी अखियां बाजो बड़े बड़े इमाम साहब इंशाल्लाह वो देखा ना टेलीफोन चार बंदे बैठे हैं हर बंदे ने टेलीफोन कान पे लाया है दो 4 मिनट सारे जो आदमी साथी लोग ताकि नाल अगला काम ही चलना Bobby. इसके ऐलान कराओ ना नाल जी जी ऐलान तो आपको कोई आई नहीं अभी चिट्ठी आई हाजी उस्मान साहब तशरीफ ले आए हैं उस्मान साहब अपने ख्यालात का ऐलान ठीक है गए और फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी मोहम्मद उस्मान साहब हाजी अब्दुल गनी साहब के साहबजादे हैं। हाजी अब्दुल गनी साहब की बहुत बड़ी पुरानी है चश्म में और बड़ी पॉजिटिव सोच के मालिक के अल्लाह करीम उन्हें जलाए जन्नत फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। Jazakallah Ustaz ji, jazakallah. I've been told to speak in English by community leader Wasim Ali Raja. So my content is very brief. Historically, we're all attached to Chesham. Some through first generation, second generation, third generation. My father came to Chesham in 1963, and the taxi driver who brought him from the airport brought him straight to Chesham. And some of the things my father told me, initially there was no mosque, as you know, and teaching was in a garage or a storeroom. And the first person who taught children was Qazi Firoz Ali. I don't know if the others remember him. And since then, the waterside masjid, this masjid, and we've, mashallah, gone from strength to strength. My first experience of coming to Chesham in 1982, my father brought me to the old masjid across the road. And Jamal Ibrahim Saab's father, he was teaching at the time. And my father introduced me to him and said, Usman, when he used to help start in Luton, he will help you teach children here. So that was my first experience at the masjid here. And since then, alhamdulillah, we've all been very attached to the masjid and with all the work that the elders have been doing from Haji Azam Saab from Maidanet, Allah Jansib Karne, and all the elders that passed away from Chesham as well. And the ones that are with us at the moment as well. Alhamdulillah, har bande ki koshish with everybody's input, we've gone from strength to strength to strength. Every team from the first committee that was made in the early 60s up until now under the leadership of Ibrahim brother, mashallah, has been an example to others. And I can truly say I'm very, very proud of the achievements from Haji Jalman Saab, Zafar Saab from before to where we are now. And I urge everybody, all the brothers and sisters, to participate as much as you can. This is a joint venture for everybody. Every little helps. You know, it doesn't have to be. You don't have to pay big numbers. Small numbers are doable. Children listening, your pocket money, £1, £2, £5, £10, anything you can give, very much appreciated. Brick by brick, slow by slow, we'll get there, inshallah. And thank you very much to everybody. I'd like to pass it back to Salam. those of these will love is Basha के नाम डोनेशन का दान करने का तकमीर साहब जी मोहम्मद उस्मान बिन हास 600 वोट माशाअल्लाह की खिदमत की है। मोहम्मद इलियास बिन हास ने 1000, मोहम्मद इलियास बिन हास 1000 और आमिर इलियास साहब ने 500 वोट किया। अल्लाह खूब फरमाए। हाजी मोहम्मद लतीफ चौहान साहब तशरीफ फरमा है और साबिक मस्जिद कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। आपने ख्यालात का जी इत्मीनान के साथ इंतजार करते हैं और फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम इमाम साहब, chairman of the committee, Raja Ibrahim,
and rest of the respectable members of the community, my congratulations goes to all of you. This is like a dream coming true for all of us. We dreamed about this place. Allah Ta'ala have given us chance to buy it, and we are prepared to do that. Now my appeal goes into the Chesham community and whoever is listening, including my family members, my daughters, my son-in-law, and my grandchildren. I can remember when we started this masjid, we went to the schools, the children of the school in Chesham Park at the time and rest of the schools there have done the collections. I cannot go without mentioning the two communities, the trading communities of the young people here in Chesham. They stood side by side with us, I can remember. We held a meeting up in Paladin Village Hall, and they were collecting the money on a daily basis. And the taxi drivers of the Chesham and Ivercombe and from Luton, we were collecting £10 a day. £10 a day. If we can promote of that type again, that would be great help. Giving to Allah subhanahu wa ta'ala, I can only suggest one thing here. My life experience. We all go through some issues. I was going through some issues in my life when I was bringing up my children and trying to match up things financially back home with my parents and rest of the family. I was going some finance difficulties. We all live in the name of Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can, much as our pocket allow us. I was doing that, but I was still going through some issues. That was the time when in old mosque, I asked Imam Sahib, after Tarawih, everybody else went home. And I asked the gentleman that I am going through some difficulties and I give on the name of Allah subhanahu wa ta'ala, like a sadaqah and rest of it, zakat. They sat me down. Then he said to me, okay, how much do you think you give? Is that it? He says, Allah subhanahu wa ta'ala, He elevates people as much as you give, elevates you towards Him. You do that, He wants to bring you closer to Him. I looked at him and I walked out. I started doing that. Allah subhanahu wa ta'ala have lifted me up, no doubt. Between now and then, my life have been changing. It's been dusting away. Shine has been coming into my life, mentally, physically, and financially. Inshallah. I cannot go without, my last 30 seconds, please. I cannot go without mentioning those who brought me here, those who brought me up. Mr. Zafar Ali Raja Marhoom, Mamu Ata Ahmad Marhoom, Raja Barkat Ali Marhoom, those were the people who brought me up, led me into all this. I thank you all of you. Thank you. हाजी ताहिर अख्तर साहब वालिद साहब के लिए और राजा जफर अली साहब के लिए साले साहब के लिए 2000 पाउंड मस्जिद जज़ाकुमुल्लाह। हाजी ताहिर अख्तर साहब अपने वालिद मरहूम के लिए और जफर अली राजा मरहूम के साले साहब के लिए 200 पाउंड मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। हमारा ताहिर 1000 पाउंड खिदमत कर रही है मस्जिद की और मिसेस ताहिर अख्तर 500 पाउंड मस्जिद की। हाजी चौधरी पहले बोले थे ये हाजी ताहिर 2000 राजा जफर साहब के साले साहब के लिए और ताहिर अख्तर अपने वालिद के साले साहब के लिए 2000 पाउंड मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। बहुत ही पुराने हमारे मस्जिद और चशम के मेंबर हाजी मोहम्मद रियाज चिश्ती साहब
दामद बरकत बना लिया अपने ख्याल का इजहार है टाइम मुख्तसर है आपको और नौ होने लगे हैं आपको टाइम میرے نہایتی واجب الرحمان صاحب اور حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ کمیٹی والوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, انہوں نے 10 منٹ دیے تھے لیکن میں اس سے کم تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس عنوان پر آتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مسجد کمیٹی نے جو بندوبست کیا جگہ خریدی اور سلمان بنا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے سورہ وضحا کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما سائلہ فلا تنہر, اور جو کوئی مانگنے آئے اس کو جھڑکنا نہیں. جھڑکنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کہنا چلا جا, جھڑکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کچھ دے. سائل کا معنی صرف یہ نہیں کہ مانگنے والا, پیر کا بھی معنی ہے. تو پچھلے بدوار کو جناب علامہ صاحب کی قیادت میں بہت زبردست لوگوں نے کام کیا اور مسجد کمیٹی والوں نے اعلان کیا اور سب لوگوں نے شاید کا معنی قرآن پاک میں آتا ہے. میں زیادہ تفصیل پر نہیں جاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کا ترجمہ بھی کروں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور شاید کا معنی یہ ہے کہ سچی گواہی دیں, شاید کا معنی یہ نہیں کہ جھوٹی گواہی دیں. میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ لوگوں نے دل کھول کر چندہ دیا, کسی نے زیادہ دیا, کسی نے کم دیا. اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلا جب بنیاد رکھی گئی یہاں مسجد کمیٹی کی, مجھ سے پہلے میں تو 1969 میں لیٹ میں آیا ہوں لیکن ڈاکٹر چودھری اعظم صاحب نے وہاں پر کمیٹی بنائی تھی. اس کے بعد جناب راجہ فیاض صاحب کی کمیٹی میں آئے. ان کے سامنے اپنا نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن اچھے کام میں نام آ جائے تو لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی رہے اور حاجی رشید صاحب بھی رہے اور حاجی ظفر معلوم بھی رہے, لیکن سب کے نام نہیں لیتا. ایسا نہ ہو کہ نام ہی لیتا چلا جاؤں تو آپ سارے انتظار کرتے رہیں. تو ایک بادشاہ کا میں واقعہ کرنے آپ کی خدمت پیش کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے یہ بنیادی باتیں نہیں آتی. مجھے تو قرآن پاک حدیث سے جو کچھ سننا چاہتا ہے انگلش کا بھی سرچ دے گا لیکن انگلش میں پسند نہیں کرتا. باقی زبان ہماری اردو ہے اور پنجابی ہے. تو میں نے خود دیکھا یہاں پر بڑے بڑے بزرگ لوگ راجہ یاسین صاحب جیسے, راجہ سجادت معلوم جیسے اور بھی بہت ہستیاں چلی گئی ہیں. لیکن ایک بادشاہ نے مسجد بنائی تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی بھی یہاں چندہ نہیں ڈال سکتا, میں خود مسجد بناؤں گا جی, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کتنا ثواب ملتا ہے. ثواب کا دار مار مارنے کا ملتا ہے. جب اس نے مسجد بنائی تو ہمارے جیسا ایک غریب انسان بھی تھا. تو رات کو دیکھا کہ بادشاہ نہیں دیکھ رہا, اس نے ایک اینٹ پھینک دی وہاں پر پیر میں. جب پیر میں اس نے ایک اینٹ پھینک دی تو رات کو بادشاہ خواب میں کیا دیکھتا ہے, میں معذرت کے ساتھ مجھے معلوم ہے کہ نہیں بڑا قلیل ہے. وہ خواب میں دیکھا مال. جس وقت خواب میں مال دیکھا تو بادشاہ نے کوشش کی اگر جانے کی لیکن فرشتے نے پکڑ لیا. اس نے کہا خبردار. بادشاہ نے کہا میں تو مسجد بنائی ہے. اس نے کہا نہیں یہ فلاں آدمی جس کو تو پیر سمجھتا تھا اس نے ایک اینٹ میں کی تھی, یہ اس کا مال ہے. تو دوستوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مسجد آپ سب بنا لیں, مسجد مانو والے لوگ بناتے ہیں, میں سکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب نامی و ناصر ہو. اور میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دل کھول کر چندہ دیں اور ہمارا چندہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب نامی و ناصر ہو. ماشاءاللہ راجہ سلیمان والد کے سال ثواب کے لیے اور خاندان کے مرحومین کے اور اولاد مدینہ کے لیے راجہ محمد سلیمان صاحب اپنے والد مرحوم خاندان کے مرحومین کے لیے اور اولاد مدینہ کے لیے آپ سارے ساتھی
दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत से इन्हें औलाद ज़िंदा अता फरमाए। 2000 करोड़ मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, 2000 करोड़ मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। माशाअल्लाह। मोहम्मद आसिफ न्यूटन से 20 करोड़, मोहम्मद आसिफ न्यूटन से 20 करोड़ कर रहे हैं। मोहम्मद शकील मिनहास एंड ब्रदर 2000 करोड़, मोहम्मद शकील मिनहास एंड ब्रदर 2000 करोड़, हाजी लतीफ मिनहास एंड सन 2000 करोड़, वकास जमील मिनहास 1000 करोड़। बहुत ही पुराने हमारे पीर महंगी रह चुके हैं और चशम कम्युनिटी के बहुत पुराने मेंबर और बावकार मेंबर हाजी मोहम्मद आजम साहब की तशरीफ फरमा है। हाजी मोहम्मद आजम साहब तशरीफ फरमा है। हाजी साहब माशाअल्लाह। हां चशम मैं 1961 से आया हूँ। सारा मकान मुझे 570 लोग यकीन करो कि मैं अपने दिली के खिलाफ पेश कर तो या अल्लाह ये जगह ये मस्जिद वास्ते असीं लगा हर वक्त इसको अलावा मैं जाना है हमने कहा मैं आज वास्ते गया जितने कोई में एक लोग मिले लोग दुआ करना है अल्लाह ताला को दुआ पूरी थी ते जगह से लगी असल कार पूरी योग शहर में पैसे कलेक्शन की थी किसी खयानत की थी कई दवा कुछ कमी लगी पैनी नहीं जेब जो सब 5 करोड़ रुपए हर पैसे लेकिन करो जे लोग पैसे मिलते रहे लोग चले कोई के नहीं छिया सारे मतलब तालों की अल्लाह ताला के बादशाह ये ऐसे ही सारा नसीब होया चेशन करे ना सादे ने ते पूरी रात के लिए जितने बुजुर्ग सने उन्ना इतना असल वास्ते कम कीता कि साडी पिछले वाली नस्ल जी उन्ना वास्ते तकमोन ए याद है हर आदमी जरा पूरी कोशिश करे तो समझ जितना हो सके जो से शुक्र नहीं दे समझा अपने दिता मुंह दे आमीन। तो मैं अपनी बच्ची मेरी नसीब आ तो भी तू दुआ करे तो उसने पीते माशाअल्लाह ए मेरी बात बेटी होने भी होना चाहिए कोई अच्छा लिखे माशाअल्लाह ए लोग की एक रुपया भी जाने देते जज़ाकल्लाह जी। ये हाजी मोहम्मद आजम साहब ने सोने के कड़े उनकी डॉटर सोने के कड़े उन्होंने मस्जिद में लिए की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ करनी अगर आपकी फरमानी है बेशक बालियां के मामले में इंशाअल्लाह बैरन का बुकरी को बालियां लोग ये करे बच्ची माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद आजम साहब हाजी गुलाम रसूल साहब इस फैमिली ने ट्यूशन के सिलसिले में हमेशा बढ़कर के इनकी चाचा दाद भाई है ब्रेड अब्दुल मालिक ब्रेडफोर्ड से 100 करोड़ अल्लाह मोहम्मद भाई भाई छोटा उनके छोटा भाई है उसने भी 100 करोड़ अदा किए हमारे हाथों से चेशम ले गए वो भी कमेटी पुरानी है उसको जाने वाला भी अपना सुझाव देते हैं रामा अब्दुल रशीद साहब ने बात कर देने सारे 100 करोड़ रामा अब्दुल रशीद भाई रखा सुभान अल्लाह 300 करोड़ ये हो गया सारे पुराने साथी से चेशम ले गए खाती खातों में लगाया कि साहब को ले गए उन्होंने बात करनी सरकार एक तरफ कोई 100 सरकार जारिया का साथ को है साधन का फरमाए आज आदमी 100 करोड़ अब्दुल मालिक 100 करोड़ ज़हीर 100 करोड़ जड़ा मामूर शेर से जड़ी वादियां ने खैर माबूद ने करतो ठीक माशाअल्लाह कड़े नो बच्चे किसी ने कुछ करे अल्लाह ताला बरकत दे अमजद अता अरशद अता और शौकत अता की तरफ से 3000 करोड़ मस्जिद की खिदमत की गई। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। राजा जदीद नवाज साहब ने 1000 करोड़ और इमरान अरशद उस्मानी 1000 करोड़ मस्जिद की खिदमत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और जज़ाए खैर अता फरमाए। चौधरी शहजाद अकरम 1000 करोड़, एजाज कियानी और आमिर कियानी साहिबान जो है 1000 करोड़ इन्होंने
مسجد کی خدمت کی اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور الدتا شوکت 1000 پاؤنڈ سلیمان غنی 500 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی اللہ کے قبول فرمائے، اور راجہ عابد کرامت 2000 پاؤنڈ مسجد کی خدمت اللہ کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ جناب عمر حیات صاحب تشریف فرمائے اور حافظ بھی ہے، ایکٹر بھی ہے، اپنے خیالات سے ادا کریں۔ دو تین رکھ عمر صاحب ذرا ایک میں تھوڑا اسپیڈ شکس ہو گئے بھائی کوئی نہیں گا اسپیڈ اعلان جدا کافی کے پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر جلدی عرض کرنا لگا کہ جب وہ سامنے مسجد وچ پیسے اکٹھے کیتے سن عید پڑھنے سے یوتھ کلب اس لئے اساں کی 1.6 ملین پروجیکٹ سی تے سارے ڈونیٹ کرنے سن پہ 500 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ، کیونکہ اس نے ساتھ تنخواہ اس طرح سن تے اساں پھر بھی 1.6 ملین پروجیکٹ پورا کیتا سی۔ اگر اس وقت 500,000 پاؤنڈ دے کے بھی 1.6 ملین پروجیکٹ اساں پورا کرے کیتا سی نا، ہن ماشاءاللہ لاکھ پاؤنڈ دینے پہ، اور اس چشم کی مسجد کی برکت سارے کو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے بزنس مین چشم میں موجود ہیں۔ I don't think that this project will stop at 1.5 million with presence of brothers who are mashallah doing very well. میرا خیال ہے کہ by donating for this cause we are doing ourselves a favor. We are not doing a favor to anybody else but ourselves. So my request to brothers and sisters, Sare, please donate generously and inshallah Allah will reward you with the word hereafter. Thank you very much. Thanks for allowing me to speak. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جمیل اختر منہاس 2000 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی۔ جمیل اختر منہاس۔ چودھری محمد اجمل ہمشیرہ کے سارے ثواب کے لیے 1000 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی، اللہ کریم قبول فرمائے، اور ان کی مرحومہ ہمشیرہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ملک خرم شہزاد 500 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور عادل محمود اینڈ یاسر محمود ناصر عادل اینڈ برادر 4000 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ عادل محمود اینڈ یاسر محمود ناصر عادل اینڈ برادر 4000 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اب ہمارے پرانے کونسلر بھی جج بھی پہلے اچھا تصویر بھٹی صاحب تصویر بھٹی صاحب، اور اس کے بعد پھر میئر آ گئے دونوں میئر صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اہل چشم کو مبارکباد دیتا ہوں، کمیٹی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، نامی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو ساری اس دنیا میں نہیں بلکہ یہ پروجیکٹ جو ہمیں آخرت میں بھی کامیابی کرے گا۔ جو ڈونیشن آج لوگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ڈونیشن قبول کرے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چشم میں جس طرح پہلے یونٹی رہی ہے اسی طرح اب بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھی آرگنائزیشن ہمارے پاس ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ کو منصوبے کو پایا تکمیل تک جائے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹائم کی قلت ہے۔ ابھی آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ جلدی جلدی کرو، اس لیے میں 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے 1000 پاؤنڈ کا ڈونیشن آج دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر بھی کوشش کریں گے، اور مرزا عظیم صاحب نے کہا ہے کہ 500 پاؤنڈ میری طرف سے بھی کہہ رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اب میں ریکویسٹ کروں گا حاجی محمد سیاد قادری صاحب سے، حاجی محمد سیاد قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام اہالیان چشم اور مسجد کمیٹی کے جو ممبران ہیں، صدور ہیں، ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جگہ کے خریدنے پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو ربیع اول کے مہینے
महीने में हमें जगह ये मिली। मैं समझता हूँ कि नकब सब के सदके हमें ये जगह मिली है और हम इस प्रोजेक्ट को सब मिलजुल कर पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। जैसे पहले हमने मिलजुल के इस मस्जिद को पाया तकमील तक पहुंचाया, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ और तमाम अपने अहलियान चशम बहन भाइयों से सबसे अपील करता हूँ, बच्चों से अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें जैसे आपने पहले किया था। और मैं ये फख्र से कहता हूँ कि जो इत्तेफाक, जो मोहब्बत, प्यार इस हमारे चशम के लोगों में आपस में है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ इसी वजह से हमारा ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मस्जिद में जो कंप्लीट हुआ वो सबके इत्तेफाक से और मोहब्बत से और लोगों की तारों से ये पाया तकमील तक पहुंचा। मैं इसीलिए समझता हूँ कि इसी तरीके से जो आज दूसरा जो प्रोजेक्ट हमने खरीदा है वो भी इंशाल्लाह जरूर पाया तकमील पहुंचेगा आपके ताउन से, और आप ताउन हमें इसी तरीके से जारी रखें जिस तरीके से आप पहले करते रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। हाजी चौधरी मोहम्मद बशीर की बेटी की तरफ से मस्जिद की खिदमत वालिद साहब के सारे सवाब के लिए 1000 पाउंड खिदमत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला अहसन मुकाम नसीब फरमाए। मोहम्मद जहीर इकबाल सेहत के लिए दुआ का कहा गया है। चौधरी तौकीर वारिस के सारे सवाब के लिए 500 पाउंड और जहीर इकबाल की तरफ से 1000 पाउंड मस्जिद की खिदमत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और इनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। राजा उस्मान नफर नाना जान के सारे सवाब के लिए खैर बरकत के लिए 1000 पाउंड मस्जिद की खिदमत की गई। तैयब राजा 500 पाउंड मस्जिद की खिदमत की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और इन तमाम अहबाब के जायज देकर इरादे पूरे फरमा दे। माजिद सिकंदर अमशीरा के सारे सवाब के लिए 520 पाउंड। राजा नईम अख्तर कियानी एंड ब्रदर 1000 पाउंड। मोहम्मद इशफाक हाई बेगम से 20 पाउंड। मलक अंसर महमूद 1000 पाउंड मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। मेरे मौला कबूल फरमा और अजर अजीम नसीब फरमा। राजा रहीम वहीद 100 पाउंड। हाजी जवेद अख्तर की बेटी की तरफ से 500 पाउंड। चौधरी इम्तियाज अहमद 1000 पाउंड मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह के कबूल फरमाए। मोहम्मद रिया वल्द हाजी मोहम्मद अरबी सेहत के लिए दुआ का कहा गया है। 1000 पाउंड मस्जिद की खिदमत की बच्चों की सेहत के लिए कहा गया है और ज़ैनब की सेहत के लिए कहा गया है। 1000 पाउंड मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी चौधरी अदरम 500 पाउंड। चौधरी अदरम की बेटी आलिया की तरफ से 1000 पाउंड। नसारा बीबी की तरफ से 1000 पाउंड। अल्लाह कबूल फरमाए और अजर अजीम नसीब फरमाए। जैदान अली राजा दादा नसर अली राजा के सारे सवाब के लिए 100 पाउंड। हाजी शाहिद अख्तर वालिद साहब के सारे सवाब के लिए 1000 पाउंड और वकास कियानी बेटी क्या है 200 पाउंड मस्जिद की खिदमत कर रही है। वकास कियानी की बेटी अल्लाह करीम कबूल फरमाए और अजीम नसीब फरमाए। सेहत और बरकत के लिए कर बरकत की छोटी बेटी है, क्या कहते हैं छोटी बेटी जो है ना मोहम्मद इखलास मिनहास 1000 पाउंड। इखलास मिनहास की बेटी की तरफ से 100 पाउंड। चौधरी रिफाक 500 पाउंड और रमीज ताहिर 1000 पाउंड मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। राजा मोहम्मद लियाकत एंड फैमिली ल्यूटन से ये सारे सवाब के लिए 2500 पाउंड। समीना अरबाब वालदैन के सारे सवाब के लिए 500 पाउंड। निगत जलील सेहत के लिए 500 पाउंड। अल्लाह सबके जहर लेकर आते पूरे फरमाए नसीब फरमाए। वसीम अली राजा की अहलिया की तरफ से 1000 पाउंड। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह जी। हाजी चौधरी सलीम साहब 2000 पाउंड। सलीम साहब 2000 पाउंड। हाजी याबर बंगाली भाई करते हसना 40,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और
اور سید الحق صاحب بغاری بھائی جو ہے کرتے حسنا 50,000 ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حاجی طاہر اختر کرتے حسنا یہ 10,000 ماشاءاللہ حاجی طاہر اختر ماشاءاللہ 10,000 ماشاءاللہ نزاکت محمود اینڈ ساجد محمود 500 پاؤنڈ نام ظاہر نہیں 5,000 پاؤنڈ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت MashaAllah, can I just quickly get in there and remind everybody of ways of paying? So we've got GoFundMe. So to donate on GoFundMe, please go on the Chesham Mosque donation, and that will take you to the GoFundMe page, and you can pay whatever you like on there. You can also telephone in and make a donation on 01494 772065. That's 01494 772065. Otherwise, you can call on 07855 327 555. 07855 327 555. Another number I can tell you is 07956259671. If you want to pay directly to our bank account, that is sort code is 200206, account number 10118311. So sort code is 200206, 10118311. MashaAllah, everybody's paying. The telephones are very, very busy, so it shows that almost everybody is cooperating with us today, and the money is coming flying. We've got lists. By the looks of it, they're endless. اللہ اکبر علینا بکرین 200 پاؤنڈ علامہ رشید ہائی بیگم سے 100 پاؤنڈ شاہد صاحب ریڈ فوڈ سے 100 پاؤنڈ شہید صاحب ریڈ فوڈ سے 100 پاؤنڈ خان عاقب صاحب 100 پاؤنڈ خادم حسین کے سارے صاحب کے لیے اور شاہد محمود کرامت 500 پاؤنڈ ریاض ورد ڈاکٹر آدم کے سارے صاحب کے لیے اپنے والد ڈاکٹر آدم کے سارے صاحب کے لیے 1,000 پاؤنڈ کے مطابق علینا پروین 200 پاؤنڈ ملک ریاض صاحب 1,000 پاؤنڈ راجہ ماجد باندہ کے سارے صاحب کے لیے 500 پاؤنڈ خدمت کر رہے ہیں. نام ظاہر نے کیا 5,000 پاؤنڈ. حاجی عبد الغفار بھٹی صاحب 1,000 پاؤنڈ. اگر جتنا دیو نام والے ڈونیشن یا فٹافٹ نام کرنے لگ ماشاءاللہ. اچھی راجہ محمد شہزاد صاحب بچوں کی صحت کے لیے 1,000 پاؤنڈ. جی جی محترم عبد الغفار بھٹی صاحب ہاں جی اپنے خیالات کر رہے ہیں. محترم محمد غفار بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. میری طرف سے چشم کے تمام مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم. اور یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے سب مسلمانوں پہ کہ مسجد کے لیے ہمیں جو جگہ ملی ہے اس کے لیے جتنی بھی ڈونیشن ہو سکے وہ ہر مسلمان کو فرق بنتا ہے بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ ہے. اور ہم تحقیق سے آپ سب کے مشہور ہیں اور آپ کے اس ڈونیشن کا انتظار کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی آپ میں رہتے ہیں. راجہ محمد شہزاد
بچوں کی صحت کے لیے 1000 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی ہے. اللہ رب العزت ذائقہ عطا فرمائے. عبد الجبار صاحب اور پرانے ممبر مسجد کے اور بہت مخلص ساتھی ہیں، مختصر بیان دینا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش میرے والد صاحب لکھا ہے بہت خوش بہت بہت مبارک پیش کرنا اور اللہ نے سب کام شروع کیا اس کی بہت جلد کامیابی ہو رہی ہے. میں انہوں نے تک 100 پاؤنڈ راجہ عبد الجبار صاحب اپنے والدہ کے شاہد صاحب کے لیے 100 پاؤنڈ اپنی ڈونیشن آلریڈی دے چکے ہیں. اپنی ڈونیشن دے چکے ہیں. عبد الغفار بھٹی صاحب کے برادری اثر حدیث فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حضرت المستصر سارے چشم بہت بہت مبارک اور بڑا خصوصی کرم ہوگا کہ ڈونیشن لگاتار سارے فون دی اللہ کا بڑا کرم ہے ہو سکے اسی آپ کرو کہ انشاءاللہ تعالی چشم سے بڑی کردی ہے لوگوں نے سے نبی تھی اللہ تعالی اس نے بہت ہی اچھی پروفیسر اللہ کرے تو بہت جلد کروں اور تکمیل تک چلا جائے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اچھا بہت مہربانی ماشاءاللہ. ایک دفعہ پھر میں جڑا ہے طریقے دسنا کہ بھئی کہڑے کہڑے طریقے نال تساں جڑا ہے وہ کر سکتے ہو. سو سارے تو ایزی جڑا طریقہ ہے وہ ہے گو فنڈ می چشم اور اس کا لنک جڑا ہے وہ ہے چشم مسجد ڈونیشن. چشم مسجد ڈونیشن ٹائپ کرو گے اس سے آپشن آسی گو فنڈ می اس سے جانے ہو تو تساں بڑے ایزیلی جڑا ہے نا اتنے پیسے پا سکتے ہو. سو جیسے اتنے پیسے پاسو ڈائریکٹلی سارے اکاؤنٹ میں ماشاءاللہ بہت ایزی سسٹم ہے. اور ماشاءاللہ اساں کی تقریباً 3-4 دن ہوئے کہ تسی سیٹ کیتے ہوئے ہو اور ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے بہت ہی کامیاب ہے. اس تو بعد ٹیلیفون مسجد کے نمبر تے اگر کرو 772065 اتنا اپنے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے اور وہ تساں دی ڈونیشن لکھ کے سانو دے سکتے. اس تو بعد اگر تساں ڈائریکٹ مسجد کے اکاؤنٹ وچ پانا چاہتے ہو پیسے وہ سورٹ کوڈ ہے 200206 اور اکاؤنٹ نمبر 10118311. سورٹ کوڈ 200206 10118311. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. MashaAllah. Jazakumullah khair, everyone. Alhamdulillah, the other day we sat down and less than 3 hours we had about 350k we raised. Alhamdulillah, like we're sitting today after Isha, from Isha time. And I just want to remind everyone, brothers and sisters and our mothers and our elders are listening on Chesham Facebook, on YouTube and on the radio. And I'm sure people are texting their family and friends outside the town. I just want everyone to remember and remind myself and everyone that this masjid that we are raising fund for is not just the masjid for the people of Chesham. This is the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala. And when people are traveling from Chesham, we hear all the time and we see people from Slough coming, they're traveling, and they find this house of Allah and they pray their namaz. Right? They find this masjid, they look on map, on Google, they search, and they come and they prostrate in this house of Allah. And then people come from different towns, they come and they pray. To the extent that now we have this COVID and Alhamdulillah we have a big capacity for people to come and pray Salah.
People would come from our neighbor town to pray salah here because they couldn't pray their namaz in their own town. Look at the blessing of the masjid, this masjid that we have, that people would come from different towns, the town next to us, and come and pray salah in masjid. So when you are giving money, when you are donating, when you are giving your sadaqah, the purest form of sadaqah, giving in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, without showing off, without wanting to have a name, but purest form of sadaqah, then you are giving sadaqah to Allah subhanahu wa ta'ala. You're giving your sadaqah not to Chesham people. You're giving your sadaqah not to the management. You're not giving sadaqah to anyone in Chesham. You are giving sadaqah to Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah is the one who will give you a reward. One of the hadith of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and this is a testing time. You know, people have problem with their jobs and everything. A testing time. And our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, if you want increase in your rizq, in your sustenance, right, in your karobar, in your business, in your income, rizq, in your family, then give sadaqah in Allah's way. Give sadaqah in Allah's way. And here we are sitting today asking you to increase your rizq, asking you to have more sustenance, asking you to have barakah. Wallahi, I get called from brothers who say to us that they cannot sleep at night time. They have Ferraris parked in the garage. They have cars, luxury cars. They own houses, massive houses they own in UK, but they cannot sleep at night time. Do you know why? Because there is no barakah in your mal. Today we're sitting here to bring that barakah from Allah subhanahu wa ta'ala. Giving sadaqah brings barakah in your earning. Giving sadaqah brings barakah in your children. If your children do not listen to you, give sadaqah in Allah's way. Give sadaqah. We are sitting here today. Give sadaqah, and you will see when you give your mal for Allah, then Allah will look after your children. When you give mal for Allah, say for Allah, lillah. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that whoever gives lillahi for Allah subhanahu wa ta'ala, that the reward is with Allah subhanahu wa ta'ala. We'll go to Alama sir inshallah for the announcements. राजा अब्दुल रशीद साहब ने जो रकम रखवाई थी वो उन्होंने आज पे कर दी है। वो रकम 25,000 माशाअल्लाह 25,000 उन्होंने उसके रखवाई थी। वो रकम आज उन्होंने अदा कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मोहम्मद वहीद भट्टी साहब की तरफ से 500 पाउंड उन्होंने लिया है। अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब साबित मेयर मोहम्मद कैसर साहब, कैसर दूर नहीं, कैसर चशम। सुभान सबसे पहले तो मैं चशम के तमाम बहन भाइयों को, कमेटी को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खास करके चेयरमैन साहब जो हैं न्यू और साबका चेयरमैन और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने बड़ी दिन रात कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है। जब मैं फर्स्ट यहाँ पे चशम में मूव हुआ हूँ तो उस टाइम इस मस्जिद का समय बुनियाद रखा जा रहा था और मैंने थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन उसमें की है, लेकिन सब ने मिलकर जो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट वो तामीर हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि वो साथ वाला है वो भी इसी तरह से उसके लिए भी डोनेशन होगी। मैं सरप्राइज था लास्ट वीक मौलाना साहब जब यहाँ पे फंड रेज हुआ तो 3 घंटे में 345 किसी टीवी चैनल पे भी इतनी फंडिंग इकट्ठी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, जितनी कि यहाँ पे अच्छी हुई है। बाकी लोग जो है वो रेडी बैठे हैं, तैयार हैं। कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, कुछ देने के लिए भी, कुछ और तरह से वो अपना जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, डोनेशन करेंगे। मैं साथ साथ सलाम भी करना चाहूँगा। मुझे कुछ टेक्स्ट मैसेज आए, मेरे फ्रेंड है, बड़े अच्छे दोस्त हैं जर्मनी से, हाँ जी, इमरान अमीर साहब, उन्होंने 500 पाउंड डोनेट किया थे। वालिदैन के साथ माशाअल्लाह। देखो जी, हाँ जी, इमरान हामिद साहब जी, माशाअल्लाह 500 पाउंड। वो टेक्स्ट आई है। हाँ जी, चौधरी आफ्ताब साहब हाईवे से 500 पाउंड। माशाअल्लाह, हाईवे का साहब भाई जी, चलो माशाअल्लाह 500 पाउंड, जज़ाकल्लाह।
अभी अभी जाते हुए एक और टेक्स्ट आई है हमारी जो काउंसलर है लोकल जैन व्यक्ति उनको मैंने अपने सब कोलीग जो है उनको भी सेंड किया है ये मैसेज उनकी तरफ से 100 करोड़ रुपया उन्होंने डोनेट किया और उन्होंने आप सबको मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि अगर मेरी किसी किस्म की आपको जरूरत है और एक मेरे भांजे हैं फ्रांस से भी मेरी सिस्टर है उनके बेटे ने 200 पाउंड डोनेट किया लास्ट में मैंने लास्ट टाइम मैंने 1000 पाउंड डोनेट किया मेरे घर वालों की तरफ से मेरी मिसेज 500 पाउंड सो इसी तरह आप सब मिलकर अपना जो बजट है वो टाइट कर लें घर वाला जो एक्स्ट्रा 1000 है आपके उनको कम करेंगे और मस्जिद के लिए डोनेट करेंगे हम सब मिलकर आपके साथ करें और इंशाल्लाह आखिरी सब तक आपके साथ रहेंगे जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है और पूरी अपनी कोशिश करेंगे थैंक यू सर मोहतरम अनवर लाल साहब उधर अपने ख्यालात का इजहार के साथ वक्त पर religiously, everybody understands the importance of this project. I just had, I was listening on the live transmission, and I thought, what can I add in the presence of all the scholars here? So I just thought, overall, to reflect on the some people might have thought, having conversation with in the community, the emphasis was given a few times. It was mentioned: is this for the car park? Is this for the car park? And my answer was: in the immediate term, it may be for the car park plus madrasa. We are in need of a desperate need for improving its services, what we do. And then I thought about it, reflecting in the past, even before I came here. That's how it works everywhere. First we saw the need was for a mosque. When people didn't have a place for mosque, people thought there is a need for mosque. And they got a mosque. Then generations passed, and as far as I'm aware, to my knowledge, listening, talking to elders, and Hazrat is always there, Mawlana Sahab and all the other brothers. I've heard this. We have lost a generation in between. Why? Because there was no madrasa here, no education was there. So we realized that 2 generations down the line, there is a need for madrasa. And having lost that generation, we have realized, we have established madrasa. We need to improve the madrasa service to the level where it serves this purpose. It saves our generations. Absolutely. And just as all the elders at the time, they played their role in building the masjid, in building the madrasa where we are, and the management has seen transitions from one president to the next president, and ultimately, mashallah, now we have a transition in the management. And I can see, and everybody in the community can see how they are bringing new ideas into it for the future. They are building for the future. And this project is not for today, that's for future. You will realize, if you think a bit more, you will see very quickly, even madrasa, which brings kids to school, to masjid, connects to it only for few hours, is not enough. For future generations, you will see, you will realize, we need our schools, girls' school, boys' school. Only then you will be able to protect, you will be able to come up with strategies to talk to your men, the public schools, government schools, what policies they should have. Once you have full-time education in the children, you will see what else is needed for the career development, for the health program, well-being of the community.
So we need to build for the future. And we need to build the community. So for that matter, that anything that we do today, we are actually building for the future. Why? Just as a human being, to protect Iman of us, ours, and our future generations. And unless you educate your people, unless we educate our children and their children, we need to think 2 generations, 3 generations ahead in time before we lose it. Yes. If we educate them, they will be connected to the masjid. And if they're connected to the masjid, connected to the scholars, the ulama around here, connect to their, dars and sit and attend, they will only do all that if they appreciate the knowledge, the impression. You're absolutely right that we do lose a generation, but inshallah we will not ever make that mistake again. And so far I think we have 250 plus children in our madrasa, 250 children throughout obviously this COVID issue. Our masjid has been alive and well, although it's been closed to the public. Azans have been done, salahs have been read. We are fighting hard to keep that momentum going. And it's going, and it's for that reason, basically, this purchase has come along. It's for the future of our children. That yes, they can have a nice big madrasa. Even if they wanted a school, to be honest, they could build it there, inshallah. MashaAllah, inshallah. If they wanted a school there, in time they could build it and have a car park. If we need to extend the masjid, we can extend the masjid. It is. Can I just say a couple of things? We on Wednesday announced that or requested to everybody that every working person should try and give £1,000. MashaAllah, a lot of people have. But look, guys, that's a request from us because we have a very long way to go. But I don't want people feeling that if they can't afford to give the £1,000, not give at all. Give what you can. Our request is £1,000 per person who's working. And some people have come back to us and said, well, I'm happy to pay £1,000, but I can't pay it in one go. Doesn't matter. Put your name down. At least we know the money's there. We will deal with it. We will buy the property. We know the money is coming in. So if you can put the £1,000 down, please do it. You don't have to pay immediately. Pay over a matter of 2, 3, 4, 5 months, whatever it is. Whatever's easiest for you, and obviously as soon as possible. Other than that, if you can't afford the full £1,000, then don't make a payment. Do whatever it is, even if it's £20, whatever you can afford, we will be grateful for. And don't think that there's people giving 20,000, 30,000, 40,000, and मेरा जो है वो 50 phone में in actual fact I had a phone call. उसे कहा कि मैं donation देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर I've only got £20. I'm a little bit embarrassed. And I said, listen, that £20 will probably count more for you than somebody who's given 20,000. Because the person who's given 20,000, maybe he was able to give 50, but he only gave 20. So, sincerity. So the point is, please give what you can. Okay, so the £1,000 figure is there for us. Okay, the rest is up to you guys. Okay, so Imam Sahab, मेरे ख्याल है तुम्हारी को listed here वो लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी पढ़ ली है तो तुसा मिस्टर एंड मिसेस निर्बान हुसैन 500 पाउंड नाम जाहिर नहीं किया 1000 पाउंड जज़ाकल्लाह ईसा कियानी साहब 100 पाउंड हाजी इमरान अमजद डरबी से 500 पाउंड चौधरी आफ्ताब हाई रकम से 500 पाउंड चौधरी उमर साहब 200 पाउंड अरे जैन मैकमैन काउंसलर जो है 100 पाउंड मिसेस चौधरी कैसर महमूद 500 पाउंड
हाजी मोहम्मद अशरफ साहब ने जो रकम रखाई थी वो दे दी है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और हाजी मोहम्मद अशरफ साहब ने जो कर्ज़ हसना कहा था वो भी अदा कर दिया। क्या बात है। अच्छा, राजा अब्दुल जवाद साहब 100 पाउंड वसूल हो गए। मोहम्मद फरीद भट्टी साहब के भी ऐलान हो गया है। चौधरी अंसर अली 500 पाउंड। हसन राजा दादा जफर अली राजा के साले साहब के लिए 100 पाउंड। इनाम अली राजा दादा जफर अली राजा के साले साहब के लिए 100 पाउंड। हाजी इब्राहिम, ये क्या है, इब्राहिम शहबाज, राजा इब्राहिम शहबाज 100 पाउंड। राजा अब्दुल रशीद ने जो ये हो गया। MashaAllah. I just want to remind everyone that going back to Haji Sahib, or what Haji Sahib said, before I said, we have an online GoFundMe me, Chesham Masjid donation. We have the account number. If you haven't downloaded Chesham Masjid app, even if you're not living in Chesham, you should still download the app, inshallah. Keep an eye for a hadith and reminders from the app. Now, I just want to go back to Haji Sahib saying, Haji Sahib, last week when we sat down here, we had children, young children. I'm not talking about 10 or 15 or 20. We had children aged of 5 and 6. They asked their father, they said, can you message them and say to them that I want to donate £50 for the masjid. Another child said, I want to donate £100 for the masjid. So they have this jazba. And one child said, from Haji Abu Saab's grandson, he said that I saved up this money to buy a gift for my father. But I want to give my best gift that is given to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you have children with this jazba and passion and love for the house of Allah subhanahu wa ta'ala, then inshallah the future of that community is very bright, inshallah. Inshallah. Raja Zafar Iqbal Sahab 500 pound. मलिक जहांगीर गुलबहार दादा दादी मामू और दादी और खानदान के उम्मीद के सारे स्वाब के लिए मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं 10,000 को। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मारिया और वेद 1,000 को मस्जिद की खिदमत कर रही है। MashaAllah. It doesn't matter how much you give in the way of Allah. The Prophet ﷺ said it clearly in many ahadith. He said, إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. The thing that Allah is looking at, it is your heart and your a'mal. When you give for the sake of Allah, then it is given for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So the one who gives 5 and the one who gives 1,000, it depends on what niyat they had in their mind. And if they have the pure niyat, then Allah subhanahu wa ta'ala rewards them. One of the verses of Quran from Surah Al-Baqarah, Allah says in the Quran Kareem, going back to Haji Ibrahim Sahib thing that the lady said that I have 20 pounds to give. We will have brothers and sisters and children. Children don't work, right? We had a message that Isa Kiani, he's only 9. He has given from his own saving, from his own pocket, from his own money, £100 for the masjid. Yes, sir. £100 for the masjid. Nare takbir, nare risalah, mashallah. Children are giving their saving for the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran al-Kareem, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. That Allah subhanahu wa ta'ala says people who give charity in Allah's way, then they give wealth. Each pound they give, each penny, every penny they donate in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, every pound that they give as a sadaqah, a jariyah in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, then it is as they have given one grain, one seed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And then this one seed has 7 branches. 7 branches.
and then each branch has 100 seats. 7 branches and each branch has 100 seats. How many seats are in total? Our brothers are not listening. How many seats are in total? 700. Anyone who gives £1, what is the reward? 700 pounds. Subhanallah. So if you come forward and you give 5,000, then this 5,000 multiplied by 700. If you come forward and give 10,000, then your 10,000 is not 10,000 anymore. It is times by 700. If you come forward and give 50,000, then your 50,000 is times by 700. Come forward, inshallah. We have GoFundMe, Chesham Mosque donation. We have the account number. We have our brothers, the masjid management. They've got 4 mobile phones, and they're waiting for you to message them, inshallah. Don't hesitate. £10, £20, £100. As much as you can. The condition is that give it with sincerity for the sake of Allah. अबरार हुसैन वालिद के सारे सवाल के लिए 200 करोड़ मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। शाहिद भट्टी साहब 500 करोड़ मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। नवीद आमिर की अहलिया हुमैरा बीबी ने 2 सोने के कड़े माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इब्राहिम साहब ने भाभी ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मोहम्मद इब्राहिम साहब की भाभी है, इन्होंने सोने के कड़े दो कड़े सोने के डोनेट किए हैं। Yeah, that's an example. Before Haji Ibrahim Sahib speak, that's an example. The leaders make an example for people. Alhamdulillah, look at how our sisters, the jazba they have, the passion they have. You know, they haven't got any money on them, right? But whatever they save, I don't know what dream they have. You know, every woman have dream. You know, and whatever dream they have, they said, look, my dreams are no bigger than the house of Allah. Why? The women are saying, our dreams are not bigger than the house of Allah. House of Allah needs us. House of Allah is calling for us. House of Allah, call has come to our ears, and they say, whatever we have, just take it, give it to Allah subhanahu wa ta'ala. मोहम्मद जुबैर वेकफील्ड से माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। May Allah subhanahu wa ta'ala reward this brother. माशाल्लाह। 50 कोई नहीं, इंशाल्लाह Allah will give him so much that the next level will be 5,000 वेकफील्ड से 50 माशाल्लाह। Allah give him more, inshallah. So you can donate more. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले भाई इब्राहिम सारी जड़ी कमेटी है और वाले चश्म सारे हमारी तरफ बहुत मुबारक, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल जड़ी है ना, सारे चश्म की मुबारक है जी। अल्लाह पाक इसकी कायम रखे और कामयाबी दे। सारे अपना अपना ये गुजारिश है जी, तुम कर रहे हो बेटी इजाजत है कि जेड़ा ठीक है वो दियो। असो प्राउड है कमेटी बच्चे जैसे हैं तो मुनासिब सारी औलाद में इंशाल्लाह इस मंजिल की कोई इलाज निकल है इंशाल्लाह ताला कामयाबी दे। असल दुआ देने और we proud that we live in this community। अपना आसना जरूर है। मेरी दुआ है कि आसना सदा जाना इस सारी कमेटी के लिए मोहब्बत में। थैंक यू वेरी मच भाई फ्रेंड। Maaf to some guessing this fact you told about when you give £1, triple by what? 700. 700. It's a worst. And I'd like to take that fact, especially to the car dealers. MashaAllah. Because MashaAllah, a lot of the car dealers have donated, but there's a lot of £1,000 money. And you know, these guys, all the car dealers are listening, and any of their families listening. You've got to tell them that that £1,000 doesn't actually apply to the car dealers. The car dealers' figures are different. The £1,000 was actually for normal working people. Car dealers are normal working people. So they'll have a different limit. And inshallah, shukran, alhamdulillah, thank you very much for the donations that you guys have made.
but be aware, we will be coming back to you guys. Inshallah. क्योंकि गलत है ये सही है पूरे काजी ने तेरे में उन्होंने बताया Just to give you an update for tonight's running total, so far for donations, this doesn't include the loans and this doesn't include any gold that was given. We are at £95,000 approximately. Are these funds donations? तो ये डोनेशन जो आई है 95 जस्ट डोनेशन ये डोनेशन है सदका जारिया इसके अलग है इससे अलावा है तकरीबन 9 लाख औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. To the £95,000 that's just been raised, I got a call from my family and from the family of Atta Muhammad. May Allah to grant him Jannah and all the Muslims that have left this earth and especially those elders that have left Chesham. And worked very, very hard. Unfortunately, I'm one of those in that generation that we missed out a lot. We, for personal reasons, for committee, whatever reasons, my generation missed out. And all these donations, all these collections for the future of our generations to come is for you. This is all we've missed out. My generation missed out very big time, unfortunately, through personal reasons, whatever reasons. But there is no point having mosques, masjids, madrasas, if you don't have the children who have it in their heart to attend the masjid, who don't have it in their heart to come to the madrasa. Believe me, my generation has missed out, but you are your generation is the luckiest generation in this town. You have a lot of in front of you, you've got a great future in front of you, from not only from education in schools, but inshallah education in your iman. Your Islam, your education, you have very good teachers now that are, speak your own language as well, and then, mashallah, you are the next generation that will do a lot for this community. And it isn't just for us, it's for the whole community. It's for the whole community. You're going to be great Muslims and people will see you. The non-Muslims will see you, and inshallah, they will be dragged into the masjid. They will want to come to the masjid as well. So we want this generation that all this is being done for. Inshallah, we're still here. We are still here, but the next generation, which all this is being collected for, you are the ambassadors for Islam, for the future of Chesham, for the future of Islam, and for the Muslims of Chesham. You are our ambassador. We are leaving you in this world to carry on what we have started and what we want to carry on, and you are going to take that forward, inshallah. Anyway, coming back to the £95,000 from my family, the donation is £10,000. And the Hasnit Banza is 30,000. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Anyway, I really do hope that all the youngsters that are watching, maybe I can speak for myself, we waste so much time. We waste so much time in our youth and we are distracted. We are very much distracted in our youth, and it's that time of our lives that we really must have this in our hearts to follow the Quran and the Hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is our future. Not only is this is our future in this life, but in the hereafter, inshallah. This is what you're going to take with you when you leave this earth. So please, we can have the biggest mosque in the UK, but if there's nobody attending the mosque, and if there's no children come to the madrasa, that is really for nothing. Jazakallah khair. मैंने जो आगे इंग्लिश में बोला है, मैं थोड़ा सा उर्दू या पंजाबी में ट्रांसलेट करना चाहूँगा कि
हमने बहनों भाइयों को रिक्वेस्ट की है कि आप 1000 पाउंड पर वर्किंग पर्सन कोशिश करें पॉइंट ये है कि अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोशिश करें। अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हैं और एक साथ नहीं दे सकते, बेशक वो 2-3 महीने आप लगा लें, 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में, 4-5 इंस्टॉलमेंट्स में दे दें, मगर अपने वो पैसे लगवाएं जरूर। अगर आप 1000 नहीं दे सकते 800 कर ले, 700, जो भी आपको तौफीक है, जितने भी आप दे सकते हैं वो दे जरूर। ये नहीं है कि अगर हमने वो मांगे तो कहें जी भाई वो नहीं कर सकते तो देंगे, जो दे सकते हैं प्लीज आप दें, क्योंकि माशाल्लाह सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैसे दे रहे हैं, मगर हमें रेज करना है 1.525 मिलियन और तकरीबन अब तक हम हाफ ले भी नहीं पहुंचे। तो इसलिए जो आप दे सकते हैं प्लीज कोशिश करें। बेशक रकीबा मुख्तार और अवैस मुख्तार दादा हाजी गुलबहार साहब मरहूम के सारे सवाब के लिए 100 फरमाए। कम भी दे सकते हैं, 1000 जो आपने लाया उसको मुख्तलिफ किस्तों में भी 2-3 दफा थोड़ा करके भी दे सकते हैं। ये जरूर इसमें नाम जरूर रखना। MashaAllah, Alhamdulillah. Like I said before, the other day we sat down for less than 3 hours and we had a lot of brothers and sisters coming and taking their Jannah. This is what happened the other day. और दूसरी बात Muhammad Azhar donated on GoFundMe, £50, mashallah. Unknown brother, mashallah, he has not mentioned his name, brother or sister, 2,200, mashallah. Another brother have mentioned the name, £10, and Waqas is saying £20, mashallah. Waqas is saying, mashallah. And we've got the Chesham students, mashallah. They've got school tomorrow, and mashallah, they're still awake. And they're messaging me, Zishan Ahmed. From Pocket, he said, I give £30 for masjid. Fundraising, Basit Ali Safir, he said, I give £100, mashallah. They were transferred into the bank account, mashallah. Allah accept. All the brothers come, inshallah. Quickly, we said 11, but if you come forward now, inshallah, and take your part of ajr, then inshallah, we're free to go, inshallah. So come forward and take your part of ajr. मैं एक और बात कहूँगा कि हमने डोनेशन पे जोर रखा है। एक और चीज है कि take the mic. They are batteries one there, I think. अच्छा, वो ये है कि कर्जे हंसना हमें वो भी चाहिए। अगर आपके पास घर में या बैंक में या कहीं जगह पैसे पड़े हुए हैं, वो आप हमें दें। यहाँ बिल्कुल सेफ है और जो आपको मुनाफा यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। और जितने भी पैसे हो, 1000 करोड़ अगर आप देना चाहते हैं प्लीज, बैंक में है, घर है, वो हमें दें और उसकी लिमिट हमारी तो कोशिश है कम से कम 1.5-2 साल हो। अगर किसी बहन भाई को उससे पहले चाहिए हो तो आप हमें 2-3 हफ्ते का नोटिस देंगे तो इंशाल्लाह हम वो आपको वापस कर देंगे। माशाल्लाह बिलाल अली नवीद अपने वालिद नवीद के सारे सवाब के लिए 500 पाउंड माशाल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह की जज़ाए खैर अता फरमाए। चौधरी जिद साहब और उनकी अहलिया, उनकी सेहत के लिए दुआ करना है। वालिद बिलाल की वालिदा की सेहत के लिए भी अल्लाह के हाजी जिद साहब को, उनकी अहलिया को और उनकी बेटी को मुकम्मल से भी अभी नसीब फरमाए। और पूरे जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदके लिए आमीन। Our brother said, sent a message. His father from Chesham, Haji Sahib, have donated £5,000. They said not mention our name,
And now Haji Saab's missus, she said another 500 from her, and they said make khususi dua for Nana Nani and Dada Dadi Sadqa. I just had a request to briefly explain how the Qazi Hasna works in English. So Qazi Hasna is basically a loan that you will give to the masjid. The masjid will use that money for whatever reason, purpose we need it for. That is an interest-free loan. So if you give us, say for example, £10,000, we will use that £10,000 as long as we need to. Soon as our money starts to come in, we will pay that back. If you need that money any earlier than that, all you need to do is give us 2 or 3 weeks notice. Obviously for each particular person, we will have an agreement, have it signed, and it will state whatever requirements there are. And it will also say something, for example, we have a section on that form that if you're upon your death or if you're not there, who would we give that money to? So your money will always be safe there. It's just the fact that masjid gets to use that money rather than for us to go to a bank and pay interest to buy a property for the masjid. We would use our own community's money. And as I said, it's basically a free loan. There's lots of people that have money, surplus money sitting at home, doing nothing. Give that to us, we will use it, and whenever you need it back, Alhamdulillah, I'm more than confident that we will be able to return that within 2 or 3 weeks from other sources. जज़ाकुमुल्लाह हाजी राजा मोहम्मद अरशद मरहूम की फैमिली की तरफ से खैर बरकत और सेहत के लिए दुआ का कहा गया है 1000 पाउंड। अल्लाह करीम हाजी राजा मोहम्मद अरशद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला अफसर मुकाम नसीब फरमाए। आमीन। और जो अफराद उनके पीछे फैमिली के हयात है अल्लाह करीम सेहत के साथ दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। रेहान महमूद ने 100 पाउंड नसीब की है। जज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह। मैं राजा मोहम्मद जफर इख्तिताम में अपनी गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन मुझे दोबारा ये अर्ज करना है कि आज जिस जोश और जज्बे के साथ आप लोगों ने मस्जिद के साथ ताउन किया है और जिस तरह आपने उस दिन जिस जज्बे और जोश के साथ ताउन किया था, ये बहुत ही यानी हमारे लिए और हौसला अफजा बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत मुसरत की बात है और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे। लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिलसिला अभी आप समझ रहे हैं कि एक बड़ा सफर आपने तय किया है, लेकिन अभी बाकी सफर अभी रास्ते में है। तो हमें इस सिलसिले में मजीद कोशिश और हिम्मत की जरूरत है और ये सिलसिला चलता रहेगा। आपके पास टेलीफोन नंबर है, मस्जिद कमेटी के साथ कल भी रब्ता करें, परसों भी रब्ता करें और फिर ऐलान जो लिखाएंगे आवाम उनका ऐलान मुसलसल रेडियो से होता रहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस ताउन को मजीद बढ़ाएं। आपने अजीजों कारब में दूसरे शहरों में रहते हैं, उनको भी इनकरेज करें, उनकी भी तवज्जो दिलाएं कि इस कार्य में शिरकत करें। बुनियादी चीज जो है वो ये है कि कोई बंदा, कोई शख्स, वर्किंग बंदा, कोई शख्स ऐसा ना हो जिसका इस कार्य में हिस्सा थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन हर बंदे का इसमें हिस्सा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो पहले भी दोस्तों ने बातें की हैं, सबसे जो बड़ी बात है मेरे नजदीक वो ये है कि किसी कौम में जब इत्तेफाक होता है, आपस में एक दूसरे के साथ इज्जत का रिश्ता होता है, तामुन होता है, एतमाद होता है, तो उस कौम को कोई शिकस्त नहीं होती। तो अल्लाह ताला की फतह और नुसरत की उन्हीं के साथ होती है जो आपस में एक दूसरे का एतमाद, इहतराम और इत्तेफाक के साथ करते हैं। तो चशम के मुसलमान मैं समझता हूँ कि आज ये जो साथी हमारे मस्जिद में मदद कर रहे हैं, हम सब इकट्ठे और मैं अपने दिल की अथा करें से जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि इंतहाई मसरत और खुशी हुई और जिस जिसको भी मिले उसने कहा कि जरूर तावन हम करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे। तो प्रूफ दे रहे हैं जी। बहरहाल ये है कि जिस तरह मौलाना साहब आपका
अपील कर रहे हैं। इस तरह मैं जब किसी ने कहा था ना कि इतने पैसे हैं तो इतना हुए, तो मेरे जहन में था कि मौलाना साहब कहेंगे कि हम उठेंगे नहीं जब तक इतने ना हो। तो ऐसा ऐलान भी हो सकता है, इसलिए होगा इंशाअल्लाह उससे पहले ये पूरा हो जाएगा मोहम्मद इरफान आदम करदे हसना 5,000 करोड़ मोहम्मद इरफान आदम ने करदे हसना 5,000 Can I just quickly, just for the listeners and viewers who are further afield than Chesham, point out our GoFundMe page, please, so you can donate to us, mashallah, by going to Chesham Masjid, donate, and that will take you to our GoFundMe page. So that's all our brothers and sisters throughout the country, throughout the world. Yeah. Is that right? Yeah. Throughout the world can go and donate on our GoFundMe page, which is Chesham Masjid Donate. We have a long way to go. We have a beautiful project here, mashallah. Chesham is a very, very small town, but very, very united. Extremely very blessed. Extremely united and blessed. And we only have one masjid here. जी हाजी राजा वहीद अबू साहब करदे हसना 10 लाख माशाअल्लाह। इस वहीद अबू खानदान के मरहूमीन के लिए और वहीद साहब की अमी की सेहत के लिए दुआ का कहा गया है 1,000 पाउंड अदा किया। ये डोनेशन है 1,000 और 10 लाख पाउंड जो है वो करदे हसना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वहीद साहब की अमी को सेहत और सलामती नसीब फरमाए। So going back to, we are one masjid in our town, purpose-built masjid we have. In our madrasa, we have over 250 children and growing. This is the reason why we've bought this building next door, mashallah, which will be an expansion project for our future. So please go to our Chesham Masjid Donate and on the GoFundMe website. You can also telephone in on our masjid phone number, which is 01494 772065. So that's 01494 772065. If you want to pay directly to our bank account, which also you can do, the account number is 10118311. The sort code is 200206. Now we've bought this place, and we have to now pay for it, and we only have a number of weeks to pay for it. So everybody's really going to have to chip in and help out so that we can, inshallah, complete this project. So please do whatever you guys can. मैं जमा कराने के बाद मेरा हक बनना कि कमेटी की रिफॉर्म अपना मैं पैसे खाली जमा करा के किसी की रिफॉर्म ना कराना तो ठीक नहीं। सही है। ये भी मेंशन करो कि जो पैसे जमा कराने क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट में जाना वो पेमेंट कर दें, लेकिन किसी की रिफॉर्म नहीं कर रही, ये गल ठीक नहीं होती। ठीक है। So if you're gonna make a substantial transfer into the account, please do call us. You have the phone numbers. I can repeat them again, which is 01494 772065. If you make a payment, you can phone us up and let us know that you've made a particular payment, so we can allocate that payment to wherever it needs to go. जी सर, फ्रांस को जो डोनेशन आई पेरिस को वो एक कुछ कोई इंटरनेशनल अकाउंट है ये किस तरह पेमेंट होगा सर? बिल्कुल। See, mashallah, brothers,
Alhamdulillah, Muslims are like one jasad, one body. We are here in Chesham announcing, and mashallah, brothers from places, not in the UK, outside UK, from France, Paris, from other countries are sending their money, mashallah. For whom? For Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, come forward and take your part of reward from Allah subhanahu wa ta'ala. I was mentioning the ayat from the Quran Kareem where Allah subhanahu wa ta'ala said that He multiplies your £1 by 700. MashaAllah. He multiplies. It is Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah says that He increases and He gives to whoever as much as He wants, because He's Allah subhanahu wa ta'ala. So we can have, inshallah, one or two brothers who can come forward, inshallah, and say to us, you know what, brothers, my honorable elders in Chesham, I'll take the rest of the payment. I take the responsibility to pay the payment, and you guys go home, inshallah, you know, and it's between me and Allah subhanahu wa ta'ala. If not, then okay, let's divide it then, inshallah. Let's divide it to 5 people, inshallah. 5, inshallah, okay? We think 5 can have, inshallah, right? Come forward, inshallah. We're waiting to hear the names, inshallah. And then Allah subhanahu wa ta'ala's angels are waiting as well. This masjid is full of angels, right? Waiting for your name to come forward. And remember the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Niyatul mu'min khayrul amali. That the niyat of a mu'min is better than the action. Make niyat that, Ya Allah, give me istiqamat, Ya Allah, give me ability to help your masjid. Make the niyat, inshallah, come forward and take your part. This is Mirman Khan bin Has. कर्ज़ अज़ना दे रहे हैं 5,000 पाउंड। अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता फरमाए। मिसेस मोहम्मद यूनुस बिन हास के साले साहब के लिए 150 पाउंड। हमला अब्बासी पॉकेट मनी से मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं 20 पाउंड। अल्लाह ये क्या है कि मोहम्मद ये नाम हाँ जी कौन परवीर साहब जी क्या नाम है मोहम्मद इरशाद बिन हास वालिद यूनुस बिन हास के साथ मोहम्मद इरशाद बिन हास वालिद यूनुस बिन हास ये सारे सवाब के लिए 100 पाउंड। Bismillahirrahmanirrahim. First and foremost, thank you, my name is Wasim Raja, I work with by Rahim, and truly we are humbled by the response. Absolutely. Truly humbled by the response, overwhelming response from Chesham brothers and sisters. Once this project was initiated, our Rebbe said to us, don't worry, Chesham will rise to the challenge. Inshallah. Just like before. And alhamdulillah, in the space of a week, we're close to nearly, I'd say, just shy of £500,000. And that's absolutely amazing. And like the brother touched earlier on, this is a vision beyond parking. Like Brother Ibrahim's vision is to serve the future generations, to plug the gaps, see what we can do, and make our youngsters stand stronger for the future, and be good representatives of the community of Islam. And thank you very much for your support. And I had a message just earlier on. A brother contacted me and said, brother, I offered you Qarzai Hasna. Yeah, he goes, I gave you offered you Qarzai Hasna, but I'm going to change your mind. And I said, that's absolutely fine. And he goes, ask me why. I said to him, why? He goes, everything I have comes from Allah subhanahu wa ta'ala. He goes, how can I give to him and ask for it back? He goes, for that very reason, the £50,000 I said, he goes, you keep.
Send the blessings to my beloved father who's passed away. And he said, pray for him and pray for all my relatives that passed away. And I was absolutely overwhelmed. So you can add £50,000 to the figure we currently have. And he said, you just ask me when you need it, brother, I'll do it. So you can't, like you said, Imam Sahib, your dua has come true. Your dua has come true. Absolutely. He wants to respect, which is alhamdulillah, which is fine, we respect. Yeah, absolutely, we respect that. So may Allah reward the brother, may Allah reward his father, and all those who have passed away. He set a fine example for us. But going back to the point I was making, this is more than a club park. This is more than, inshallah, our vision is to make a community hub. Make a community hub and all sorts of centers in the future. Once you are able to do such a position to serve our children and invest in the future generations, we are doing our very best now to address the academic. So we started, Brother Yim started classes for the 11th class, GCSE classes, so we're slowly plugging the gaps. And alhamdulillah, the people of Chesham are supporting us. So inshallah, we'll do our very best, and our biggest strength is your support. Your support, without your support, we simply cannot do it. We cannot do it, and we thank every single one of you. 50,000 करोड़ जो कर्ज असर लगवाया था वो डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने इमाम साहब उन्होंने कर्ज हंसना दिया था 50,000 और उन्होंने कहा कि भाई देखेंगे हमने पॉइंट चेंज कर दिया है। तो भाई बोले क्यों आपने लाख दिया अल्लाह ने भी ब्रांड चेंज कर दिया। हाँ, तो हमने माइंड इसलिए चेंज किया है कि भाई ये जिसने दिया है मुझे, मैं उसको कैसे लोन करूं, मैं उसको कैसे लोन करूं, इसलिए वो दे दो वापस। ठीक है, सोच की बात है। चौधरी अमजद महमूद हाई बेगम से 100 करोड़, चौधरी इशफाक हाई बेगम से 50 करोड़, राजा दलील से जाद 500 करोड़, राजा खालिद ल्यूटन से 500 करोड़, चौधरी इफ्तिसार 500 करोड़, अखलाक मिनहास 50 करोड़, चौधरी लियाकत अली 1000 करोड़, जज़ाकुमुल्लाह। फाबियान अरशद, राजा फाबियान अरशद 500 करोड़, राजा नसरान अरशद 1000 करोड़, बदर मुनीर अरशद, राजा बदर मुनीर अरशद 1000 करोड़, रिजवान अरशद 1000 करोड़, राजा रिजवान अरशद और राजा इमरान अरशद 1000। जज़ाकुमुल्लाह राजा साहब, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह। देखो भाई, चशम के मैं तो सितारे कहते हैं माशाअल्लाह, नसियात की मदद है। रात का वक्त है मेरे साथ, सारे रात को चमकते हैं, उनकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। मुझे मालूम है कि रोशनी हम तक आ रही है, लेकिन उसको मदद नहीं करना, रोशनी को कम नहीं करना। प्लीज उठें, टेलीफोन उठाएं, जिन हमारा ने अभी तक कुछ नहीं दिया प्लीज वो नोट करें। जैसे पहले हमारी मस्जिद के लिए कि अगर 1000 पाउंड देते हैं नहीं दे सकता, प्लीज वो नाम लिखवा लें, थोड़ा थोड़ा करके हमें वो दे दें, यही बहुत बड़ी बात होगी। देखो अभी एक साहिब ने 50,000 पाउंड डोनेट किया था कदे हंसना, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई मेरा माइंड चेंज हो गया। जिस अल्लाह ताला ने मुझको ये दिया है, क्या मैं उसको वापस कर्जा दूं? ये कैसे होएगा? उसका देखिए दिमाग कैसे है। देखो ऐसे भी हमारे भाई हैं, ऐसे भी हैं। प्लीज उठें, टेलीफोन उठाएं और हम करें, आपका इंतजार कर रहे हैं काल के लिए। ये आपका पैसा जाया नहीं जाएगा मेरे भाई, ये जाया नहीं जाएगा इस सालों में, ये आपको वापस मिलेगा फिर दोबारा दुगना दुगना। छोड़ के पत्नी कितना दुगना मिलेगा, वो दुगने से बहुत ऊपर है। ये तो उसके बाद एक और बात है कि जो आगे जाके जो आपके माल तैयार होंगे वो ये तो हमने इस दुनिया में तो कह दिया कि यार मेरा घर बड़ा होना चाहिए, मेरा लॉज बड़ा होना चाहिए, मेरा किचन बड़ा होना चाहिए। जब वहां की फिक्र नहीं है, वहां की तैयारी करें, वहां माल बनाएं, वहां बड़े आपके लॉज होने चाहिए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना सालों, वहां भी इंशाल्लाह बैठे होंगे।
उठे, टेलीफोन उठाएं और हमें कॉल करें। टेलीफोन नंबर जो मस्जिद का है वो 1494772065। प्लीज उठे और रिंग करें। अमान 100 कोड अक्सा, 100 कोड मरियम, 100 कोड आमिना, 100 कोड मोहम्मद इब्राहिम, अहमद 100 कोड और मोहम्मद अफजल के खानदान के मरहूमिन के लिए 500 कोड। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। ये सब छोटे बच्चों की तरफ से है। हाजी मुदीर साहब हैं, उनके बेटे हैं तारक, हाजी तारक, ये उनके बच्चे हैं सारे। माशाल्लाह, हाजी मुदीर साहब के ग्रैंड चिल्ड्रन, क्या बात है। ये है ना, हाजी मुदीर साहब थे, ये पोते हैं जिन्होंने एक डोनेट किया है। अल्लाह के जज़ाए खैर। I've got an announcement to make. I think it's a student of Masjid, a very bright student, and I think Chairman Sam, he doesn't know. It's their son, Muhammad Ibrahim, Abdurrahim, and Abdurrahim, he said, I want to give 150 from my pocket. He said, I'll save it up and I want to give, so Allah make Sadaqah Jariyah. See, mashallah, this is the beauty of our deen. You know, if there's any other deen, and they announce saying the children, that just wouldn't come. But look at the beauty of our deen, that our children, 5 years old, 6 years old, 7, 8, 9, 10, they have this passion. And I think the elders, their parents, they need to encourage their children. Right? If your son or daughter, they're sitting at home and they're listening us on the radio or on live Facebook or YouTube, encourage your children. Take some money out of your pocket and give it to them and train them, right? Teach them to give sadaqah jariyah, right? This will give them a teaching, because children look up to elders. Our elders are the role model to look up to. So you can do this. If the children haven't got any saving, right? If they haven't got any saving, say to them, okay, this is your money. Give it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And this way you teach them and then explain to them that us Muslims, our wealth is the wealth of Allah. Our saving is the saving of Allah. Whatever we have today is given by Allah subhanahu wa ta'ala. And it is His wealth. And if we give in His way, His wealth that is given to us, then Allah will multiply our wealth. How many times? 700 times and more. And then we have blessings and barakah and so much tranquility and peace that when our kids they sleep, then this is our teachers taught us this, that a child up until the age of 10 is in purest form. Right? No sin on that child. No sin on that child. Right? The child's color is lifted. There is no bad sin for him. There is no sayyi'at for him. A daughter or a son. And imagine they give their saving for the house of Allah. By Allah subhanahu wa ta'ala, I'm saying this, when they will close their eyes, right, they will see the face of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because they are pure. They're given to encourage His deen. And how could it be if they have niyat and make niyat, oh Allah, we're giving it for you, so your Prophet's deen can be passed on. Your Prophet's deen can be taught and people study. And we believe, inshallah, when they close their eye, they will see the face of Duha, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. So encourage them, inshallah. Give them some money to donate and give sadaqah jariyah. फराज हुसैन के बेटे अकदस हुसैन 200 कोड और 3 बेटियों की तरफ से 150 कोड। दादा दादी खानदान के मरहूमिन के लिए साले साहब अल्लाह के खानदान के जितने अफराद दुनिया से मौजूद हुए तमाम को जन्नत फिरदौस में आला अफसर को मुबारक का नसीब फरमाए। Mashallah, the donations are still coming in. So providing they see coming in, unfortunately we're going to have to see it. As I said before, like there was some made announcement of a brother who donated 50,000. And I said, we need about 5-6 brothers, inshallah. Yeah? But 5-6 brothers, inshallah, coming forward, inshallah. So waiting for you. You know, Allah has given you.
it is between you and Allah. We haven't got any, camera fitted in your house or in your heart or in your bank balance. You know Allah's given you. You are listening to us on the radio, on live Facebook. Now you can't deceive Allah. You cannot deceive Allah. Allah knows how much you got in your bank. As our chairman Haji Ibrahim mentioned, give sadaqah jariyah. If you cannot give sadaqah jariyah, then give qarz hasana, which masjid will return to you. They will give your money back, whatever you give. If you cannot give qarza and qarz hasana, and you got saving in your bank, you can put that saving into masjid saving. What more do you want? What more Islam can give you? Tell me, your mal is sitting in the bank, you get no reward. But if that is saved and put in the masjid construction and buying masjid, then that is sadaqah jariyah. Even though you've not given that to masjid, you just save your money, you've given it to the bank masjid to save it and have it, keep it for him and return it to him, but you will still get reward from Allah subhanahu wa ta'ala for investing. So you have option, inshallah. Come forward, we need this 4, 5, 6 brothers, inshallah. Come forward and put the donation. Jazakumullah. Salma Aftab, वालिद चौधरी आफ्ताब के सारे सवाब के लिए सलमा आफ्ताब ने अपने वालिद मरहूम चौधरी आफ्ताब अली के सारे सवाब के लिए 2000 माशाअल्लाह इमाम साहब मैं सच्चा खबर तफा पिया कि जड़ी असर ये कीमत ना टेलीफोनत है और चिट्ठा लिखने वाली पैसे गिनने वाली उनकी इस वेले वक्त पे आया चशम माशाअल्लाह पब्लिक इतना कर रही है कि उनका सारी वक्त पे आया कोई इधर दौड़ना माशाअल्लाह इस वास्ते फिर असा चशम की बहुत बहुत मुबारक दे सकते भाई जितना तुम कर रहे हो थैंक यू वेरी मच माशाअल्लाह मगर डोंट स्टॉप we still have a long way to go. आगे 2 घंटे हैं इंशाअल्लाह. Yeah, we've got our masjid student, he's about 9, Rayyan Mahmood. He's given £100 for the masjid, mashallah. And Jodi Qasser Saab's son, Haseeb Qasser, he's doing hifz in the masjid. He's given £10, and then £200 from Jodi Qasser Saab's for the khala. So make dua for her health, inshallah. And then the last announcement I have Safa Mukhtar. She is 8 years old, Haji Gulbahar Saab's granddaughter. So she's given £40, 8 years old now, and she's given £40 she had. And alhamdulillah, you know, for someone, she's saying that you mentioned other children's name, but you haven't mentioned my name. So she rang and she said, I'm going to give my name. So see, this is her £40. For her, this is 40,000. But you know, the amazing thing is that we see these campaigns. I see them on the television. Yeah. Every time we tell, certainly during the Ramadan and what have you. And Allah is always for the house of Allah and what have you. It's always for another town, somewhere else, somewhere else. This is for your own town. This is your masjid for you. So please come forward. And these kids are 6, 7, 8, 9, 10. This is all for you. I'm speaking to the parents now. This is all for your children, for your daughters, for your sons. They will grow here, inshallah. They will study here. And inshallah, as chairman said, we have many plans, inshallah, in mind. We'll make whatever you want, inshallah. Jazakumullah. मियां वकास राउफ ने 500 करोड़ अपने वालिद मियां अब्दुल रऊफ के सारे सवाब के लिए मियां वकास रऊफ ने अपने वालिद के सारे सवाब के लिए 500 करोड़ माशाअल्लाह Jazakumullah khair. I was mentioning before, so this is this for her is about 40,000. 8 years old, saving £40. I remember going to school and my dad used to give me £1 when I was 8 years old, or £1 or £2. So for her, it's a lot of money for her. We need brothers who have
money, about 40, 50, 60,000 pounds, and we know, Allah knows that you have the money, but we're waiting for you. Come forward, inshallah, and I want to bring a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And this hadith is for those who want to give money in the way of Allah. This hadith is for those who got money and they're thinking, shall we delay or what do you think? Shall we wait? Don't wait. Do not wait. Come forward. Why? Because angels are writing. Angels are writing the name, and you want the name to be written straight forward. Listen to the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the man who is the greatest man, the man who is the master of mankind, the man who had the majority following without having any social media. Our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he doesn't have Facebook, he doesn't have Snapchat, he doesn't have Instagram, he doesn't have WhatsApp, right? There isn't any account on his name that you can go and, okay, that's his account, we're putting money, no. But he is in our hearts. He is in the hearts of 2.3 billion Muslims. Our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, when you give money in the masjid, in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, to build a masjid, then Allah gives you a house in Al-Jannah. Now this is the last hadith. Then inshallah we mention more. But this is the last hadith for Apostle. You want your house in Jannah? Come forward. Come forward and take your house in Jannah. Angels are present. Allah subhanahu wa ta'ala is witnessing that we are sitting here and asking for the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whoever gives in the way of Allah to build a masjid, then Allah will build a house for him in Al-Jannah, in paradise. If you want a house, and if you have your parents who passed away, and you weren't able to serve them, you are out of country, you are studying, or you haven't had the time to serve them as you wanted to serve, this is the time for you to serve your parents. This is the time, my brothers and sisters, you can come forward and say, I want to donate 10,000 for my father who passed away, and inshallah, Allah will give him a house in Jannatul Firdaus. From here, sitting in Chesham, online inshallah, sitting wherever time you're listening from, your father will have a house from Allah subhanahu wa ta'ala. If your mother passed away and you want her to be in Jannah, the house built by you, Allahu Akbar. The house made by you. The house that you had is your house, right? You got that house and you paid for it. Then come forward and donate in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. What our brothers are giving, that's what they can afford. That's what they have. And they are sincere. Wallahi, they are sincere whatever they're giving. And they're giving whatever they can afford. But we still have the big parties. But we have people that we are waiting, and Allah knows, come forward inshallah and take your Jannah from Allah subhanahu wa ta'ala. तो सर आज अशरफ साहब की मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता कि हाले भी अक्सर मैं समझो कि करावे लोग बैठे हुए जिन्ना नहीं आले जिन्ना आले पैसे नहीं मिलते आले सोचने में करा ना करा कितने दिया किस तरह दिया मैं समझा कि जितने भी थे बंदे बैठे इतने सारे बंदे तुसा जेड़े हो बेहतरीन तरीके नाल उन्हें समझाई सकते हो भाई उठो जागो जब बिलफाज ना उठो तो सब घबरा आम सा खाली इंसान अच्छा माशाल्लाह ये एक बच्ची है कुदसिया महमूद उसने 500 या मस्जिद डोनेट किया अल्लाह ताला और शायर बरकत 7 साल की बच्ची है जी माशाल्लाह हाजी अता मोहम्मद मरहूम की फैमिली की तरफ से उनके इस स्वाब के लिए 500 पाउंड माशाल्लाह हाजी साहब को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हाजी मोहम्मद अकरम की फैमिली की तरफ से 2000 पाउंड मछली की खिदमत की गई माशाल्लाह ताला खैर बरकत के दुआ के कहा गया अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की खुशी नसीब फरमाए आमीन माशाल्लाह आज जो चशम की मस्जिद के लिए जो आज कलेक्शन की अपील की गई थी उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चशम के मुसलमानों ने दिल खोल कर
हमारे इस मस्जिद की खिदमत की है और उनके जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। हम 2-3 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो चिट्ठियाँ लिख लगे गए, समझे कि इतना अर्सा हमने नहीं लिखा होगी जो आज वो काम किया। माशाल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे और इसी तरह इस जज्बे के साथ आगे चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। आज सबसे पहले कि पिछले 2 घंटे 3 से हम बैठे हैं यहाँ और मेरा नहीं ख्याल किसी ने पानी पिया है या खाना खाया कारण ये कि पिछले 2-2.5 घंटे से बैठे हैं हम यहाँ और मेरा नहीं ख्याल किसी ने पानी पिया या खाना खाया, क्योंकि हमारे लिए पानी और खाना जो है ना ये आपका सदका जारी है। आप आए इंशाअल्लाह यू कैन कम फॉरवर्ड और जो अभी हमें पानी चाहिए ना वो आपका डोनेशन है, वो आपका डोनेशन है। आप आए इंशाअल्लाह और बिलीव मी कि अगर आप आएंगे इंशाअल्लाह और आप कहेंगे भाई हमारी तरफ से ये मस्जिद के लिए है तो वही हमारे लिए काफी है। कम फॉरवर्ड इंशाअल्लाह, कम फॉरवर्ड इंशाअल्लाह एंड yeah inshallah afterwards inshallah come forward and our water, our food is your donation. Come forward inshallah and our sister Masjid can explain how the loan works and how we can set up programs. So I'll just very quickly explain again how the loan works. It's a very, very simple system. The masjid needs money. The masjid needs money. Rather than for us to go to a bank and pay interest on a loan, if a member of community has some spare surplus cash money in their bank, they can loan that to us. It will be a legal agreement that we will sign with you. That agreement will be on behalf of the masjid and the community. So your money, inshallah, will be safe forever. Inshallah. You will loan that money interest-free to us for whatever period you can. Now, when you require that money back, you will give us a notice of whatever is in your agreement. 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months. You will tell us, sir, I need that money back by this date. It is down to us to make arrangements to pay you back. We will pay you that money back. In the case of, so our agreement is a properly drawn out agreement, whereby if something happens to you and you're not there, we will have on our record who to pay the money back to. The money will always, inshallah, go back to you. There won't be a profit on top of that, certainly not from us, but from, inshallah, from Allah subhanahu wa ta'ala, the profit is endless. That money is actually very, very useful for us. Because obviously people can donate, that is money that they have to part with. This money they don't, although they physically part with it, it is actually there in a safe place for you. Okay, it's gone towards the masjid and you can have it back whenever you like. And that loan can be anywhere from £1,000 to £500,000. It doesn't matter. Okay, the more the better for us. Mashallah. So that's it's a very simple system. You give it, the money's there. We are looking after it for you, basically. The masjid is looking after the money for you. Whenever you need it, we will give it back. Okay? So, बड़ा सही मैसेज है और ये मैसेज अगर आपको अंडरस्टैंड करा है या आपके साथ तक पहुंचे तो मेरे ख्याल से बहुत लोग इजीली दूसरा पैसे दे इंशाल्लाह। लेकिन मेन चीज ये है कि इस मैसेज की अंडरस्टैंड करना और मैसेज की पहुंचाना। जी हाँ। इतना सिंपल कर रहा है कि जो भी किसी वापस दे सो कि 2 हफ्ते में पैसे ले दूसरे पैसे सेव तो दूसरे पैसे क्रेडिट जाने और दूसरे हर तरह की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। उसमें बैंक रखे तो उससे ना भी था रखना ज्यादा बेहतर है। माशाल्लाह दूसरे बैंक में जमा कराना दिया लेकिन छड़ा है इतना माशाल्लाह माशाल्लाह ये स्टिल आदमी नाम देना वो भी आ रहे हैं
नाम ज़ाहिर है कि आज मस्जिद की खिदमत की है 5,000 पाउंड माशाल्लाह। कोई भाइयों ने पहले भी हमारी मस्जिद की मौज-आशी की खिदमत की है। अल्लाह ताला उनके जज्बे को सलामत रखे। और एक बच्चा इमरान कियानी साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं 100 पाउंड माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके जज्बे को सलामत रखे और इसी जज्बे के साथ चलते रहे तो माशाल्लाह ये काम को मुश्किल नहीं लगेगा। जो पहला नाम था ना वो अल्लाह नबी का नाम था। अच्छा, a brother come forward, he said, do not mention my name, and he said that I donate 5,000 pounds in the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Chesham Masjid donation zindabad. Now this brother, Allah bless him, his entire family, and this brother he given in the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do we think that Prophet will forget his name on the day of Qiyamah? Do we think that when the difficulty will come upon him, the Prophet will say, I don't recognize you? Can that happen? No. Now he is, that brother, he is in the sight of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's a message for you, brother. You can come forward, you can donate for your parents, and you can also donate for Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. मैं एक और बात थोड़ा पंजाबी च फिर वो एक कर्जे हंसना ने क्लियर करना चाहना कि कर्जे हंसना जड़ा है बड़ा एक सौखा जहा सिस्टम है। मस्जिद की पैसे चाहिए, अगर तुसा को घर पैसे स्पेयर पे होए, बैंक च पे होए, किराए पे जेड़े तुसा इस्तेमाल लो करने उसका बेहतरीन तरीका है तुसा मस्जिद की दियो। मस्जिद को तुसा को बड़ी हिफाजत नाल पैसे रह सन। जिस दिन तुसें पैसे चाहिए एक दो हफ्ते पहले साढ़े की नोटिस देसो, असा तुसा की वो पैसे इंशाल्लाह पूरे पूरे वापस कर सकता। अगर तुसा दा कोई काटीबादी हो जानी है तुसा साढ़े की लिखी के देसो कि मेरे तक अगर काटीबादी होगी तुसा मेरे पैसे जेड़े फलां बंदे की दे सकते। और इस पैसे भी खाली मस्जिद कमेटी ने दी सिक्योरिटी है, पूरी मस्जिद की सिक्योरिटी है और पूरा चशम तो सिक्योरिटी उस पैसे की जड़ा है वो पूरा चशम सिक्योरिटी दे लगा है। एक दो और इशू असा देखे ना कि कुछ लोग को कहने पैसे हैं मगर असा किसी बंदे दसना ना चाहने भी असा मस्जिद दे रहे हैं वो भी असा बिल्कुल टोटल तुसा सिक्योरिटी रखसा। अगर तुसा एक बंदा कैसो एक बंदे पता रखसी वो तुसा को एग्रीमेंट हो सी तुसा को कागज हो सन उस एग्रीमेंट ने तुसा अपने को रखसो। जिस दिन तुसे पैसे चाहिए हो जिस बंदे तुसा मस्जिद बंदे देसो उसना राब्ता करके अच्छा सो अगर उसने भी जिस तरह लोग पैसे देने पर नाम जाहिर नहीं तुसा वो भी नाम जाहिर नहीं करके दे सकते हो दियो असा उते तुसा ज्यादा रिकॉर्ड जो सी मगर वो रिकॉर्ड हर बंदा दे नहीं सकता। अगर तुसा न जाने के किसी पता लगा उस वे जी असा पूछा मगर प्लीज 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 घर रखने नालू बैंकां च रखने नालू साढ़े की सख्त जरूरत है, थोड़ी जी की सख्त जरूरत है क्योंकि असा 15 लाख पाउंड इकट्ठा करना है। और ठीक है चशम बहुत सारी मदद कर रहे बहुत हर बंदा साढ़े हिसाब नाल साड़ी सोच तो बहुत दूर तक मदद हो रही है मगर फिर भी साड़ा पैंडा बहुत सारा है। असा बाहर जाने ते तैयार हां जासा मगर फिर भी साड़ी पता है कि असा ओके कोशिश साड़ी है कि साड़ी चशम की मस्जिद है चशम में नाम देन देखो जिस तरह साड़ी था अपील होने लगी है इस तरह हजारा अपील होनी है मैं कितनी बार देखा और असा नहीं देनी है कोई कितना मस्जिद बननी है कोई पाकिस्तान बननी है कोई कितना बनी ये तुसानी अपनी मस्जिद है तुसानी अपनी मस्जिद है ये ही की मस्जिद है और जितना इतना दे सकनी हो वो साड़ी फायदा है तुसा भी फायदा है और तुसानी औलादा भी फायदा और अगू उन्ना भी औलादा भी फायदा होसी। इस वास्ते जितना करी सकनी हो भी पता मैं असा देख रहे हैं कि कितना ठीक मैं तसे दसिया ना कि भी साढ़े जेड़े इतना टीमां बैठी हुई हैं लिखने वालियां उन्नति वक्त क्या होया इधरों फोन आने नहीं उधरों आने नहीं इधर चिट पढ़नी है उधर चिट पढ़नी है मगर फिर भी इसी जारी रखो जितना दे सकते हो माशाल्लाह और आले तक नाम माशाल्लाह 10:30 होने पे आले तक नाम
माशाल्लाह ये 2 नाम हो रहे हैं, राजा नफीस एजाज हमारे कमेटी मेंबर है, एजाज साहब उनके बेटे हैं, 2000 माशाल्लाह नारे तकबीर नारे रिसाल चशम मस्के जिंदा मैं बच्चा गल्ला करियां आपने जेडे मैं साहब आए चिट दान होना पिया आजी कारब नीर साहब ने जी उन्होंने माशाल्लाह क्या बच्चों ने खिदमत की है, माशाल्लाह 1000 पाउंड एक और मस्जिद की खिदमत की है उनके ये डोनेशन रब की जात को कबूल मंजूर आमीन। फिर मैं दोबारा ये अर्ज कर अपने चेयरमैन इब्राहिम साहब और सारे अपने राजा जफर साहब चेयरमैन साहब और लाल पट्टी साहब और असली काफी टीम है, मगर रोज जिन्हें टेलीफोन नहीं घंटियां कम होने की ये अच्छी बात नहीं है। तुसा जागे पे इस वास्ते चप्पो डरो को ना बिल्कुल सके हो और जरा इब्राहिम साहब और सारे चेयरमैन जफर साहब फरमाने पे नाम जाहिर नहीं करना, ये बड़ी अच्छी बात है, नाम जाहिर नहीं करना चाहिए, मगर इस जरा ना सारे स्वाब जितने सब बढ़ चढ़ के ना दे सुनो वो फिर बंदा इतने होना खुश होना जोश आना कि मारो उसने दिता मेरे पास लिखा, इस वास्ते नाम भी लिखाना इसलिए भी कोई आज नहीं है, ये बड़ा स्वाब है। लिहाजा तुम 1 घंटा हो रहा है इंशाल्लाह इसलिए जो हुन जरा घंटियां जरा बजनियां शुरू कर दियो और जेडे आंडी गुआंढी है उन्हें इतला करो, जिन्हां कोल टेलीफोन है वो फटाफट टेलीफोन करो और आपने जेडे रेडियो के करीब हो अगर रामा साहब को फरमाए सन के इस दुनिया जा देसो अगर जन्नत तुसा की जन्नत विच बड़े बड़े महल बन सन, इस वास्ते आपने मरने तैयारियां वास्ते जितने भी पैसे बल्कि आंडियां गुआंढियां की इतला करो तो जरा इब्राहिम साहब को फरमाने पे कि घर जना रखो बैंक की रख सो उसने जो कुछ परसेंट मुनाफा दी सी, मगर ये अल्लाह ने घर देसो तो 10 दुनिया तो 70 आकर 10% तुसा हुन मिलना है दुनिया के 70% आकर 70 भी नहीं बल्कि 700 जरा ना परसेंट तक ऊपर जितना अल्लाह ताला ने बारगाह एक पिछा जी की कमी जी ना हजारा साहब तुसा पिछा जरा तो मुनाफा और जरा तुसने पैसे पे ये बिल्कुल सके हो बिल्कुल महफूज है जरा भी नहीं ना दसना चला 5 लाख 10 लाख 20 लाख जरा देना चला वो ना दसा मगर वो भी तुसा की जरा ना इसे पार्टिसिपेट करो तो अलामा साहब अपना कुछ मैसेज तुसा की कन्वे कर रहे हैं बड़ी मेहरबानी। Another sister, she messaged, she said, I donate £50 for Prophet sallallahu alaihi wasallam and for the entire ummah. So may Allah reward inshallah. We have a late student of this masjid, Muhammad Yusuf. MashaAllah, he's 10 and he said, I've got £10 saving. I want to give subhanahu wa ta'ala's house. So alhamdulillah. Alhamdulillah. And this is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. In regards to going back to Qard al-Hasana, you see, the Arabic word in the Quran al-Kareem that has been used, وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. Is there anyone who give Allah subhanahu wa ta'ala qard of hasana? This is the word that has been used. Now, what is qard hasana? Qard hasana is that loan that you give for Allah subhanahu wa ta'ala. Now, if you give that qard hasana lillah as a sadaqah al-jariyah, then it becomes sadaqah al-jariyah. Like you don't ask anything back. You say, I give 50,000 in the way of Allah. It's still qard hasana because the Quran says qard hasana. That you are giving that qard and that is a good qard. Like you're giving in the way of Allah, that you're spending in the way of Allah, and that is the best form of qard. Why is it qard? Because Allah will return it back to you. Allah, if you give that sadaqah jariyah in the masjid, that 50,000 brother gave, the 10,000 brother gave, if you give that, Allah will multiply with 700 and more. This is why it is qardan hasana. It is that you given to Allah subhanahu wa ta'ala. And then you have the second type. The second type, it is again a qard that you given to Allah, but you want it back. You need it back for your need. And that is allowed in Islam. And at the same time, if you have a niyat that I have money saved in bank, I'll take, as Ibrahim said, I'll take my money out and I'll give for Allah's house. And I'll take back when I need. I'll say to them, as I mentioned, 2 weeks, 3 weeks time, you give notice and then
you still get reward from Allah subhanahu wa ta'ala because you are investing. You know, as an investor, if you're an investor, if you buy a land and you ask someone, what should I do? Should I make flats here? How much will I earn a month, weekly and monthly and yearly, right? The traders, right? If I buy 5 cars, how much would I earn? The investors, right? This land is for masjid. This land is part of the masjid. And imagine if, inshallah, when the time comes, we open and we have classes there, every single child who would recite every single letter of Al-Quran Kareem, then the reward is multiplied by 700 and written in your account, in your parents' account, and in your grandparents' account. By Allah subhanahu wa ta'ala. جی السلام علیکم کرتا ہوں. میرا بہت قریبی دوست ہے, اس نے ابھی مجھے فون کیا ہے, نام ظاہر نہیں کرنا, اس کے بھائی کی طرف سے آئی. وہ مسجد کمیٹی کو قرض حسنہ دینا چاہتی ہیں 20,000 پاؤنڈ. اللہ تعالیٰ ان کی جو مرادیں ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کرے, ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, ان کے بچوں کو, ان کے والدین کو, ان کے سب کے ذریعے صحت عطا فرمائے, ان کی جو منشا ہے دل کے اندر, اے اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کر. یا ان کے سارے جتنے بھی ان کے مطلب ہے کہ ان کی مرادیں ہیں, جتنے ان کے دل میں چیزیں ہیں سب پوری کر میرے. یہ مسجد کو دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلائے گا نہیں جائے گی. Brother just got in touch. Sorry to interrupt. Brother just got in touch with me. Basically gave £5,000 Qarza Hasna earlier on in the evening. He too, mashallah, has changed his mind. Mashallah, he has changed his mind. He said, let the money stay with Allah's house. He said, because please pray for all of them down, especially my grandfather who's passed away. Allah give him a true investment for the future, like Imam said, is for the hereafter. Alhamdulillah, may Allah make things easy for him. شیخ راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے پہلے بھائی نے 50,000 روپیہ پاؤنڈ قرض حسنہ دیا تھا, تو اس نے بولا کہ میری طرف سے یہ ڈونیشن کر دیں. اور ابھی نصیر علی راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بھائی نے 5,000 روپے پاؤنڈ وہ قرض حسنہ دیا تھا, وہ بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جیسے کہ ہمارے ابراہیم صاحب آج سے 2-3 دن پہلے کچھ چھوڑنے سے حل جڑ رہے تھے کہ قرض حسنہ کم آ رہا ہے. دیکھو ابھی قرض حسنہ پر قرض حسنہ آ رہا ہے, ابھی 5,000 50,000 ابھی ہمارے عزیز صاحب بھائی صاحب نے 20,000 پاؤنڈ کا اعلان کیا. ماشاء دیکھو ابھی جو ہے قرض حسنہ پر بات ہو رہی ہے, اور قرض حسنہ دیکھو کیسے دار بندے لگے اور رہ لگے ہوئی انشاءاللہ. جب قرض حسنہ کی ڈسپی جو ہے نا یہ مکمل کرو, جب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہنا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. ابھی پروگرام جاری ہے, ہمارے رائے صاحب جاوید اختر صاحب تشریف لائے, ہم کو خوش آمدید کرتے ہیں مسجد کمیٹی کی طرف سے, اور ان کو ہزار خان کے لیے 2 مہینے ہم نے کمانڈ ورڈز. عزیز صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب میں نے فون کیا کہ ایسے یہ کیا خیال ہے آپ کا, تو جو خوشی انہوں نے سب کو یہ ٹیلیفون, ہاں میں بہت بول رہا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں. یہ بھی ہمارے پرانے دوست میں سے ہیں اور ہمیشہ یہ مسجد کے ساتھ ان کی بڑی محبت اور بڑا محبت کا اظہار کرتے ہیں. پورے فیملی جو ہے مسجد کے ساتھ ان کا کافی تعاون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں برکت عطا سارے حضرت مجلس سامعین سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا, ابراہیم صاحب نے فون کیا تھا لیکن کیونکہ میں کام پر اس لیے میں آ نہیں سکتا اور میں لیٹ آیا ہوں. لیکن مجھے جیسے کہ کہہ چکے ہیں بہت خوشی ہے اس چیز کی, بہت ہی خوشی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور یہ جگہ جو یہاں سے تھوڑی ڈسٹینس پہ وہ خریدنا چاہ رہے تھے. اس وقت آپ کو پتا میں نے آپ کی کہ جب یہ نزدیک یہ والی یا پیچھے والی جگہ, تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے آپ سب نے بڑی ہمت کی ہے.
کہ آپ نے یہ لے لیا، ورنہ اگر مارکیٹ میں آ جاتی تو پھر کوئی چانس نہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، کلیکشن کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کی ہمت ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ حاجی صاحب کو پتا ہے جب یہ جگہ خریدی گئی تھی اس وقت میں بھی کمیٹی میں تھا، اور جب ہم یہ جگہ دیکھنے آئے تو اس کی قیمت 3 لاکھ سے زیادہ تھی اور ہمارے پاس صرف 18,000 پاؤنڈ تھا۔ سب سوچ رہے تھے کہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ نے مدد کی۔ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ چشم میں 1960 سے لے کر جو بھی کمیٹی کے ممبر آئے نا وہ ماشاءاللہ سب ایماندار تھے اور کہیں بھی کوئی کسی پہ شک نہیں کیا گیا، اور یہ مین وجہ یہ ہے کہ لوگ کھل کے پیسہ دیتے ہیں اور آپ کی کمیٹی ہے انشاءاللہ ایماندار ہے۔ اور میں اپنی فیملی کے علاوہ سب بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیں، کوپریٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک آدمی نے 50,000 دے دیا تو دوسرا یہ 5,000 میرے تھوڑے لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جتنی توفیق ہے اس کے مطابق آپ دیں، آپ کی نیت کا داروں گا، اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو ویسے ہم تو ڈونیٹ کر چکے جو کرنا تھا، لیکن میں وہ کہتے ہیں ہم اس کا مطلب نہیں ہے کہ قرضہ دے سکیں، کہ وہی دینے والا ہے۔ تو 5,000 میں بھی کر دے سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاوید اختر صاحب کی طرف سے 5,000 پاؤنڈ یہ قرض حسنہ ہے۔ تو جیسے پہلے بھی ہمارے بھائیوں نے بولا ہے اور میں بھی آج کہہ رہا ہوں کہ ساری جڑی نظر ہے نا کہ دوسرا ٹولہ پر کوڈ ہے، یہ مطلب دوسرا میں وہاں کے اگر آپ ساتھ دوڑنے پیسے نہیں ہوں ساری 150% جو نظر ہے چشمہ پر ہے۔ انشاءاللہ جس سے رفتار پر چشمہ لگے ہوئے انشاءاللہ 3 مہینے بہت زیادہ ہے، کسن انشاءاللہ 5-6 ویک کی انشاءاللہ نکل جا سو۔ بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے آدمی انشاءاللہ تو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لو۔ اور وہ جڑا نا کالا تھوڑی ٹھڑیاں ہوئی آنے بہت ٹائم آج گھنٹہ ڈیڑھ لینا انشاءاللہ جلدی بھی جلدی جڑا نا تو اپنی ڈونیشن اور قرضے ہسنا ابراہیم صاحب نے خوش ہوئی کہ کیوں قرضے ہسنا یا دینا لگی تو ہماری اپیل اپنی کو بیک کرو کہ اپنا جڑا ڈونیشن لگاؤ، بڑی بات جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکنا اس میں پارٹیسپیٹ کرو کہ سارا ایسا رل مل کے رلی ملی سے کم کرنا جس طرح کیا تھا 1.5 تھا ایک فکر وہی ہے ماشاءاللہ۔ 20 سال پہلے سے ایک ساتھ ہون جڑا نے انشاءاللہ پڑھیاں جڑیاں وہ امیداں انشاءاللہ چشم پر رہن اور انشاءاللہ تعالیٰ اساں جڑا قرضے اسنا اور ڈونیشن جی انشاءاللہ اساں یہ اچیو کری اساں میرے مولا نے چاہ بڑی نوازش کرنا پڑا کہ میں دوبارہ پھر اپیل کرساں کہ اس نے جلدی بھی جلدی جڑا اپنا نام لکھاؤ ڈونیشن بھی اور قرضے اسنا نیکیاں لکھانے جڑا نہ لکھنے چ اور نیکی نے کم وچ دیر نہیں کرنی، بالکل دیر نہیں کرنی، جتنا جلدی ہو سکو پیسلز پارٹی اپنی سپیٹ کرو۔ تو میں قاضی حسین صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو اطلاع کریں اور یہ سب مدد کریں۔ Beautifully said, mashallah. For the masjid, see, this is again encouragement for our youngsters in Chesham, our brothers in Chesham, inshallah. Nakeeb Tahir, Raja Tahir Saab's son, he said that I'm doing a charity car wash. Charity car wash for the masjid to raise funds for the masjid. This is the way. Exactly. We, mashallah, donated over £540 to Yemen. Alhamdulillah, mashallah. So, alhamdulillah, that's again encouragement for the youngsters, inshallah. If you're sitting and you think, you know, I want to give something, but I haven't got anything to give. But this is the encouragement for you, right? You can help Nakeeb Tahir, or you can do another fundraising, or you can speak to the management here, inshallah. Next Sunday, the charity car wash is, inshallah, you can get in touch with Nakeeb Tahir to get updated, inshallah. ماشاءاللہ یہ ابھی اور بھی نام ابھی آ رہے ہیں، جیسے قرضے اسماعیل لوگوں نے دیا 2-3 آدمی نے تو انہوں نے دوبارہ فون کر کے کہا ہے کہ یار ہم 50,000 اور 5,000 ہم اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں تو ہم واپس نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم وہ اللہ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی ایک اور نام بھی مجھے فون ہے، انہوں نے بھی ایسے کہا کہ ہم نے 10,000 قرض اسلام کھویا تھا، حاجی عبدالرشید صاحب نے کہا ہے کہ وہ قرض اسلام اللہ کو دیا تھا ہم واپس نہیں لینا چاہتے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چشم مسجد ڈونیشن۔
हाजी साहब की सेहत के लिए दुआ करना ताला सेहत फरमाए, खानदान के मुरीद के लिए अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हाजी साहब के जज्बे को, इन बच्चों के जान वाली का बुरूज तरक्की अता फरमाए और बारिश बरकत अता फरमाए। और इसी तरह जज्बा मांगना तो मैं ये ऐसी कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी जो हमें इस टर्न करना हो सके इंशाअल्लाह। और कोई ऐलान है, एक और ऐलान है मेरे पास, सुलेमान गनी साहब हैं, उन्होंने मस्जिद को कर्ज़े हसना की सूरत में 4000 पाउंड दिया है। बच्चों की खैर बरकत और हाजी अब्दुल गनी मरहूम मकबूल को इस साल सवाब देते हैं, उनकी दुआ करना अल्लाह को जन्नत नसीब करे। ते हमारे और हाजी साहब हाजी जावेद अख्तर साहब, इन्होंने भी कर्ज़े हसना की सूरत में 5000 पाउंड मस्जिद को दिए हैं। अल्लाह ताला इनके अतिया को कबूल फरमाए और उनकी जान माल की तरक्की तो फरमाए। इनके वालिद साहब को और जन्नत नसीब फरमाए, अच्छे आदमी थे माशाल्लाह। मस्जिद की और बहुत ज्यादा थी। आई साहब अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे। और उस्मान आजम साहब, इन्होंने 5000 पहले डोनेशन किया था, आज भी माशाल्लाह दे चुके हैं। और अभी इनका फोन आया कि 5000 कर्ज़े हसना मस्जिद दे रहे हैं। ताकि अल्लाह ताला जज्बे को सलामत रखे और उनके जान माल की ज़रूरत करके फरमाए। साकल्लाह जी साकल्लाह MashaAllah, we'll go our sister Neelam Raja Assasam's daughter, and we had call from their family last week as well. And Alhamdulillah, the entire family is coming forward, and all this is sadaqah jariyah for the entire family, the ones that are living and the ones that passed away, especially for Zafar Ali Raja Sahab. Sister Neelam Raja said that I want to donate £1,500 for the masjid. Takbir for her, Nare Takbir, Nare Risalat, Chesham Mosque donation, and Ali Chesham Zindabad. Marhumi, inshallah, the ones that given from £1, right, to 50,000, 100,000, whatever they're given, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accept their donation. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah reward them in this world and the hereafter. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah make sadaqah jariyah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah protect their mal, awlad, their izzat, their honor, and may Allah subhanahu wa ta'ala make the children the coolest of their parents. हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह के उनके कारोबार में माल रोजगार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह के उनके जो बच्चे हैं उन्हें सिरात मुस्तकीम पर रखे और अल्लाह के उनके तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। Brothers, we are sitting here waiting for your call. Sisters, we are sitting here waiting for your call. Our honorable elders and brothers, you listening us to the radio, live, Facebook, YouTube. We're waiting for you here for your Jannah. We're waiting here for you to call. Our beloved Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said that the Ibn Adam, the children of Adam, they say Mali, Mali, Mali. They say my Mali, my daulat, my wealth, my saving, my bank balance, my account. Ibn Adam, they say this. But in reality, what is their Mal? Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, their Mal is the one that they used for themselves. Their mal is the one that they spent on their family. Their mal is the one that they given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The ones that they left is not their mal. The ones, so I approach you, I call you, my brother and sister, I call you and I say to you that you got money in your bank, and if tomorrow you want to die, all that mal, you won't have any reward. You won't have any reward. This is a hadith of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Come forward, inshallah. Give us sadaqah jariyah. Allah is looking. Give us sadaqah jariyah for your akhirah, for your parents' akhirah, for your children's akhirah. If you can't give sadaqah jariyah, then come forward and give qadr hasana. If you think you can't give qadr hasana, you have the last option. Come and give it as a saving. By saving to the masjid, by the masjid bank today, come. And even by giving and keeping the money safe in the masjid, you still have reward from Allah subhanahu wa ta'ala. We have £100 from Sahel Dinta, mashallah, dua for the mom.
Chaudhry Allah Sahab Sahil Dita, dua for Chaudhry Allah Sahab and the wife, Allah give them long health, life, strong iman. Chaudhry Allah Sahab's family, mashallah, they donated last time and now still coming, mashallah. We had Chaudhry Sahab, Toki Sahab donating earlier, and other families coming, mashallah. We have other families, inshallah. Whoever donated, we've announced last week, we're still announcing Haji Abdul Sahab family, Haji Abdul Bahar family, Haji Adam Sahab family, Haji Ghulam Sahab family, everyone living in Chesham family, Tahir Raja Sahab family, Haji Abdul Ghani Sahab family, everyone, whoever coming forward and giving your donation, your wealth, your mal. This mal is given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is between you and Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will multiply. We mentioned the verse of the Quran. Do not take the verse of the Quran lightly. Allah said Allah will multiply. It doesn't mean He will multiply once you close your eyes, once you've gone into the grave. No, Allah will multiply whilst you are alive and you living. One of our teacher, rahimahullah, he told us the story. He said that there used to be a pious person, and he had a new jubba, like the new kurta, and he paid for that kurta, and he was about to wear the kurta, and a beggar came, and a beggar looked through the door. He said, I haven't got anything to wear. Give me something I'm cold. And the Shaykh, the Sufi, he had the new jubba, he paid for the new jubba, and he said, okay, he took that off and he gave to the beggar. He gave to the beggar for Allah subhanahu wa ta'ala. Few days after, he had a delivery. A box came, and in that box there were 10 new jubbas. In that box there were 10 new jubbas. And the Sufi went to pray the mosque, and he came back and he's counting jubbas. He's counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And he said to his son, one jubba is missing. One jubba is missing. And his son said, Father, how do you know the box was packed? You didn't even look at the box, you didn't even count the box, you went to play the mosque, and are you coming back and saying 10 jubbas? Yes, I did take one away. But how did you find out? How did you find out there were 10 jubbas? He said that you give to Allah subhanahu wa ta'ala, then He multiplies by 10. Right? So we're sitting here, and that was his yaqeen. But what does Allah say in the Quran? I'll give you 700 times. Right? I'll give you 700 times and more. You can come forward, inshallah. And we're saying if you spend £1, you get one house in Jannah. And imagine if you spend 50,000. How many palaces? How many palaces you have in Jannah? Come forward, inshallah, and take your palace from Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah ji, mashallah, एक और ऐलान है, नाम ज़ाहिर नहीं है, एक मस्जिद को कर्ज़ असना दे रहे हैं 20,000 पाउंड, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। और हाजी जावेद अख्तर साहब की बेटी की तरफ से कर्ज़ असना की सूरत में माशाल्लाह 5,000 पाउंड जी। हाजी जावेद अख्तर साहब ने अपना पहले 5,000 पाउंड कर्ज़ असना दिया, और उनकी बेटी की तरफ से माशाल्लाह कर्ज़ असना 5,000 पाउंड जी, माशाल्लाह, जाज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह जी, मुनीब अली राजा और ऑलरेडी डोनेट और पहले कर चुके हैं, और उन्होंने ट्रांसफर बैंक में कर दिए हमारे, और असद अली राजा साहब के बेटे 500 पाउंड और डोनेट किया। अल्लाह ताला इस बेटे के जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह ताला के जान माल और तरक्की अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह जी, MashaAllah, the youngsters are coming forward, alhamdulillah. Now that they started. Now that they started coming forward. Yeah. And if they're willing to come forward, we're willing to sit. See, I was going to say, we're not in rush, but look at the time, and I'm just thinking about you, my brothers and my sisters. I'm just thinking about you, that the reward that Allah has written for you, why you delaying it? The reward that Allah has given tonight, that I'm going to give Haji Shokat Al-Asab a house in Jannah. Allah has written that I'm going to give Haji Al-Rashid Sahab a palace in Jannah. Allah has written that Zafar Raja Sahab, now he's living a house in Jannah. And the children have donated the house and said, Baba, you've gone from us, but don't worry, we've given you a house in Jannah today. Right? Now they're all living in Jannah, they all got a house in Jannah.
And you have a part in Jannah. You have a hissa in Jannah. You have a house in Jannah. Right? You can own a house in Jannah. You can buy a house in Jannah by coming forward, by calling one of our brothers, by using GoFundMe, Chesham Mosque donation, by using the Masjid account. There used to be a time, others can confirm, there used to be a time that people had money, but they couldn't find anyone to give charity. Is that true? That the people had money, but they couldn't find anyone to give charity to. There used to be a time, now you've got so many means, so many ways to give charity. GoFundMe, Chesham Mosque donation. You've got Chesham Mosque Facebook. You've got Chesham Mosque app. You've got Chesham Mosque account. You've got numbers. You've got mobile numbers. You've got message. You can text us, message the committee, the management. You can come forward, and what you need to do, just say that, look, I want to give this lillah, fillah, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and leave me with the hadith of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Before you go to sleep, before you go to your bed, and before you wake up for Fajr, Allah will write down a house for you in Jannatul Firdaus. अच्छा अभी मुझे टेक्स्ट आया है मलक हाजी अलियास साहब वो 2000 पाउंड मस्जिद को डोनेट कर रहे हैं माशाल्लाह। और दूसरे एक्स प्रीजा वालों की तरफ से हमें फूड भेजा गया है मस्जिद में, आप देखिए अल्लाह ताला उनको भी कारोबार में बरकत अता फरमाए। और हमारे मस्जिद जो बैठे हुए उनके लिए सब भेजा है फूड, अल्लाह ताला उनको ये जाए खैर अता फरमाए। आमीन। और देख लो जी कि डोनेशन भी आनी चाहिए। इब्राहिम साहब ने बात सच्ची होनी शुरू हो गई कि हुण हर आदमी जो 5000 10,000 20,000 देना वो कर्जे हसना बुला गया। और नाल डोनेशन भी जारी है। अपने तनवीर मनाज साहब वो भी जरा अपने ऐलान करने पे अंग्रेजी च अपने हुसैन साहब अलामा काजी हुसैन साहब को भी जरा ऐलान करने पर, तो मैं भी तुसानी वास्ते हाजिर हाँ, हाजिर खिदमत हाँ। अपने ग्रां पिंडां दी बोली बोलना पिया ताकि सारे बड़े आदमी जितने भी सारी पाड़ियां भैणां धीआं आ वो भी समझ सकन। और अपने बैंकां नाल सवेरा कंटैक्ट करो और पैसे ज्यादा से ज्यादा जरा ना कढ़ी जाए, और अपने डोनेशन भी करो और कर्जे हसना भी दो। अपने हाजी जावेद साहब ने पहले 5000 पाउंड और जरा कर्जे हसना दिता 5000 नाल दोबारा जरा ना होना जरा जिन्होंने तशखंद किया 5000 होर हो। इस वास्ते अपने अपने जरा इब्राहिम साहब आने काजी हुसैन साहब फरमाने पे अपने जरा बैंकों नाल सवेरा कंटैक्ट करो, उन्हें अपनी जो बुक लै जाओ तो ज्यादा से ज्यादा पैसे जरा डोनेट करो मस्जिद च, ताकि असां एक जरा लिमिट थी इब्राहिम साहब 3 महीने, तो 3 महीने लिमिट थोड़ी ज्यादा गया तो थोड़ी भी है, तो लिहाजा जिस जज्बे नाल लगे हुए हैं इंशाअल्लाह जल्द तो जल्द असां इस जरा 1.5 और समथिंग है इसकी इंशाअल्लाह अचीव करेंगे सब। और तुसा भैणा भरा की मदद ना अल्लाह ने करम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे करम ना और भैणा भरा और जो सारे चशम ने आदमी हैं इन्हां तावन नाल असां उम्मीद है कि जल्द तो जल्द असां जरा ये जी रकम है असां अचीव करेंगे सब। और ये जड़ियां जो पिछले ऐलान हुए जनतन कि 100 साल वास्ते है, 200 साल वास्ते नहीं है, ये सदियां वास्ते है, ये सदियां तो सदियां कई 100 साल इंशाअल्लाह ये मोर दे इनफ बहुत इंशाअल्लाह जगह जड़ी वसी है। और ये इब्राहिम साहब और सारे चेयरमैन जफर साहब ने फरमाया सा 100 साल वास्ते 100 साल नहीं है कि 100 साल एक ये नहीं 100 साल ही है, वो एक एक जरा बयान होना कि 100 साल मतलब है कई 100 साल तक कई सदियों तक जरा ना इंशाअल्लाह सन जगह जड़ी तो बहुत ज्यादा जगह है। और इंशाअल्लाह आने वाली सदियां जड़ियां ना या सारी नस्लां असां की सारे बुजुर्गों की दोस्तों की जरा तो याद कर सन। और ये यंग सारे कोलीग बैठे हैं इन्होंने कैमरे बड़े सोने सेट किए और बड़े बड़े लफ्ज़ों जिन्ना अपने पोस्ट कोड भी लिखे थे, रिसोर्ट कोड भी, अकाउंट नंबर भी। और जो इब्राहिम साहब समझाने से मैं इन्हें करना जितना ना समझना बरीकी ये भेज रहे हैं कि तुसा चशम मस्जिद डॉट कम कर सो तो सारी डिटेल तो सब आ जासी। तो तुसा जो डायरेक्ट डेबिट दे सकते हो
وہ ڈائریکٹ جڑے مسجد جو پیسے پہنچ جاسن اور میرا خیال ہزاران صاحب آلریڈی پہنچ گئے اسپین تک پیرس تک اور سعودیہ تک جڑا اعلان پہنچ گیا جلدی سے جلدی جڑا نا جڑا نواں جڑا نا کہنا واٹس ایپ پہ کیا کھولیا پوچھنا بھی تو سارا اپنے موبائل کرو چیک کرو جیسے طرح مسجد چشم ڈاٹ کر سو پوری ڈیٹیل آ جاسی اور جڑا تو اسٹیٹ میں بھی بھیجی سکنے ہو اور جڑا نا سارے ابراہیم صاحب کی نا کام بہت ایکسپرٹ ہیں بلکہ پوری ٹیم بھی بہت ایکسپرٹ ہے مہاراج اللہ اپنے چودھری حاجی عبد الباری صاحب اور وسیم علی راجہ صاحب اور جتنے یونیورسٹی قاضی حسین صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں انہاں کاماں نے جمع تفریق کرنے نے لکھنے پڑھنے نے میں تو صرف اپیل کر سکتا ہوں اور میری امید ہے کہ ہماری جڑی اپیل ہے اس نے پر جس طرح کیا گیا سا ہم رونی ہو سی پچھلے بدھانے وہ بغیر اعلان تو کیتا سا ساڑھے 3 لاکھ جی کڑے ساڑھے 3 لاکھ پچھلے ہفتے سا کوئی اعلان نہیں کیتا سارے تنویر منا صاحب نے چٹی جی بک جی کٹی پینسل رکنی سی چلنی سی اس نے 3 لاکھ 45,000 پاؤنڈ بریک ماری تو پھر بھی بڑے ٹیلیفون سے کرا تھا پھر بندیاں لگائے تو ہوں بھی جڑی گھنٹیاں جڑیاں ملنیاں بھی ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کرو تو اج جڑا نا 3 دن تو اعلان ہونے پر بازار جمعرات جمعہ افطار 4 دن کی ماشاءاللہ تو اس نے تھوڑا پیسے بہت آئے مگر تب کو تو کوئی 50% کٹ آئے تو ہوں اس واسطے پورا کور کرو جڑا قاضی حسین صاحب فرمانے کہ 5-10 جڑے نے ینگسٹر جڑے چنگے جان رسے والے وہ اپنا رسپانس کرو تاکہ جڑا جڑا ٹارگٹ ہے اس کی اچیو کرو 7 لاکھ نہیں پہاڑی نظر جڑی 10 لاکھ اوپر انشاءاللہ اساں جڑا 70 جڑا پہنچے ہیں تے اس واسطے پھر اساں دوبارہ بھی جڑا تسی نال کانٹیکٹ کرساں تے انشاءاللہ میں ابراہیم صاحب کی چیئرمین صاحب اور اس میٹنگ کی ریکویسٹ کرساں کہ ہفتے وچ ایک دن جڑا دوبارہ پھر تساں جڑا نا پروگرام لائیو کرو تاکہ جڑے بندے رہنے وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرن اور انشاءاللہ سب گھراں دا بھی جڑا نا رابطہ کرساں کوئی آدمی جڑے نہیں آنا چاہنے اساں کوئی کار کوئی گلی کوئی محلہ کوئی ایسا گلی گلی انشاءاللہ پورے پیسے ہو جاسن اور کیونکہ امید ہے کہ سب کی اتنا نہیں پھرنا پہنا 12 ٹورنمنٹ بھی انشاءاللہ 12 ٹورنمنٹ بھی کافی جڑیا اساں کی سپورٹ ہوئی ایز منی تو آئی ویلکم تو لوٹن تو اللہ تعالیٰ جنہ اس پارٹ کو جڑا کارے گھر سارے نے اللہ تعالیٰ ان کی مزید اس ترقیوں اور خوشحالیاں دیں اور میں آج کرساں قاضی حسین صاحب نے کہ وہ اپنے انگلش اور اپنے حدیث کوئی مبارک جڑا سنان تاکہ بندیاں کی زیادہ سے زیادہ اس شمولیت موقع ملے بڑی مہربانی. Can I just quickly again go to the GoFundMe page? If people that want to donate on our GoFundMe page, they need to go to Chesham Masjid Donate. Donate is a donation. 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 So Chesham Masjid Donation, that will take you to our GoFundMe page, and you can donate whatever you like on there. So that's for brothers and sisters further afield from Chesham. Anybody that would like to donate anything through our GoFundMe page, please go to Chesham Masjid Donation and donate whatever you can. Other ways of donations is direct to our bank account, and our account number is 10118311. That's 10118311. Sort code 200206. That's 200206. You can phone directly to us. We've got brothers sat here waiting for your calls on 01494 772065. That's 772065. Or there are some mobile numbers you can WhatsApp your donation to. So if you can put your name and whatever your donation is through there,
WhatsApp it or send a message or call. So the first number is 07855 327 555. 07855 327 555. There's another number here for you. 077 3333 0253. That's quite an easy number to remember actually. So it's 077 33 33 0253. माशाल्लाह जी अभी ऐलान हो गया और है हमारे कदीर राजा साहब और हमाद राजा साहब इन दोनों नौजवानों ने मिलकर 5000 मस्जिद की खिदमत की है और अल्लाह ताला की ये सदका जारिया कबूल फरमाए और हाजी हसन अख्तर के साथ सेहत के लिए दुआ और जफर अली राजा साहब के इस साल सवाब के लिए वो ये हदिया कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमाए। और एक शहजाद जानी साहब अपने वालिद इकबाल जानी साहब के साथ सवाब के लिए 500 पौंड अल्लाह ताला जानी साहब को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मोहम्मद रहीम वही साहब 500 पौंड माशाल्लाह इन्होंने और खिदमत मसीह की है, पहले भी कर चुके हैं और ये 500 पौंड और मसीह कुल मिला के तकरीबन 5500 माशाल्लाह ये कर चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मानसाब थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा जो ऐप भी बना है उसमें भी बहुत आपने मेहनत की है, काम किया है, उसके लिए भी आपको अल्लाह ताला जो है वो जज़ा दे। और आज फिर जो है वो आप आज भी सारी रात हो गई है आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह ये वेबसाइट का वगैरह करा। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ चेशम officially for the website, for this donation and for all this work being done. And then we've got another brother sat next to you. Ashad Bhai, who, mashallah, he keeps flashing this GoFundMe page. I mean, so I'll be that against him. I'm doing all the camera work and what have you. May Allah give you All this, the entire team, the brothers are listening, the calls, messages, writing, all this sadaqah jariyah. And if you are a brother or sister who haven't got anything, don't worry. Allah will give you inshallah. Allah will give you, but what you can do, you can pass the message on. Right? Message, make dua, and then message your family. Message your family in Chesham, say to them that they are raising funds for the Masjid House of Allah, and believe you me, if they give any money for Allah's house, then you have reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So you can do that. Absolutely. Somebody got touched earlier and they said, currently my circumstances don't allow. Inshallah in the future I will. What can I do for you currently? And I said the biggest tool you have in your possession, I suppose, I said, your dua. Yeah, your duas. We need your duas. That's the most powerful tool we have as Muslims. And mashallah, they said we will help in the future. But inshallah, and like my Ibrahim said earlier, the donations are still coming in. And looking at the clock, what time is Fajr is 6:30. So we're still here. If need be, if these are the night owls. We'll get a brother, inshallah. They're waiting. I think they're just saying that let them come to the dua, and then we'll just come and announce and say 50,000, 100,000. I think they're waiting. They're waiting. But don't wait, just come inshallah. We'll make dua now. Come forward inshallah, and take your part. Jannah. Going back to the sister or brother who said, in Islam, jealousy is not allowed. No. In Islam, morally, it's not allowed. As a human being, you're not allowed to be jealous of someone. But let me tell you something. In a numerous hadith, it is mentioned that you are allowed to be jealous of someone who has money, right? But they give in the way of Allah. And you haven't got any money,
And you look at them, that they are announcing 5,000 and 10,000 and 50,000 and 100,000, and you haven't got anything on you. So what you can do, you can make dua to Allah. Ya Allah, give me, Ya Allah, give me mal, give me knowledge, give me 50,000 so I can donate to Chesham Mosque. This is allowed. And someone who has knowledge, and you look at the knowledge and you say, what I'm reading so much Quran and Hadith and so much knowledge of tafsir and of Islam. Ya Allah, give me the knowledge and I will teach others. This is allowed in Islam. So if you are a brother or sister who have no money, make dua to Allah. Allah give you inshallah, and then you can donate towards Allah's cause. Absolutely. I think the other important thing to mention is what brothers and sisters are doing, are setting up monthly or weekly direct debits, which will become, to pay the Qarzai off in the long run, that's what will come to our aid, is the direct debits. When you start adding more than £10, £20, they amount to a lot. And inshallah already, we've got a significant amount. So inshallah, continue giving, and also whatever you wish to do for the long run, even if it's £5, £2, please participate. You know, we ask you to participate. For us, on behalf of us, it's like we've got a duty to offer you the opportunity to participate, inshallah. And alhamdulillah, Chesham has risen to the challenge. Alhamdulillah, I think we will give a challenge. Absolutely. Yeah. I did mention last week that I was sitting with my father, and people from different towns came, and they said, I did mention last time that they've come to the masjid and they've said to the chairman, the rank is different town, and they said that we've come here for collection and we want to raise some funds for our masjid. And the chairman said, no, you can't raise any funds here for the masjid. No, you can't. Not for your masjid, right? Because we need funds for our masjid, right? I did mention last week. And then I was sitting with my dad, and then my dad had a call from the chairman. He said, "Lama साहब, मैंने उसको बता दिया उस बंदे को कि भाई इस मस्जिद में कलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुद पैसे चाहिए." And when my dad mentioned this to me, I said to my dad, I said, forget these people, let's go to Chesham. Let me speak to our chairman, let me speak to our management, our people, and inshallah, even if they have their own work, even if they need money, they will still give them some money for their masjid. And I think it has happened. Several Raja Sahab, they've mentioned that in their time, during their time, or after the time, that people came from outside, but they needed money for their masjid, for Chesham Masjid. But they said, you come for Allah's house, you come and collect money. Can I just go back to the point where Sinu earlier said that somebody said, I can't afford anything, right, to give you. We did put this appeal out the other day, and we're going to put it out again today. That if there's anybody out there that can help us in any other way, advice, time, whatever, we are fully open to all suggestions. Please come forward, help us. Come on board. Absolutely. And you know, there may be many other ways that everybody can Forward help. our leaflet online. If you can do nothing else, forward our leaflet online. Leaflets, that's right. Forward messages, Forward messages, whatever you can. Make dua. Yeah, basically do whatever you can. Yeah, I agree. Paithamri Saab's got an announcement, but I don't think it's quite the night's not quite over. No. So let's see where we're at roughly. माशाल्लाह जी, आज जो डोनेशन है ना, माशाल्लाह चशम के मुसलमानों को जज्बे को सलाम करते हैं, 1,40,000 और कर्ज हसना की सूरत में जो चशम के मुसलमानों ने और बाहर से आदमी जो कर्ज हसना सूरत में मस्जिद को खिदमत किया वो 1,70,000 अल्लाह के जज्बे को सलामत रखे। टोटल जो है 3,10,000 माशाल्लाह सो खान बना इकट्ठा हो चुका है। इसका मतलब है कि भई ऐसा उसने रहे कितने सुनो 345 we're going to make that inshallah. कम से कम 3.5 तक जाना चाहिए। साढ़े तकरीबन आधा
राती ला रखे हैं। जेड़ा तकरीबन 50 और होना चाहिए इंशाल्लाह साढ़े 3,000 को टोना चाहिए ना और जितना बाहर ना तो बैठे से 3 लाख रुपया 40,000 इसलिए 50,000 पीछे हम कम से कम 1.5 लाख होना 3.5 लाख होना चाहिए तो क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए अपील करनी है अपील करने में 4 दिन तो सारे ने घरों च ऐलान और इतला पहुंचेगी अलामा साहब भी कर रहे अपने काजी हुसैन साहब भी 4 दिन तो ऐलान होना पाया ते इतला दा एकदम थोड़ा ठंडा आया इस वास्ते बैठन के साल हो चेयरमैन साहब ने ऐलान दस्तखत किया कि 3.5 लाख तक तो ना सैन ना सैन जनाब सारी पटवारी जुबान चाड़े सजन ना सैन दे इस वास्ते जितना जल्दी से जल्दी जरा अलामा हुसैन साहब फरमाने पे कि 5-6 आदमी जड़ जाएंगे ना इसने जो पार्टिसिपेट करना था कि हम 12 से पहले हां और सदना जराना सब तो सारे बाहर चाहिए इंशाल्लाह इस वास्ते जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसे डोनेट करो 5 आदमी 10,000 करने तक 50,000 है फटाफट हो जा सीता आगे सब जुड़िया करा तो तुम भी जरा आराम करो तो इस वास्ते अलामा हुसैन साहब ही रहना इसने जी just have a call some we mentioned direct debit actually direct debit जिक्र किया था 2 घंटा बाद का उसके इमरान गुल आपको जुबैर साहब ने he said as long as I'm able to earn I will give for the rest of my life £50 for the rest of my life because as long as Allah gives me the ability to earn about that £50 इमरान गुल हमें साहब ने हमारा साहब ने कहा 50 पाउंड में चलना पूरी जिंदगी ना मस्जिद के पानी तो का ख्याल में दे जितने तक मेरा काम लगा रहा है 50 पाउंड जाना मस्जिद की माशाल्लाह से तरीका भी सही है मस्जिद की किसी आपने मीटिंग की थी डेढ़ साल रह गया तो जरा गुल साहब ने ऐलान फरमाया वो अगर कई कमेटियां जो रहे जो यंगस्टर है लेकिन सारे तस्वीरां ते लगे ये बात जुड़ा के मेंशन हो सकती अल्लाह तक कई सदियों तक जरा ना अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दा अल्लाह ताला उन्होंने रिस्क माल जान और राज अल्लाह ताला बरकतां देन तो उन्होंने तो फायदे संगी जरा अल्लाह ताला मजीद जो सारे दोस्त भाई बुजुर्ग बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करो ताकि जल्द से जल्द इसमें कम तकमील तक पहुंचाए तो राजा रशीद साहब राजा जफर साहब चेयरमैन साहब जो वो और इन्होंने अपने हाजी नमसूर साहब हाजी आलम साहब और हाजी अब्दुल बारी साहब अपने पट्टी साहब भी बैठे हैं इस वास्ते सारे पार्टी जब बैठे हुए हैं सारे की गुजारिश है रिक्वेस्ट है अर्ज है कि जल्दी से जल्दी जाना अपने नाम रखाओ नेकी से जाना बढ़ जाए सारे we'll come back to like stuff inshallah. Our brother said, do not mention my name, no name, he said, until the masjid pays Qadr Hasna, every month I will pay £200 in masjid. Every month. And I know for a fact this brother isn't working. Allah Akbar. I just understand the brother isn't working, so that's another way you can donate as Sadaqah Jariyah. If you haven't got any savings, you haven't got anything saved. Make dua for his sake. Inshallah. If you haven't got any saving, any cash on you, anything in the bank, you can donate as monthly from your salary, from your income. Can I just clarify something, a request that's come in, is that some people may have reservations that they're giving the Qadr Hasna, and how is the masjid going to be repaying them? How are they ever going to be able to afford to repay that? Inshallah, we have a whole plan set out. Now, the buildings that we are buying, they will generate a rental income. So that's the absolute minimum. So at the moment, inshallah, there's good income. The rental income will be close to about 75,000 to 80,000 pounds. So even just from that, okay, we can start paying people back. We're borrowing within our means. So what we're borrowing, the money that we're asking for to people from Qadr Hasna, as I said, again, it's perfectly secure, and we wouldn't just say things out here in the masjid to say, oh, well, within 2 weeks notice, 3 weeks notice,
will repay you. We will, inshallah. Inshallah. You know, may take a week or so more, but you know, if you came to us and said, guys, I need my money within 2 weeks or 3 weeks, we will make Chesham will make sure. Chesham will make sure that you get your inshallah. So that yeah. I think this is an adding to what you just said. Chesham Masjid won't make sure. Allah will make sure. Right? It's not that you have to come and take from Hadibari Sahib or Ibrahim Sahib or Wasim Sahib. No. It is Allah. You give it to Allah and He will give it back to you. Right? We are, the people that are sitting here, the management here, they are the protector of what you're giving. Absolutely. Right? Allah chose them to be here, Sadaqah Ajariyah, and they will make sure that you have the money. But Allah is the mean. Allah will inshallah return every penny that you give in Allah's way. And his brother Hudayb said, dua for sihat. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah give him long health, like strong iman. And he said that I give for also salih of Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hajat Nabi साहब ने कहा कि एक हमारी बहन है चशम में, उन्होंने 4,000 pound 4,000 pound कर्जे हसना माशाअल्लाह. So alhamdulillah, we need more sisters like her, alhamdulillah, coming forward from Chesham, and brothers as well, come forward inshallah. Look at the time, 11:30, angels are waiting. Allah, angels are waiting. They want your name to be taken tonight. They want you, people of Chesham, to take the Jannah. Take the Jannah. Our picture for the people of Chesham is that as if they were buying their own property. So, as we would buy a property and you look at the date, the completion date, that we have to get the money together, I want everybody to think like that. Listen, we have bought this building, how are we going to pay? Have we got enough money? I want everybody on board and everybody to be thinking in that way. Not that we are बचत building करी ऐसी चीज हाँ हर बंदे की चेष्टा पे फिक्र होनी चाहिए भाई जैसा मकान लेने को अपना मकान लेने को बंदे की होनी है डिपॉजिट की बैठा उसी की फिर कंप्लीशन हो रही है पैसे इकट्ठे करो इसा तरह चेशम ने हर बंदे की फिक्र होना चाहिए ना कि भाई कंप्लीशन डेट जेडी साडी है वो जल्द आवन लगी है असा किस तरह कर असा मस्जिद कमेटी नहीं चेशम किस तरह कर सी चेशम पूरे चेशम की हर बच्चे की ये फिक्र होना चाहिए ना और जितना भी तुसा बैठे हो चेशम ने बंदे जितना भी जेडी फैमिली बैठी है कोई जागत बैठे कोई बच्चियां बैठियां जितना पैसो उतना ए ही टॉपिक होना चाहिए ना ए टॉपिक होना चाहिए ना सपोर्ट करना मस्जिद सपोर्ट कर दिया तुसा भी कीता और ए करिया ओ करिया जब तक असा एक काम तोड़ नहीं होगा क्योंकि असा कलियों न कर सकते कदे न कर सकते असा अपने बड़ा बड़ा दी सपोर्ट तो बगैर न चल सकते अल्लाह ताला इधर तक साडे पहुंचाई सका अगू तुसा दी मदद नाल आगे पहुंच सको Inshallah. And like we had last week the announcement that the brothers they rang their brother-in-law from Newton. They rang their family in Newton. They said, listen, we paid our part, we given whatever we could afford. Now you come forward and pay for Chesham Mosque. Right? So like this, if you think that you know someone who's not from Chesham, but related to you or your friend or cousin or someone that you know of, get them in contact with Chesham Mosque. Right? Let them, if they want to pay Sadaqah Ajariyah, alhamdulillah. If they want to pay Qaza Hasana, whatever means, you have a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And decide, Ibrahim साहब ने कहा कि अगर आप किसी बाहर के जाते हैं किसी बंदे को जो देना चाहता है उसको भी आप अपने जरिए इंशाअल्लाह लाएं और ये एज ए फैमिली सोचे ये जो जगह है हम कह रहे तो रहे हैं कि भाई सबके लिए है सब देंगे इसमें डाउट भी कोई नहीं है लेकिन मेनली ये चश्म वालों के लिए है ना उनके बच्चों के लिए उनकी आने वाली नस्लों के लिए बच्चियों के लिए बच्चों के लिए ये और जैसा ऐसा ने कहा कि 100 years नहीं पता नहीं कितनी जनरेशन जो है इससे बेनिफिट होगी थोड़ा सा इशू बन गया है कि मैंने वो टारगेट रखी थी कि भाई कम से कम 350 होना चाहिए तो एक और हमारा सेक्शन चल रहा है जब वो बार मैं उनको रिपीट करता हूँ तो कुछ लोग से ये क्या गो फंड कर रहे हैं सो बेसिकली जो हमारा ये गो फंड कर रहे हैं ना इसका अकाउंट हमने नीचे देखा और अभी ये भाइयों ने देखा है गो फंड अकाउंट
तो माशाल्लाह इसमें 15,000 तक Can I again repeat this GoFundMe? Mashallah. Arshad Sahab, you keep waving this in front of me to repeat it. I'll do it again. So please, anybody that wants to go to and donate on GoFundMe, our page is Chesham Masjid Donation. Go there and the link should be there for us in Chesham Mosque. So mashallah. So basically we've topped that target. Now we have to set another target. Also that's a full target. Set a new target. Because that's already been Back to what Bible said is when we were presented with this challenge, and Bible sat us down and we knew Uncle Bari was there, all was there, Imran, Bayjaz. But the one thing that dropped in our minds very quickly, and we thought to what Imam Sallallahu says that Allah is the best of planners. We knew that there is hardship currently. Not in our wildest dreams did we even anticipate a figure so close to what we have within the space of 5 days, 4 or 5 days. But I think one request I have for everybody listening at home is that please make dua that this is a time for istighfar, what we're going through, the pandemic. Please make dua that Allah Ta'ala opens the mosque again. Inshallah. Let's our brothers and sisters come back again. Social distancing is a thing of the past. I know it seems far away, but inshallah with our duas, we will pray that it will come back. And inshallah this time next year we'll be in a happy place. Inshallah. So please make dua at home. Pray for everybody, your neighbors, everybody. But inshallah this is a time to reflect. Everything happens for a reason, Imam. This is a challenge from Allah subhanahu wa ta'ala for mankind. And look, astaghfirullah, we saw everything what's happening around the world, but with the will of Allah, all the world comes to us. मैं कर्जे असना फिर पंजाबी से थोड़ा जा उसका एक्सप्लेन कर सकता कि कर्जे असना जेड़ा है कई लोगों ने शायद दिला जो है कोई मस्जिद इतना कर्जा 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़ ले किथु कर्जे असना किथु देने रहसे ना माशाल्लाह साड़ा उसते बिल्कुल सिस्टम सेट है पहली गल है कि जेड़ा साड़ियां असां बिल्डिंगां लैण लगे आ उन्हां दा किराया आपसी उस किराए विचों इंशाअल्लाह असीं काफी सारा कर्जे असना वापस हो जासी फिर उस तो बाद तुसां मस्जिद की देण लगे हो तुसां चशम की देण लगे हो इंशाअल्लाह जेड़ा है ना तुसें जदों अपने पैसे वापस चाहिए हो सन असां 2-3 हफ्ते ने अंदर तुसां की किरियो न किरियो चशम जेड़ा है वो तुसां की पैसे पूरे करी देसी तुसां ने पैसे बिल्कुल सेफ हो सन अगर तुसां ने घरां च पैसे पे वो किसा कमे नहीं अगर तुसां सिर्फ 6.5 महीने वास्ते दे सकते हो असां तो आखिर साल 2 साल 1.5 साल 2-2.5 साल और इंशाअल्लाह असां अपनी कमेटी जिथे बैठे हैं असां ए अपने दिल नाल वायदा कीता है कि साड़ी मेन प्रायोरिटी होसी कि भी ये जितना भी कर्जा है ये असां जल्द तो जल्द लाना है इंशाअल्लाह असां ये नहीं कि मस्जिद का कर्जा चाड़ी का ले भाई जाओ नहीं साड़ी मेन टारगेट ऑल द वे थ्रू जब तक ये मस्जिद का कर्जा सारा नहीं ले लेना अगले प्रोजेक्ट बाद इस वास्ते तुसां दा कर्जा जेड़ा है वो या जेड़ा कर्जे हसा होसी वो जितना जल्दी हो सकसी वो तुसां इंशाअल्लाह वापस मिल जे तू तुसां चाहिए होसी सो अगर तुसां को घर पैसे पे तेरे पैकेज पे या अगर मैं तो कैसा अगर को पाकिस्तान भी पे ना तो किसा कम मैंने नहीं आजकल उठा अगर वो भी तुसां दा ला आन के मस्जिद देनी हो वो तुसां दा बहुत फायदा है जेड़ा कर सकते हो प्लीज असना माशाल्लाह काफी announcement Muhammad Rahim Wahid his son he said £50 every month and we just got a big announcement to make and as Haji Ibrahim Sahab said
that if you reach 350 today. No, that's false because 350 is a reach to the pictures. Yeah, okay. So it looks like you're gonna have to make it by my message, my wife was just coming back tonight. So we've got a big announcement to make. MashaAllah, 20,000 Qadr Hasana. MashaAllah. Zahir Iqbal Sahab, we have said that I give 20,000 Qadr Hasana. Nare Takbir, Nare Risalat. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept the Qadr Hasana. May Allah put barakah into the earning. May Allah subhanahu wa ta'ala protect their family, their children, and their bal and their awlad. इब्राहिम साहब जरा फरमाए ने चेयरमैन साहब बार-बार ये कहने जी कि 3 हफ्ते अस वापस करी कर्जे असना ये 3 हफ्ते भुल्ली जाओ पहले कर्जे असना जमा करो इंशाल्लाह चशम मैं इना वापस नहीं लेने वो देख लो और नहीं 50,000 आदमी जिते उसका जी के कर्जे असना नहीं आगे दे दो 5,000 10,000 20,000 हुन कर्जे असना इंशाल्लाह हो जासी ते जाना कि नवा नुस्खा दिता बड़ी अच्छी दवाई ना पेश की थी माशाल्लाह एक बदली कम जाने थोड़ा लेना है लेकिन जब मैं कोई चीज तुसा सवेरे अपना जमा तफरीक करो तो पाकिस्तान जिन्होंने पैसे में ना काफी सारे लोगों ने और लखन साहब को भी तुसा उड़े भी नहीं पता ये केड़े तरीके नाल जो गाने तुसा बाद विच पर्सनली मिलो ते तुसा की ये भी जेड़े ना नैन दसन चुप जी जो वैसे पैसे जेड़े तुसा आ जासन ना कोई पिछा ना वैसा ते शायद जेड़ा ना दिन रात जेड़ा तुसा ने देखिया शुरू ही किया अगर आप सब फरमाने सुनो दुनिया 70 आकर 70 या 700 हो गया 70 के मिलियन साहब अल्लाह ताला ने गुजारी कोई कमी नहीं है ज्यादा देसन इस वास्ते आज पार्टिसिपेट करो ते कर्जे हसना भी दो ते अपनी डोनेशन भी दो ते 3.5 लाख जरा हुन मेरा नेड़ा लगने पे ते इब्राहिम साहब ने जो मैं वो चेंज करेंगे ना आने के लिए 3.5 पिछली बार वासा थोड़ा सा ऊपर हो ते 20,000 हो रहा गया तो माशाल्लाह 40-50,000 मोड़ा सिंह हो चाहिए इंशाल्लाह जल्दी करो ताकि ऐसा जला दफ्तर भी छपिया जरा टीवी वाले बैठे हैं बड़ा प्रोग्राम करने में पार्टी उन्हें बड़ा जरा सबजादा है वो भी माशाल्लाह शामिल हैं ताकि सारियों टीमां ने अपने अमाल साहब हाजी साहब उन्होंने फरजंदे अलीमंद हाजी असनफर साहब ने ते ज्यादा इस जितने यंगस्टर ने इन्होंने भी अपने सारे शौकत साहब शौकत अता साहब ये जरा सारे इन्होंने ये जड़े मैनेजमेंट ने जड़े इंचार्ज ने ते ज्यादा समय सारे दोबारा फिर रिक्वेस्ट करसा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ और ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥਾ मेरी आवाज आनी को प्लीज ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करो और कर्ज हसना ते जरा अपना नाम लिखाओ और इस दुनिया की और आखिरत की दुनिया वास्ते भी तुसा जरा ना अपने बुजुर्गों ने ਜਿਹੜੇ सवाल जवाब वैसे करने पे अल्लाह ताला उन्होंने मंजिलां आ गई ਜਿਹੜੀਆਂ वो आसान करन और अल्लाह ताला उन्होंने तो पहले आसान रहम करन ते चशम पर असम की बड़ियां उम्मीदां हैं ते चशम पर बड़ियां नजरां से रखियां तो लिहाजा जरा ना ये जल्दी जरा 3 आदमी या 4 आदमी जड़े 20,000 इन्हें रखाए हुए रखाओ ताकि 1 लाख पाउंड और रसों पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए तो मैं अलामा साहब की अर्ज कर सकती हूँ अपना जरा दोबारा फिर मैसेज अपने इंग्लिश और इसी तरीके से पेश करो बड़ी नवाज़ मेहरबानी Haji Sahab, with everything, I think we had 310, then we got another 15 from Gold Fund, we got another 20, so we nearly 350. Yeah. So can I just say one thing? We will obviously sit down properly and go through all the figures. It's actually everybody listening. It's actually very difficult. If you see the pile of lists we've got in, and the number of phone calls that have come, and trying to make the announcements and keeping everything in perfect order, is quite difficult at the moment. So what we will do is tomorrow we will sit down and fine-tune everything and get everything properly written out. And to be fair, the absolute exact figures will come out there. So these are rough figures. So don't go by these. Yeah. So and then we've got donation accounts coming. Yeah. We've got to clarify a lot of things in there.
but roughly we are. So roughly we're at what? 350. 348. 348. So what are we aiming for? 60? I mean, last week, Wednesday, we didn't announce anything, we didn't plan anything, we didn't say that it will be live, and we had 345. So I think we should be able to go to half. Half more. 500, yeah. 500. Yeah. I think we still got. मैं दसा कि भाई अपने साथी नाल मैं जिस शुरू प्रोग्राम किया ते मैं क्या देखो कि आज जड़ा ना तकरीबन अगर लाख करोड़ हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कोई सारे बोले तो सिद्धे जी मैं सब अल्लाह फिक्र किया आपने पाया तंजीम की पार्टी के नहीं इब्राहिम साहब तो सब का ध्यान से चलाना ये फिक्र बहुत थोड़ा दिखता नहीं वो तो फिक्र नहीं साहब चश्मा से एक लाख कोई भी नहीं है 1 लाख नहीं 1 लाख है People of Chesham Mosque मैं कर रहा हूँ कि पिछली सने मस्जिद बड़ी सी ना उस वक्त जरूरी थी कि तुम कैश दो जिसने कैश नहीं उस मावा बहना सारियां अपने जेवर भी देते आज मैं इस तरह के दस और अपनी कारा देती हैं ये वैल्यूएबल चीज ही सारी दे सकते हो लेकिन करा कारा अपना वैल्यू से स्क्रैप वो जेडे बंदा है कि क्या पुलिस ये ट्रेडर से no, but whatever you can give. If you have your intention, look. When the problem is that if you give something for Allah, give something that is beloved to you. Now, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran Kareem, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. The verse of the Quran. Allah said, give something to Allah that is beloved to you. Don't give something to Allah that is just an extra at home. You have it in the back garden and just pick up and give it to masjid now. Give something that is beloved to you. And current time, what is beloved to us? The mal, right? The bank balance, right? The cash, right? That we have. That is beloved. The youngsters like yeah, they lingo. But the dollars, right? The wealth, right? The cash. You know, this is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. If you come forward tonight and put your hisab in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, our Prophet Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, وَمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ, the one who gives for Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ, then that person has completed his iman. People spend their life years and years, right? They got white hairs, right? The umreं गुजर जाती हैं, लेकिन ईमान मुकम्मल नहीं होता. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "A'ta lillah faqad istakmala al-iman." Who have given sadaqah ajariya for Allah subhanahu wa ta'ala with ikhlas and niyyah, then he has completed his iman. Right? And now, inshallah, we're just waiting for the brothers to come forward, inshallah. Look at the time, and we are not going anywhere. So, yeah. But I've been sat here for 6 hours. You've been in and out. I think another 10 minutes, inshallah. Let's give everybody in Chesham one final chance. Alhamdulillah. One final chance. Last call until 12 o'clock. Final call, midnight. Final call. जिसने जड़ा स्वाप करना है, जिसने जड़ा खुशी कहते हो कि मोती जन्नत में लड़े ने the diamonds and है वो लड़े ने आज जड़ा वो 10 मिनट रह गए बस ठीक है. जिस किसी ने करना है तो last 10 minutes everyone. अगर इतनी हिम्मत की थी है ना तो साढ़े 3 तो अपन बचाओ इंशाल्लाह 3:30 तो हो जाए 12 मिनट जड़े ना पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट इंशाल्लाह तो टारगेट को पूरा हो जाए. जरा क्या इब्राहिम साहब ने फरमाया कि सारे चेशमा ने जरा फिक्र करो ये जरा डोनेशन होई जड़े आ रहा करजे इस्लाम डोनेशन भी इब्राहिम सिंह बयान करसा ये खुशी भी है चेशमा ने की तो फिक्र ना पैसे देने फिक्र मकसद नहीं है कि वो तंगी ना देने नहीं
फिक्र मकसद है उन्होंने नजर है कि जितना जल्दी से जल्दी असा पैसे भेजा ताकि इब्राहिम साहब और कमेटी बल्कि चशम वाले इस कम थोड़ा जल्दी जरा शुरू हो जा सके और इंशाल्लाह पूरे चशम की खुशी है और खुशी फिक्र है फिक्र मतलब फिक्र खुशी है खुशी नाल जरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने पे और 12 मिनट दिते अपने इब्राहिम साहब होना 12 मिनट काफी है इंशाल्लाह मैं तो टारगेट जरा 5-7 मिनट काजी साहब कितने सौ फरमाया कितने होने चाहिए पैसे और मैं कहना 500 तक पहुंचना चाहिए ना तो चश्मे वाले को पता दिल इन्होंने दिल के रहने और शिरा लेने माशाल्लाह चक्कर सर को जरा कीता रहने माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह 48 तक पहुंचे 348 जी 348 50 से उन्होंने बड़ी 50 बड़ी हिम्मत की 350 इंशाल्लाह हो जाए 2000 वोट होगी या 2000 करो या 5000 करी हो 2000 लेना 70 पिछले चलाई की 70 तो पूरा करो और 70 ने थोड़ा आ गया देखना था जगह हो last 10 minutes अच्छा सब मिनट इंशाल्लाह जितना जल्दी जाता है if you now some families given as the fathers given 5 the daughters given 5 or the brothers given the sons given now come together as family माशाल्लाह ये टैक्सी का आया जी टॉपिक में थोड़ा बता आ गया जी माशाल्लाह के अरियान फिजर साहब है जी बच्चा बनना 200 कौन माशाल्लाह अरियान फिजर माशाल्लाह 200 के आदमी 10 दे रहे तो 2000 और दूसरा बच्चा बनना जी अजान फिजर साहब 100 कौन जी माशाल्लाह ये फिजर यान फिजर साहब 200 कौन मसीह खिदमत की है जी माशाल्लाह ताला ये तस्वीर कबूल फरमाए और दूसरे बच्चे ने जी अजान फिजर साहब 100 कौन मसीह खिदमत की थी उनकी बच्ची है मिनाल फिजर 50 कौन मसीह खिदमत की थी माशाल्लाह बड़ा कबूल करे जज़ाकल्लाह जी माशाल्लाह अपने फोन चेक कर लो टैक्स वगैरह I was saying before पहले जो है ना अब तक हमें बोले आई है कि वाले साहब ने 500 दिया जो है वो बेटी ने 1000 दिया जो है उनके बेटे ने 5000 दिया अब एज ए फैमिली आते हैं एज ए फैमिली जो है ना फैमिली आ जाए या देखिए वो एक और चीज हम भूल रहे हैं जी वो जो सोना भी आया ना सोना भी आया हां दो कड़े है दो कड़े 4 वो तो मैं आता ना 4 पहले अगर क्या आया वेरी वैल्यूएबल चीज ही अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज है तो वो भी दे वो अल्लाह के हक में देने आते नहीं है तो 4 बढ़िया है और नाले शुक्र अदा करो कि अल्लाह से देने आले Allah brothers and sisters in Islam this wealth this dawlat we have today and maybe it's taken tomorrow. It is not guaranteed. It's not that someone can say, okay, I've got 50k in my bank and I'll have that tomorrow, I'll have that year after. Allah's given it. He looks at the niyyat, He looks at the heart. And if Allah's given you, let's give it back to Allah subhanahu wa ta'ala. And He will multiply it. And He will give you 700 times. And I was saying before, earlier that let's come together as family. Our mothers, our sisters. If there's anything that you think you can give. Remember, your dreams are not bigger than the house of Allah subhanahu wa ta'ala. If you can, look, we're not forcing you. If you can, Allah subhanahu wa ta'ala has given you, and if you can give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, come forward, and this is purely and sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala. In return, Allah will look after your house. That's the very first thing. You will look after the house of Allah, and Allah will look after your house. Children will come and study, and Allah will look after your children, your generations, and this will be sadaqah al-jariyah. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that when people die, they leave this earth, this world, and they're buried in the grave. All the actions, a'mal, are disconnected. Illa min thalatha, except 3. 3 actions that you in your grave, you get a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And one of them is as-sadaqatul jariyah. You are not praying namaz, but Allah is sending reward for you. You are not reading Quran, but Allah is sending reward for you. Right? You are not fasting, but Allah is sending reward for you. You are not performing umrah, but the reward is coming for you.
and it is called as-sadaqatul jariyah. And as-sadaqatul jariyah, continuous charity. This is why we're sitting here today. We've been sitting there last 5 minutes, inshallah. The doors of barakah, the doors of rahmah are open, angels are present, the book of hasanat and good action. Next 5 minutes, you can come forward, inshallah, put your name to receive barakah and blessing from Allah. अगले 5 मिनट रह गए कि अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि फरिश्ते भी जड़े आपके जो डोनेशन कर रहे हैं वो देख रहे हैं, आपकी नेकी लिख रहे हैं, तो 5 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। और तनवीर साहब ने फरमाया कि 4 कड़े ऑलरेडी हमारे पास पहुंच चुके हैं और बातें भी हैं। और जावेद साहब ने उन्होंने फरमाया कि किसी किस्म के जितने भी आप कर सकते हैं वो मदद करें मस्जिद में। जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया था कि जब ये पहले बच्चे बनती थी तो हमारे चशम की बहनों ने मऊ ने बहुत सोना दिया था, तकरीबन 40 से 50 हज़ार उस वक्त। तो अब भी आप अपने सोने के कड़े और बालियां जो कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं। अगले 5 मिनट इसमें 2000 पाउंड का टारगेट था वो आप पूरा करें ताकि 3.5 लाख मुकम्मल हो जाए। और इसमें जल्दी से जल्दी करें ताकि आप दुआ भी होगी। 5 मिनट हैं आपके पास। और तनवीर साहब मेरा ख्याल है कि वो लिख रहे हैं ऐलान। और मैं फिर आखिर में जब दुआ होगी तो मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूंगा कि जितने भी मुसलमान चश्म के पहले दिन से आज तक जो इस दुनिया फानी से राज फरमा के उनके लिए सारे सवाब और जो हमारे बच्चे और बच्चियां नरीना और लाजू उनके लिए भी काम दुआ कराएंगे कि अल्लाह ताला उनके बेकार आबाद करें। मसला ये कोई ऐलान है कि इमरान कुल साहब जी उनके अपने ताया बाबू बशीर साहब इस सवाब के लिए 100 पाउंड मछली के जज्बे को कबूल फरमाएगी। बाबू बशीर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगी। माशाअल्लाह। Brother just spoke, he's donated 500 pounds. Mashallah. And he doesn't want to be named, but may Allah bless his family. Ameen. Allah passed away. May Allah make a sadaqatul jariyah for everyone. Another 4 minutes, inshallah. Brothers, sorry? Inshallah. Last call. Let's see who wants to come forward. One last call. So telephone number? Yeah. 01494 77 2065. Sorry, रात हो गई है पढ़ने में। 01494 77 2065. एक बंदा साड़ी की ओर कॉल करा, एक लास्ट आखिरी पेमेंट, लास्ट कोई डोनेशन, एक आखिरी पेमेंट, उस तो बाद आज ना कम बात है। Who said, he said, goes to 1,000. Where are we? 350 now. I think it's 350. More than 350. More than. Can I request one last quote from the I've got a message from the phone. Mudassir Salim, 1,000 pounds. Another prophet said 1,000. Do you have any other call for 1,000? Any call 1,000? Any call. That was the message and that was the call. अल्लामा साहब ये चशम है, देख लो 2,000 की बदला 5 साल हो गए। माशाअल्लाह, इसे चशम बोलते हैं, ये चशम है। माशाअल्लाह, 2 मिनट 2,000 का नोट 2 मिनट ही जाना पहले। माशाअल्लाह। देखो भाई चशम वालों, सिर्फ एक हजार का मुकाबला है। इसलिए उठे और फोन करें, 1,000 चाहिए, हमारा 3.5 लाख हो जाएगा। हो गया 1,000 की कार चाहिए। We've got 50 seconds.
got 40 seconds and meet that brother. हमारे पास 40 सेकंड बाकी है 40 सेकंड 1000 का बदलवा 1000 टेलीफोन 01474772065 प्लीज कॉल करें. Yes, brother. We're looking at the phones, messages, calls, anything. I just got a message. Could be. MashaAllah. Our brother said 1,000 from आ गया 1000 आ गया बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको फिर MashaAllah. May Allah bless you. Everyone has to go and come down matching. माशाअल्लाह सर भी शफ़ाए बज़ में हिदायत बेला सलाम शफ़ाए बज़ में हिदायत बेला इसको देखा ये मूसा से पूछे कोई किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आँखवानों की हिम्मत पैदा Topping about 350 plus. Allah reward everyone. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا مولا كريم. Our brothers, our sisters, our elders from Chesham, outside Chesham, Ya Allah, gave donation as sadaqah jariyah, qarz hasana. Ya Allah, we ask you to accept the donation. Ya Allah, we ask you to bless their family, and Ya Allah, we ask you to protect their family. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, we ask you to make this sadaqah jariyah for the entire family. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, whatever intention they had, whatever niyyat they had, Ya Allah, we ask you to fulfill their niyyat. Ya Allah, we ask you to protect their children, their daughters, their sons, and their mal and awlad. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, our brothers and sisters, they ask dua for their parents who passed away, the ancestors, the grandparents. Ya Allah, we ask you to grant all of them Jannatul Firdaus. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, whatever niyyat they had, with whatever niyyat, Ya Allah, whoever gave sadaqah jariyah, qarz hasana, Ya Allah, monthly, direct debit, Ya Allah, whatever niyyat they had, Ya Allah, you knew the niyyat. Ya Allah, accept the niyyat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, make ease for the ummah of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, especially our brothers in Kashmir, in Pakistan, in Syria, in China, in Bangladesh, in Baghdad, in Iraq. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, protect them and protect their izzah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, have mercy and barakah and rahim upon the ummah of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya Allah, this COVID virus, Ya Allah, protect everyone from this virus. Ya Allah, open your doors of rahmah, the doors of masjid, open again for the ummah of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya Rabbal Alameen, Mola Kareem jin ahbab ne, हमारी माओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, मोला करीम जिस निय्यात के साथ मोला करीम तेरे घर के लिए सदका जारिया में हिस्सा डाल, मोला करीम उनकी निय्यात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मोला करीम हमारी बहनों ने,
ہماری بہنوں نے جنہوں نے اپنے سونے کے جو ہے وہ کرے دیے مولا کریم جس نیت سے مولا کریم یہ تو نیتوں کو جانتا ہے مولا کریم اس وقت میں کووڈ کی وجہ سے مولا کریم پھر بھی وہ فورورڈ آگے آئی مولا کریم ان کے مولا کریم یہ جو ہدیہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا کریم ان کی خیر فرما مولا کریم ان کے جو ہے مال و جان کی حفاظت فرما مولا کریم ان کی اولادوں کی حفاظت فرما ان کی مولا کریم جتنی خواہشات ہیں مولا کریم قبول و منظور فرما مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں احباب ہیں ان کو مولا کریم صحت کاملہ عاجل نصیب فرما چشم سے مولا کریم جن لوگوں نے اپنے والدین کے لیے اس سال صواب کے لیے مولا کریم صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالا مولا کریم تمام کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا کریم جتنے احباب یہاں بیٹھے مینجمنٹ ٹیم ہمارے جو ٹیکنالوجی ٹیم پیچھے بیٹھے مولا کریم جن لوگوں نے میسیجز کیے ٹیکسٹ کیے دوسروں کو انکریج کیا موٹیویٹ کیا مولا کریم تمام کے لیے تمام صدقہ جاریہ بنا مولا کریم تمام کی خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا کریم تمام کے مولا کریم مال و جان کی حفاظت فرما ان کی اولاد کی حفاظت فرما مولا کریم ہم سب کو دین مصطفیٰ پر چلنے کے توفیق نصیب فرما مولا کریم یہ جو پلاننگ یہ جو پلان آیا تھا بائی کرنے کا اس کو بھی مولا کریم آپ نے ہی ذہن میں ڈالا ہے مولا کریم اس کو تکمیل بھی آپ فرمائے مولا کریم آپ مسبب الاسباب ہیں مولا کریم اس کے لیے کوئی بہترین اسباب پیدا کر ایک بچہ 12 years old ہے اس کی ریان محمود he's got a condition illness life changing for him and whatever he saved he gave for PlayStation 400 pound he said I give him in the way of Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah give him siha ya Allah cure him یا اللہ اس بچے کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام صدقے مولا کریم سے شفا کاملہ عاجل نصیب فرما مولا کریم اس کے لیے اس کی فیملی کے مولا کریم جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرما جتنے بھی مولا کریم لوگ بیمار ہیں چشم میں بزرگ احباب مائیں بہنیں بچے مولا کریم جس نے صحت کی دعا کی مولا کریم تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرما تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد احباب مولا کریم تمام کو مولا کریم اولاد درینہ عطا فرما مولا کریم تو مسبب الاسباب مولا کریم ان کے لیے کوئی نیک مولا کریم سبب پیدا فرما وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مبارک everyone